all on another Saturday morning, actually a very nice and bright morning. I hope you are all doing well. First of all, once again, thanks a lot for the amazing interest level and for sparing the time to be here. This is the second session in the series of trainings planned on Sales Tech Sec. As we've discussed in the last annual team session, the first three sessions are conducted on the topic of Sales Tax Act 1990. So in today's session, we are going to be covering sections 30 to 58. For those of you who are joining today, जो हमारा पिछला session था, that is available on Vimeo, so you can go back there and just have a quick look if you feel that something is missing or the connection of something or something that I refer to is a bit new to you. Rabbi Shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlu uqdatin min lisani yafqahu qawli. O Allah, open my heart and ease my task and remove the impediments from my speech so that they may understand what I say. So first up, especially for those who are joining a CPD session for the first time or my CPD session for first time, for those of you who already know me, just a quick introduction for your colleagues. I'm a highly IT literate and experienced accounting, finance, management, and economics professional. I currently hold FCCA, Fellowship Chartered Certified Accountancy, CFA Chartered, the Anti-Money Laundering Specialization, BSc Honors in Applied Accounting, and several professional certifications from UK, along with 15 years plus fund of experience working in several multinationals in UK as well as in Pakistan. Currently, I'm serving as a managing director at Millennium Law and Corporate Company, as well as a director at Professional Social Network. In addition to that, as far as training is concerned, I'm also an experienced trainer. In fact, this is a passion, a way to go back to our alma mater, colleagues, society, and profession. I have been blessed to have been associated with some very important names. My portfolio includes having worked with esteemed organizations in corporate, public, and academic sectors. I have conducted mandatory promotional trainings of government officers at MPDD. I've also conducted professional trainings at National Bank of Pakistan, Lahore Tax Bar Association, Lahore Chamber of Commerce and Industry, and obviously our very own globally recognized largest accountancy body, ACCA. In addition to that, I've also worked with armed forces institutes like Peria University and some top-level academic institutes like UAT. In addition to this, I'm also a regular contributor to various national dailies and research journals, including Daily Times, Pakistan Today, Daily Nation, Express Tribune, and the renowned research journal Blue Chip. I'm a life member and vice-serving chairman advisory committee of Lahore Tax Bar. I'm a member, MNP, and chairman taxation committee of ACCA Pakistan. I'm a director of Millet Thinkers Forum. It's a think tank. I'm also part of Hamdard Thinkers Forum and a keynote speaker on most of their events. I'm also professionally associated with globally reputed organizations, obviously like ACCA, but in addition to that, UK Society of Investment Professionals, CFAI, Prima, Permia, MPDD, and MFP. So that's a quick introduction of myself. I'll skip through the next two slides, as you will have the presentation available and you can always do a quick Google search too. I'm sure you can go through that in your spare time. So before we start with the table of contents and start getting into the thick of things, a few quick words, especially for those who are joining our CPD sessions for the first time. Communication is a two-way process. I personally highly encourage asking questions because that shows your level of interest, your participation, and that's the most effective way of learning. Having said that, we have people coming from a broad background here. We have members, we have affiliates, some of you might be working in audit, no idea of what taxation is. Some of you might have dealt a little bit with taxation but not really knowing how it exactly works. Some of you might actually be working in taxation.
So as far as we are concerned, we have to take everyone along. That is one of the main objectives of the trainings, the CPDs. So I would request, if you have an idea, write it down on a piece of paper. It might be that it is about to be answered on the next slide, and if you just write it down, you can just cut it off later on if it doesn't need to be asked, instead of writing it into the questions area in your online tab, online portal that you have available, because that could save us valuable, precious time avoiding irrelevant questions or questions that have already been answered. So that's the first thing. And secondly, we will have regular questions break. So inshallah, I'll try my best that we answer all the questions and as much as possible. Last but not the least, I really would love to answer all the questions you have, but we have a limited time here. And ACCA team especially has requested me that if we can focus on the topic in hand. So I would request that please, all questions and any questions be focused on the topic in hand. If you have any additional queries, I will be sharing my contact details later on, and you will be more than welcome to ask me later on. Okay, so let's start with the table of contents. What would we be covering in today's session? First of all, we'll be going through the scope of this CPD in detail, that's what we are covering today. Then we'll move on to the concept of taxation laws. What exactly is sales tax? The difference between various bodies administering sales tax in Pakistan, including Federal Board of Revenue, Sindh Revenue Board, and Punjab Revenue Authority. We'll then move on to what is Sales Tax Act 1990 as updated by Finance Act 2015. And then we'll cover the exact sections 1 to 29. We will have question answer sessions in between, but at the end of the session, we will also have a last question answer session where if you have any questions left, you can always come back and ask. So let's begin with the scope of CPD. What are we covering today? First of all, we will be covering sections 30 to 58 of the Sales Tax Act 1990. Our aim today is to deliver you the basic law of sales tax. It's very important that you grasp this law because everything else will build onto this. The ultimate aim of this CPD series and the training sessions is, inshallah, to reach a stage where each and every one of you can be at an expert level of skills in taxation. However, we need to realize one thing, that cannot happen overnight. It can't be that you'll come in one session for a few hours and then you'll go back and you'll be an expert. No, it doesn't work like that. It would take some effort on your part. It would take a bit of time. We have series of CPDs. We are going to cover the relevant laws, and then we are going to cover the practical rules, and then we'll go into more technical things. Because unless you have covered these basics, unless you have a good grip and grasp on this, and as per the feedback by most of the members, it's not really ideal to proceed on to the advanced level. Anyway, so with that in mind, we'll try to build your knowledge base with the goal of sales tax mastery and planning in mind. So what exactly are taxation laws? We have covered these things last time in the first part of this series. However, those people who are joining us today for the first time, taxation laws are basically a set of laws which are used to drive revenues by governments in order to function and to service the citizens. And obviously the aim is to provide services, better quality of life, develop the country, etc., etc. Pakistan, unlike the common perception, has a somewhat developed taxation law. I'm not saying about the taxation system because we all know about the structural issues, but the taxation law is quite developed. Pakistan actually has a focus, unfortunately, on indirect taxes with more than 70 different taxes in operation. And sales tax is one of them, but one of the most important one in terms of revenue collection too.
So this has led to several set of laws dealing with these specific taxation areas. Today we are focusing on sales tax. So what exactly is sales tax? Those of you who are attending for the first time, if you want to quickly give a feedback, what do you think is sales tax? I'll give you guys 20 seconds. Did we get any response yet? Come on, it's okay to make a mistake. Ahmed will not call out your name here. Nor would I. King's share of my effort. Indirect tax. These two responses here. Okay, that's it. That's enough. Value addition tax on sales of goods or services. Good. So sales tax is, yes, it is an indirect tax. It is ad valorem tax like VAT. What do we mean by ad valorem? Ad valorem is a tax that is levied as a proportion, as a percentage. It does not have a bearing on the size or the volume. It is focused on the percentage of the declared value. So sales tax is an ad valorem tax. It is levied on sales of goods and services, and normally it's imposed on the gross price. Now I'll just take a small break here before going forward. One of the response that we got was that sales tax is VAT. That is one of the most common perceptions, which is not entirely correct. Yes, sales tax resembles very closely with VAT, value addition tax, which you would have certainly studied in your taxation studies if you opted for the UK variant. However, they are not exactly one or the same thing. There are quite a few similarities. Both are indirect taxes, both are ad valorem taxes, both are levied on goods and services. However, there are a few fine differences. For example, double taxation is avoided in VAT, but there is an element of double taxation in sales tax. Why? The fourth point that we are covering, you can see on your slides. Sales tax is normally imposed on the gross price, which is the seller's net cost plus the sales tax already paid by seller plus the profit margin at each point of sale. So there is an element of double taxation and a partial cost being generated to the business. This is one of the finest differences between sales tax and VAT. So next time you are talking to someone, yes, sales tax resembles very closely to VAT, but it is not VAT. In Pakistan, post-independence, sales tax was in operation, but it was focused on goods mainly. And the operation was done centrally by Central Board of Revenue, which was later converted into Federal Board of Revenue. However, there were international pressures, donor agencies, partner institutions, etc. To cut the long story short, post-18 amendment, sales tax on services is the purview of provincial governments. Provincial governments have created their own legislations, they have created their own revenue authorities. Sindh actually took lead in it. Sindh Revenue Board was created first. Punjab followed that up with Punjab Revenue Authority. The rest of the provinces are catching up. We also have Islamabad Capital Territories legislations. Our ACCA's CPD series have 3 different segments, all 3-part series. This first segment is focused on sales tax. So after 3-part series on sales tax, we'll then move on to the provincial areas, the Sindh Revenue Board and the Punjab Revenue Authorities. So for today's session, we are focusing on Sales Tax Act 1990. I have mentioned this in the last session too, that just like the Income Tax Ordinance, Sales Tax Act is also updated every year with the amendments that are approved in the Finance Act. What is Finance Act? The finance bill, the budget that is prepared, that is presented to Assembly. Assembly is the collection of the legislators. They approve some part of that, they amend the other part, they deny some. The final version that is approved from the legislators is known as the finance bill. The relevant provisions of the finance bill
are then annually inserted into the Sales Tax Act 1990, which is updated every year. As you can see on your slide, it is amended up to 1st of July 2015, which means the last finance bill, the one in 2015, has been incorporated. So now we'll proceed on to sessions 30 to 58. We have just opened the Sales Tax Act. This was already circulated to you by Team ACCA. So you guys can see that on the screen too, or if you are more comfortable, you can just open it from your email. If you have downloaded it, open it from your system, however you are comfortable. We covered till section 29 in the last session. So today we'll begin with chapter 6, the appointment of officers of sales tax and their powers. So first of all, section 30, appointment of authorities. For the purposes of this act, the board may appoint in relation to any area, person or class of persons, any person to be, अभी आप जो देखने जा रहे हैं ना, this is the normal structure जो FPR में है, सिर्फ सेल्स टैक्स में नहीं बल्कि वेरी क्लोजली इनकम टैक्स में भी है. इनकम टैक्स के जो हमारे सेशंस हैं उनको आप वाइमियो पे एक्सेस कर सकते हैं. इनफैक्ट आप देखेंगे आज लेटर इन द डे जब हम कवर करेंगे पीनलाइजिंग सेक्शंस जहां पे पीनल क्लॉजेस मौजूद है, तो दैट एक्चुअली वेरी क्लोजली इंटीग्रेट विद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस. सो मच सो कि एपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसकी वर्किंग्स के लिए तो डायरेक्टली सेल्स टैक्स एक्ट ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को रेफर किया हुआ है. एनीवे, अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज में बोर्ड के पास ये पावर है कि किसी भी पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन, बिजनेस और पर्सन की डेफिनेशन हम शुरू में कवर कर चुके हैं, इंडिविजुअल, बिजनेस सब इसमें आते हैं. इनके लिए बोर्ड ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है. और व्हेन वी रेफर टू बोर्ड, हम शुरू में ये कवर कर चुके हैं सेक्शन 2 में डेफिनेशंस में, बोर्ड ऑलवेज मींस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड टैक्स ऑलवेज मीन अनलेस अदरवाइज इंडिकेटेड सेल्स टैक्स in Sales Tax Act 1990. Chief Commissioner, Inland Revenue, Commissioner Inland Revenue, Commissioner Inland Revenue Appeals, Additional Commissioner of Inland Revenue. अच्छा, अगर मैं आपकी जगह बैठा हूँ, मुझे देख के पहला ख्याल यह आएगा सर तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स, तो उसके पास तो हमने अपील्स करनी है, तो क्या वो इनका सबऑर्डिनेट है? अगर सबऑर्डिनेट है तो वो अपील कैसे सुन सकता है? How can a subordinate listen to and then give a verdict against their superior? Not exactly so. ये जो आपके सामने है ये जस्ट स्ट्रक्चर है इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर. आगे हम ये कवर करेंगे कौन किसको आंसरेबल है, कौन सुपीरियर है या नहीं, एंड दैट वुड क्लैरिफाई एनी डाउट्स यू हैव. सो चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, कमिश्नर अपील्स, एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर के बाद डिप्टी कमिश्नर. The way to remember this particular thing is, क्योंकि अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है डिप्टी पहले आता है कि एडिशनल पहले आता है. A very simple common sense thing which would just help you remember that AD से पहले आता है. So additional डिप्टी की आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी. Then आप कहेंगे जी असिस्टेंट भी ये है वो पहले आता है, but I think it makes sense to everyone कि असिस्टेंट तो बाद में ही आएगा ना, डिप्टी एडिशनल की चलें फिर भी कंफ्यूजन हो जाती है. सो सबसे पहले आपका चीफ कमिश्नर है, कमिश्नर अपील्स है, आपका एडिशनल कमिश्नर आ गया, डिप्टी कमिश्नर आ गए, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर आ गए, एंड इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर आ गए, सुपरिटेंडेंट इनलैंड रेवेन्यू आ गए, इनलैंड रेवेन्यू ऑडिटर ऑफिसर आ गए जिनको नॉर्मली ऑडिटर ही कहा जाता है, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू आ गया, एंड देन एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू with any other designation. ये basically just एक provision रखी है just in case कोई और designation board को create करना पड़े. Okay, as I promised with you, अब हम cover करेंगे who is reporting to who. सबसे पहले तो chief commissioner जो है, they are obviously the chief commissioner ranks the topmost. चीफ कमिश्नर और कमिश्नर जो हैं वो डायरेक्टली बोर्ड के सबऑर्डिनेट होते हैं, और कमिश्नर जो होता है वो चीफ कमिश्नर को भी रिपोर्ट कर रहा होता है. सो अब आपकी रिपोर्टिंग लाइन क्या बन रही है कि कमिश्नर जो है वो चीफ कमिश्नर को रिपोर्ट कर रहा है और वो सबऑर्डिनेट चीफ कमिश्नर के भी है और बोर्ड के भी है.
चीफ कमिश्नर डायरेक्टली सेंट्रल बोर्ड की जो बॉडी है, जो डायरेक्टर्स हैं, उनके सबऑर्डिनेट है। नेक्स्ट अप इज एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, ऑडिटर, inland revenue officer, etc., etc. They are all subordinate to the commissioner and shall perform their duties in respect of such person or classes of persons or such areas as the commissioner to whom they are subordinate may direct. Simple. जो कमिश्नर ने कहना है विद इन द लीगल परव्यू ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990, वो ड्यूटीज इन लोगों ने करनी है। एंड ऑफ स्टोरी, नाइस एंड इजी। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे लीगल टर्मिनोलॉजी है। हायरार्की में ये होता है कि कमिश्नर के नीचे जितने लोग हैं वो उसके सबऑर्डिनेट, फिर एडिशनल कमिश्नर के जितने नीचे लोग हैं वो उसके सबऑर्डिनेट है, डिप्टी कमिश्नर के नीचे जितने लोग हैं वो उसके सबऑर्डिनेट है। तो आपको एक एलिमेंट ऑफ रेपिटेशन लगेगा कि कई डेजिग्नेशन जो हैं उनके नाम पहले शुरू में आ रहे हैं कि दे आर सबऑर्डिनेट टू द एडिशनल कमिश्नर, फिर लोगों के नाम नीचे आपको और नजर आ रहे हैं कि दे आर सबऑर्डिनेट टू द डिप्टी कमिश्नर। तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक ही ओहदेदार जो है वो मल्टीपल चेन को रिपोर्ट कर रहा है। जो उसका इमीडिएट बॉस है उसको तो रिपोर्ट वो कर ही रहा है, लेकिन जो बॉस का बॉस है ऑब्वियसली वो उसका भी सबऑर्डिनेट है। टेक द कॉन्सेप्ट लाइक दिस कि जो आपका लाइन मैनेजर है उसको डे टू डे रिपोर्टिंग तो आपने करनी है, लेकिन जो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है अगर वो आपको कॉल करे, ऑब्वियसली सुपरसीड करता है उसकी हेड ऑफ आपके डायरेक्ट मैनेजर की लाइन ऑफ अथॉरिटी को, तो आपने उसको भी रिपोर्ट करना है। और अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर आपको कॉल कर ले तो ऑब्वियसली बात तो आपने रिपोर्ट करना ही है। तो यू आर रिपोर्टेबल टू ऑल ऑफ देम। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज इन एफपीआर। सो additional commissioner, we just covered that, they'll all report to the commissioner. Then Deputy Commissioner, Inland Revenue, Assistant Commissioner, Superintendent, Inland Revenue Auditor, which we refer to as Audit Officer, Inland Revenue Officer, and any other officer, etc., are subordinate to Additional Commissioner, Inland Revenue. This brings us to 30A, Directorate General, Intelligence and Investigation, Inland Revenue. अच्छा, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट बने हैं इनलैंड रेवेन्यू में। इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट है, इंटरनल ऑडिट का है, ट्रेनिंग एंड रिसर्च का है, जनरल वैल्यूएशन का है, पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट का है। इनके अपने अपने परव्यू और फंक्शंस हैं जिनको हम कवर करेंगे। इनफैक्ट अगर आप में से कोई इंटरेस्ट रखता है या टैक्सेशन से डील करता है तो दे माइट हैव हर्ड ऑफ द न्यूज कि बड़ा एक इशू चल रहा है सेल्स टैक्स फ्रॉड और अवॉइडेंस के हवाले से कि जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उसको बड़ा रॉन्गली यूज किया जाता है कुछ स्कैम्स के लिए। तो एक ई टैगिंग की स्कीम जो है एफपीआर ने प्रपोज की है, इंट्रोड्यूस की है, और उसके ऑडिट के हवाले से जो पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट डायरेक्टरेट है उसको जिम्मेदारी देने की बातें हो रही है। तो एनीवे सॉरी, ये सारी चीजें हम इन बिटवीन कवर करेंगे। राइट नाउ, डायरेक्टरेट जनरल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, it shall consist of a director general, as many directors, additional directors, deputy directors, and assistant directors, and such other officers as the board may, by notification in the official gazette, appoint. ये 30A, 30B, C, D, E, इनका बेसिक जो परव्यू है, जो इनका बेसिक फोकस है, वो इस चीज के ऊपर है कि जो एफपीआर है, जो बोर्ड है, उसको ये अथॉरिटीज दी हुई हैं कि वो ये स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सके, ये ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर सके ताकि इन फंक्शंस को एडमिनिस्टर किया जा सके। ये इनकी फंक्शंस क्या हैं, क्या पावर्स हैं, क्या पीनल क्लॉजेज हैं, वो आगे डिटेल से डिफरेंट सेक्शंस में कवर करेंगे हम। सो 30B इज डायरेक्टरेट जनरल इंटरनल ऑडिट। सेम पैटर्न है, सेम टर्मिनोलॉजी है, जिस डिपार्टमेंट का डायरेक्टरेट का नाम डिफरेंट हो जाता है। We'll quickly go through. The Directorate General Internal Audit shall consist of a Director General, as many directors, additional directors, deputy directors, and assistant directors, and such other officers as the board may, by notification in the official gazette, appoint. So nice and easy, nothing complicated there. Same is the case with 30C, Directorate General of Training and Research, 30D, Directorate General of Valuation, 30DD, Directorate General of Post Clearance Audit,
and 30E, powers and functions of directorate, etc. This is slightly different. What 30E states is the board may, by notification in the official gazette, specify the functions, jurisdictions and power. Specify the functions, क्या काम करने हैं, jurisdictions, किन एरियाज या बिजनेसेस के ऊपर jurisdiction है. नॉर्मली दो तरीके से अल्फाबेटिकली और बिजनेस इंडस्ट्री वाइज jurisdiction डिफाइन की जाती है, बट this is not a hard and fast rule. This is what's happening in practice. The board is empowered to define jurisdiction on any basis. And powers, कि उनके इख्तियारात क्या है. ये तीनों चीजें बोर्ड स्पेसिफाई कर सकता है of the directorate journal as specified in the preceding sections and their officers by notification in the official gazette. So, section 31, powers. An officer of inland revenue appointed under section 30. सेक्शन 30 का मतलब है कि सेक्शन 30 के तमाम सब सेक्शन A, B, C, D, 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 E, etc. shall exercise such powers and discharge such duties as are conferred or imposed on him under this act, and shall also be competent to exercise all powers and discharge all duties conferred or imposed upon any officer subordinate to him. Now this is a very interesting concept. जो भी एक ऑफिसर की अपनी ड्यूटीज है उसके तो उसको इख्तियारात है, जिम्मेदारी है, लेकिन जो उसका सब ऑर्डिनेट है उसके भी इख्तियारात और जिम्मेदारी है. वाई? टू रीजंस. आपने अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जहां पे अथॉरिटी होती है वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जो सुपीरियर है जिसके पास अथॉरिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लोअर स्टाफ की. लोअर स्टाफ जो है या ऑफिसर्स हैं, दे आर देयर टू फैसिलिटेट. सो अल्टीमेटली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज के साथ कह रही है. सो एक तो इस पॉइंट को कवर किया गया. दूसरा, आगे आप डिटेल से भी पढ़ेंगे कि एक्ट में ये प्रोविजन रखी गई है कि अगर कोई ऑफिसर मौजूद नहीं है तो बोथ वेज उसका चार्ज एक दूसरे ऑफिसर को दिया जा सकता है. मिसाल के तौर पे एक ऑर्डर जो है कमिश्नर की अथॉरिटी पे पास करता है, एडिशनल कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर. लेकिन अगर उनमें से किसी की सीट वैकेंट है और कोई मामला बहुत अर्जेंट है और कमिश्नर साहब या साहिबा बहुत ज्यादा फर्श शनास है तो वो डायरेक्टली खुद उस काम को करके वो ऑर्डर पास कर सकते हैं. आप कहेंगे सर ये कॉमन सेंस है, लिखने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल कॉमन सेंस है, लेकिन जब आप कानून की बात करते हैं एवरीथिंग नीड्स टू बी रिटन डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट. हेंस इट इज सो इन दिस सेक्शन. Provided that notwithstanding mean not in addition to anything else described elsewhere. Anything contained in this act or rules, the board may by general or special order impose such limitation or conditions on the exercise of such powers and discharge of such duties as it deem fit. Again, जो हमने देखा है throughout income tax में भी, ऑर्डिनेंस में और सेल्स टैक्स एक्ट में एक पैटर्न है कि बोर्ड को बहुत ताकत दी गई है. ऑफिसर्स की भी सब्जेक्टिव पावर्स हैं, लेकिन बोर्ड के पास ओवरराइडिंग पावर है कि वो जब चाहे इनको अमेंड कर सकता है या ओवरराइड कर सकता है. आई थिंक हमारी फर्स्ट टी ब्रेक का टाइम है, लेकिन बिफोर दैट आई वुड वांट कि हम क्विकली कुछ क्वेश्चंस ले लें. सो एनी क्वेश्चन यू हैव प्लीज फील फ्री टू आस्क नाउ. Okay, the first question is from Imran Khan. He's asking under section. Which Imran Khan is that? He must be one of our members. It can't be that fun because taxation is also a very, to me, celebrity-oriented area, but he is not the one dealing in that. So the question is, under section 32A, is it possible for board to appoint an ACC member to audit panel? Okay, you will be seeing that in details. Okay, I'm going to answer this one, but Imran and everyone else, I would request, as I have mentioned in the beginning, look, I understand you guys are excited, you want to know about things you don't know, and you just want to rush through the things you already know, but we have to take everyone along. This is the first and last exception I'm making today. I'm going to answer your question, but this was something we were to cover now in a bit. So any questions from now on, please try to focus them on what we have already covered about the topic in hand. This is the 32A.
It's a new section. It has been inserted this year, this tax year, via Finance Bill, Finance Act 2015. If you look at subclause D, it says any other person as directed by board. So in simple, Imran, the answer is yes, but this is something we'll be discussing in detail after the break. Next. The next question is from Hashim Barak. He's asking, please explain journal and special order as seen under section 31. Hashim, good question. General orders are one which are passed as a matter of routine. Every year board appoints officers are transferred, they are promoted, etc. Special orders are orders which are not within the general scope of things, but board may use them to address any urgency of a matter. For example, God forbid, an officer died. The seat is vacant. The board immediately need to fill that. So it would make use of a special order to fill that. Anyway, we'll be covering that in more detail. Next. Next question is from Mia Muhammad Harun. He's asking what is meant by inland revenue. Inland revenue, we have discussed that in our income tax ordinance sessions. Basically, this was a restructuring done within FBR to focus on the taxes that are raised inland, and sales tax obviously is a very important part of that. Next. Muhammad Tahir Hussain has asked what is reporting hierarchy after deputy commissioner. Oh, we covered that in detail. We have assistant commissioners, then we have audit officers, we have other officers, we have inspector, all that we just covered in detail. I think you probably asked that before we covered. What was the time? I just got this question at 10:30. Okay. We probably you signed in late or anything. We just covered that in detail. Here it is. So this is the hierarchy which we covered in detail. He said after deputy commissioner. What is reporting hierarchy after deputy commissioner? Okay, it's assistant commissioner, superintendent, audit officer, inland revenue officer, any other officer of inland revenue, and obviously inland revenue officer is just above the inspector inland revenue. Next. The next is from Muhammad Nabil Iqbal. He's asking, sorry for asking the question as in last session I couldn't because of the way how to ask a question. Nabil, never be sorry. I always appreciate the question. Just try to be focused. Anyway, please tell whether an unregistered person issued a sales tax invoice. No. The next question is, we'll be covering later in the day the sections covering penal clauses. Any unregistered person issuing a tax invoice with declared tax amount is liable to penal action. Next. Next question is from Hashim Zaheer. He's asking why there is the role of the withholding tax agent. Vendor can submit tax on their own. How? What do you think is withholding agent? You are withholding agent. Anyone who is making the payment is withholding the sales tax from that payment. So effectively, if I'm making a payment, I'm purchasing, I'm making the payment, and the person who is supplying me is holding the tax there. Sorry, the person who is making the payment is withheld from. Similarly, when I am supplying to my customers, they are making a payment to me, I'm withholding that tax, and then I'm submitting that to the government. Now your question was why we are using withholding agent. I believe you have the concept, you can always clarify if you meant something else. You have the concept there is some additional withholding agent in between collecting. If that's what you are believing, it's not so. The concept of withholding agent is the people actually transacting. The buyer, the sellers, they are transacting between them, and depending on which side of the transaction you are acting as a withholding agent when you are transacting. Next question is from Muhammad Yasir Iqbal. He has asked, can you revise 31 powers again? Okay. The concept is fairly straightforward.
any officer of inland revenue have the powers to discharge his duties as conferred or imposed on him, and the duties of any of his subordinate officer. That's it. And the board has the powers to amend the powers that have been given to him. The board may impose some limitation, the board may change the powers, maybe even increase them. Plain, nice and easy. Exact powers जो है ना, वो separate sections में आप आगे पढ़ेंगे. ये तो एक conceptual base बता रहा है कि जी कानूनी चीज है ना, तो आपको उसको लिख के एक तहफ़्फ़ुज़ देना है ऑफिसर को कि आप अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए आपके पास लीगल बैकिंग है कि आपके पास पावर्स हैं, प्लस बोर्ड को आपने तहफ़्फ़ुज़ दे दिया कि वो जब चाहे अपने ऑर्डर्स के थ्रू इन पावर्स को अमेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट. Sarnud Munir is asking, sir, I'm working in government organization. It's pension directorate. Here the director is only liable for penalty in case for any wrong payment to pensioners is up to 3 to 4% only, while the rest of the liability is rest upon the shoulders of assistant and upon lower staff. Why it is so? Look, government departments में डिफरेंट लेजिस्लेशन बनाई जाती है, डिफरेंट चीजों का पर्पस देख के फोकस रख के. एक चीज आपको समझनी होगी, देयर इज एन आइडियल सिचुएशन एंड देयर इज अ ग्राउंड रियलिटी. जहां लेजिस्लेशन बन रही होती है ना, वहां पे जो लोग इनपुट दे रहे होते हैं, ऑब्वियसली उनकी कोशिश होती है कि उनकी पर्सनल लायबिलिटी जितनी कम पॉसिबल हो सके की जाए. एंड दे आर यूजुअली इंटेलिजेंट पीपल. वो अगर आपकी सुपीरियर पोजीशंस पे पहुंचे हैं तो ऐसे नहीं पहुंचे. It is not an ideal situation because ultimately the responsibility should lie with the head. As Nixon used to say, the buck stops here, whoever is leading. However, one argument that they give in favor of this structure is that it keeps the lower staff on their toes too. अगर सारा कुछ आप सिर्फ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देंगे तो उनको कोई इंसेंटिव नहीं होगा केयरफुल होने के लिए, अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करने के लिए. एनीवे, व्हाट इज लॉ इज लॉ. It is open to debate. There are both perspectives on this, and depending on which side of the divide you are, you may have your opinion about it. Next. Next question is from Yasin Ali Bakruddin. He's asking, how fair is it for the government to charge ad valorem duty in the cost of product and then charge a hefty sales tax on the product? For example, petroleum prices. Not very fair. In fact, you know what? I'm a proponent of focusing on direct taxation. When indirect taxes were introduced worldwide, the aim was to bring people in the tax net, not to make it a cash cow. And the impact that it has on the economy, and I've written several research articles on that, I'll quickly run you through in a few lines. Just think about it. You have given a very good example of petroleum. You had indirect tax, sales tax on petroleum. Now what happened? Everything needs to be transported. So the cost, the additional cost of taxation is built into that. The cost of business has risen. You are becoming less competitive. The world is a global economy now. The imports, you are imposing duties, but still some of the imports, especially from China, are more competitive than your local products. You already have the most expensive electricity in the region. Now when you are exporting, you become less competitive. The result, your overall GDP is not growing as much as it might otherwise. And at times, in real terms, if you take inflation into consideration, it may actually be contracting. Now, what is the impact? If the cake, GDP is the cake, is shrinking, the pie of the cake that government is getting, taxation revenue, would not grow as much as the government would like. So I agree with you that structural reforms need to be done, and the focus should be more on direct taxes rather than indirect taxes, which is a form of regressive taxation anyway. Next. Mohammed Kotwala is asking, sales tax special procedure rules regarding withholding of sales tax is also... Okay, Mohammed, the way we have planned sessions, I've already mentioned in detail, we are covering base law. Once these base law sessions will be covered, then inshallah we'll move on to the rules. So that is something I'm afraid you have to just hold on to for a while. Najmul Hassan is asking, auditor can bypass the deputy commissioner in any decision. I don't know if he's commenting now. Yeah. Auditor is basically driving the authority from the office of commissioner, and the deputy commissioner is higher in the hierarchy. In fact, the cases are assigned to them.
If you are referring to general order, it's a different concept. If you are referring to within directorate, no. We'll be going through these details when we'll cover the audit, special audit, these things. Then we'll see exactly how the auditor function, what his powers are, and whether he can be superseded or not. Next. Next question is from Farooq Mahmood Saif. He's asking, I couldn't attend the webinar last time. Could you please clarify the 1% withholding from unregistered person? Okay, you can always quickly go through and check that on Vimeo. It's been uploaded now? Yeah, it has been. Okay, it is available on ACCA channel on Vimeo. That is Vimeo. /ACC Pakistan. Next question is from Sarmad Munir. He's asking, while, as you said, in PRA, the director is sole responsible or have major part of responsible lies upon it. Why there is controversy in all government departments? Are they have different government rules for different government departments? Unfortunately, yes, there is not a standardization in various departments. The rules somewhat differ in different departments. Next question is from Aga Mushtaba. He's asking, does small business... But guys, you know what? You are asking me about governmental policies and HR policies in a sales tax session. How interesting is that? Okay, I like that, but please try to focus the questions on the topic in hand. If you are focusing on topic in hand, it would save us time. The next question is from Aga Mushtaba. He's saying, do small businesses register with tax authorities like small grocery shops? If they are not within the definition of cottage industry, as we discussed in the first session of this series, then Aga sir, yes, they have to if they are making taxable supplies. Second last question is from Fazal Muhammad. He's asking, will we cover today rates and methods of calculating sales tax in particular scenarios? These specified rates will be covered in the last training session of this series, which we are expecting inshallah to be on next Saturday. Today we will be covering some very interesting sections, but you have to wait for that. As for the exact rates, no, that would be in the last session. Last question before we go on free break is from Muhammad Amin. This is the first time ever he has said to me, so I guess he is feeling really thirsty now. No, actually, there is just one question which just came up now after this question. Okay, so these are now two questions. Yeah, okay. So, sir, how FBR is monitoring their employees? It is from Muhammad Amin Rashid. Again, this is one of the areas where FBR tries to convince us that they have a very good system of ACRs, controls, checks and balances. But the taxpayer and we the professionals believe that there is a lot of room of improvement and a lot of room to convert the subjective powers into objective ones. So read between the lines, you have your answer. Next question is from Kanza Nasi. She's asking a very basic question. What is the difference between an ordinance and an act? You don't know that, Kanza? Ordinance is promulgated by the President of Pakistan. Act is a legislation that is actually directly passed by the Assembly before being enacted by following the due process afterwards. So that is the basic difference. Next. Okay, the last comment before we move on to tea break is from Kamal Hussain. She's saying, Mr. Meer, I appreciate on how you deal with every question so politely. Okay, thanks for the compliment. Okay guys, we are going to have a quick 15 minutes tea break. It's 10:45, almost 10:45 in ACCS clock here. So I'll see you back exactly at 11 a.m. inshallah. Have a quick tea, grab a juice, water, whatever you prefer. Get freshen up, write up some questions if you have, and I'll see you guys in 15 minutes.
Assalamu alaikum, hello and welcome back to all of you. The 15 minutes break is over. So we'll continue from where we left. Section 32, Delegation of Powers. Delegation of powers का concept आप पढ़ चुके हैं अपनी ACCA studies में. The concept is this: someone who is at a higher level can delegate their power to their subordinate in order to conduct day-to-day affairs. However, the responsibility, as per management rules, still rests with the ultimate authority, which in initial delegated the powers. So keeping that in mind, let's proceed. The board or the chief commissioner, with the approval of board, may by an order and subject to such limitations or conditions as may be specified therein, empower by name or designation. So the empowerment can be for a specific individual by naming them or for a specific designation. Who? A. Any additional commissioner, Inland Revenue or deputy commissioner to exercise any of the powers of the commissioner, Inland Revenue under this act. अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक सेंस ऑफ रेपिटेशन आपको आएगी इन पार्ट कुछ डेजिग्नेशन की. उसकी वजह ये है कि हर हायरार्की पे जो अल्टीमेट हायर ऑफिसर है उसके नीचे के जो दो ऑफिसर्स हैं उनको डेलीगेशन की प्रोविजन रखी गई है. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होगा जी बोर्ड की क्यों रखी गई है. पहली तो चीज है भाई कानून है, यू हैव टू फॉलो दैट. लेकिन इफ यू थिंक अबाउट इट लॉजिकली, द रीजन इज दैट कि अगर दो में से एक ऑफिसर मिसिंग है, किसी वजह से सीट वैकेंट है, पोस्टिंग नहीं हुई, ट्रांसफर नहीं हुई और कोई क्रिटिकल मैटर है, तो जो उसका सबऑर्डिनेट है उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी टेम्परेरीली डेलीगेट कर दें पावर, ताकि अफेयर्स जो हैं एफपीआर के उस पर्टिकुलर फंक्शन के या डायरेक्टरेट के वो नेगेटिवली हैम्पर ना हो. So in this regard, A में है कि we can delegate FPR, the board or chief commissioner can delegate the powers of any additional commissioner of any commissioner to any additional commissioner or deputy commissioner. यानी कमिश्नर के नीचे जो इमीडिएट दो ऑफिसर्स हैं एडिशनल और डिप्टी कमिश्नर, उनको कमिश्नर की पावर डेलीगेट कर सकता है. कौन कर सकता है? चीफ कमिश्नर या डायरेक्टली बोर्ड. इसी तरह any deputy commissioner inland revenue or assistant commissioner inland revenue can be delegated the powers to exercise any of the powers of an additional commissioner. No surprise, commissioner के नीचे कौन है? Additional commissioner. Additional commissioner की हायरार्की में नीचे दो कौन है? डिप्टी और असिस्टेंट. पहले हमने देखा था कमिश्नर, कमिश्नर के नीचे एडिशनल और डिप्टी. अब एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल के नीचे डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर. इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू has the power can be delegated to exercise the power of any deputy commissioner. And similarly, D में एक प्रोविजन रखी है others, इसको हम कहते हैं any other officer of inland revenue to exercise any of the powers of an assistant commissioner inland revenue under this act. यानी असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे जितने ऑफिसर हैं उनमें से किसी को भी इख्तियार दिया जा सकता है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर की पावर जो है उनको एक्सरसाइज करें. Subsection 2 has been deleted and subsection 3 put a bar कि जिस ऑफिसर को चीफ कमिश्नर या बोर्ड ने ये पावर डेलीगेट की है वो ये नहीं कर सकता जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि अच्छा आपने मुझे डेलीगेट की, मैंने आगे उसको कर दी, उसने आगे उसको कर दी. नो नो नो, आपको जो पावर डेलीगेट कर दी है बोर्ड ने या चीफ कमिश्नर ने, आप वो पावर आगे डेलीगेट नहीं कर सकते. ओके, 32A इसका क्वेश्चन ब्रेक से पहले आया था ब्रीफली, हम इसको अब डिटेल में कवर करते हैं. 32A, ऑडिट बाय स्पेशल ऑडिट पैनल इज अ न्यू प्रोविजन. बेसिकली देयर हैड बीन दिस इशू लेटली कि ऑडिट्स के बारे में ये क्वेश्चन किया जाता था कि जी जो ऑडिटर हैं एफपीआर के सरकारी मुलाजिम, उनमें से कई बीकॉम करके आए, दूसरी चीजें करके आए, दे आर नॉट एग्जैक्टली दैट टेक्निकली साउंड. Obviously, they would claim they were very technically sound by experience, but the general perception, especially by professionals, the practicing professionals, were that they हम इनसे बात करते हैं कई चीजें इन्हें समझ नहीं आती. So there was a gap in the quality of the services, the
quality and the abilities, etc. So considering that कि एक long standing proposal था जिसको FPR ने push किया, government ने इसको approve किया, special audit panels की authority दी गई है board को. Special audit panels क्या है, इसको हम डिटेल से अभी कवर करते हैं. Let's quickly read it through, then I'll elaborate for you. The board may appoint as many special audit panels as may be necessary, comprising 2 or more members from the following: an officer or officers of the Inland Revenue, firm of chartered accountants under Chartered Accountant Ordinance, firm of cost management accountant under Cost Management Accountants Act, and this deed provision is very important. Any other person as director of the board. अच्छा, this is interesting. Ultimately, aim हमारी यही होगी कि इंशाल्लाह ACCA का भी इसमें specifically mention हो. बट आप एक चीज याद रखें कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को 66 में इनका एक्ट आया और इनको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट में अपना मेंशन कराने के लिए कई साल एंड डिकेड्स वेट करना पड़ा है. तो कंसिडरिंग दैट ACCA इज एक्चुअली मेकिंग गुड प्रोग्रेस. ये जो आपकी डी प्रोविजन है, अंडर दिस प्रोविजन बोर्ड कैन नाउ अपॉइंट ACCAs also to conduct the audit if they think they are fit for the purpose. इस हवाले से MNP जो है that is working very closely with ACCA team, ACCA executive team and ACCA team Pakistan are specially focused on these areas. Tax bar के साथ collaboration बढ़ रही है, chamber के साथ बढ़ रही है, regulators के साथ बढ़ रही है. तो ultimate aim यही है. Inshallah, in due time, ultimately, ACCA would be referred to here. But as of now, this is the piece of legislation which has the provision to allow ACCAs to conduct audit of a registered person or persons, including audit of refund claims and forensic audit, and the scope of such audit shall be determined by board or the Commissioner of Inland Revenue on a case-to-case basis. In addition, the board may, where it considers appropriate, also get audit conducted jointly with similar audits being conducted by प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन सेल्स टैक्स. सो यहाँ पे 3 चीजें हो गई. एक चीज, स्पेशल ऑडिट पैनल बोर्ड बना सकते हैं जिसमें कम से कम 2 मेंबर होंगे और आगे आप पढ़ेंगे उन 2 में से एक FPR का अपना बंदा होगा, ऑफिसर, और एक बंदा या CA हो सकता है या ACMA हो सकता है या ACCA हो सकता है. 2 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं. दूसरी चीज, ऑडिट का स्कोप जो है वो FPR सेटल करेगा, FPR का ऑफिसर, कमिश्नर. तीसरा, ज्वाइंट ऑडिट भी किए जा सकते हैं प्रोविंशियल अथॉरिटी के साथ. फॉर एग्जांपल, FPR किसी केस में अगर PRA भी ऑडिट कंडक्ट कर रहा है उसी पार्ट, उसके साथ ज्वाइंट स्पेशल ऑडिट कर सकती है, या फॉर दैट मैटर विद SRB. Subsection 2 says, notwithstanding that records of a registered person have been audited by an officer appointed under Section 30, the board or a commissioner may direct special audit panel appointed under this to audit the record of any registered person. Good news, आपका ऑडिट पहले भी हो गया हो तो बोर्ड आपका स्पेशल ऑडिट फिर भी करा सकते हैं. Every member of special audit panel appointed under subsection 1 shall have the powers of an officer of revenue under section 25 कवर कर चुके हैं. 37, 38, ये 25, 37, 38 बेसिकली इन पावर्स को डील करते हैं कि आप रिकॉर्ड्स मंगवा सकते हैं, आप किसी बंदे को कॉल कर सकते हैं फॉर टेस्टिमनी एक्सेट्रा, विच ऑब्वियसली आर नेसेसरी कि अगर आपने ऑडिट कंडक्ट करना है तो विदाउट दीज पावर्स आप उसको कंडक्ट नहीं कर सकते. तो इफ यू आर अपॉइंटेड एज पार्ट ऑफ द स्पेशल ऑडिट पैनल, नाउ द एक्ट हैज given you the sanctity of law, the backing of law, कि आपके पास automatically ये power deem होती है कि you are holding these powers on behalf of FPR. Each special audit panel shall be headed by a chairman who shall be an officer of the Inland Revenue. अच्छा, number very interesting. If any one member of the panel other than the chairman is absent, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी proceedings जो हैं वो आगे इसमें invalid हो गई हैं या they can be called into question. अच्छा, this is somewhat controversial because frankly, if you think about it, this is obviously at the moment we have to follow it, but as a point of discussion and obviously अब जो budget proposals जाएंगे में भी इसको उठाया जाएगा, ACCA के बजट प्रपोजल में भी हाईलाइट होगा. स्पेशल ऑडिट पैनल का मकसद क्या था? ऑडिट प्रोविजन तो पहले ही मौजूद थी सेल्स टैक्स एक्ट में. इसका मकसद ये था कि लोगों का एक कॉन्फिडेंस बढ़ा लो ऑन दी, स्पेशली जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, जिन केसेस में FPR स्पेशल ऑडिट पैनल
कॉन्स्टिट्यूट करे, लोगों का एक एतमाद हो कि अच्छा क्वालिफाइड लोग कर रहे हैं, एक अच्छे स्टैंडर्ड पे कंडक्ट हो रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में। अब अगर आपके पास दो लोग हैं, उनमें से एक जो है, जो चेयरमैन है, वो एफपीआर का ऑफिशियल है और दूसरा बंदा है एब्सेंट है, तो प्रैक्टिकली उसको कौन कंडक्ट कर रहा है? वही ऑफिसर कर रहा है जो पहले कर रहा है। तो यहाँ पे आपका मकसद तो फौत हो गया स्पेशल ऑडिट पैनल बनाने का। So that is something which needs to be considered in this. However, as it is right now, at the moment, this is the legislation कि अगर ऑडिट पैनल में चेयरमैन एब्सेंट है तो इनवैलिड होगी या प्रोसीडिंग रुक जाएगी या कैन बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। कोई और मेंबर अगर एब्सेंट है तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट एब्सेंट यू कांट कॉल द प्रोसीडिंग इनटू क्वेश्चन, लेट अलोन कॉलिंग इट टू बी इनवैलिड। Subsection 6. Not surprisingly, the board is given the power to prescribe rules in respect of constitution, procedures, and working of special audit panel. Obviously, एक evolving concept है, with time जो इनको problems आएगी उसके accordingly वो define करेंगे कि अच्छा ये specific procedures हैं, ये इसकी workings होगी, etc. Rules भी अभी over the break हारून साहब who is looking after all these CPD activities हमारी discussion हो रही थी। इंशाल्लाह रूल्स को भी हमने कवर करना है सीपीडी सेशंस में, तो वहां पे डिटेल से आप इन चीजों को देखेंगे। तो उसके लिए एक लीगल बैकिंग, लीगल प्रोविजन ऑलरेडी रखी गई है सेल्स टैक्स एक्ट में। दिस ब्रिंग्स अस टू चैप्टर 7 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज 33। यहाँ पे विल बी कवरिंग डजन्स ऑफ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। सो बिफोर वी actually jump into this ocean of offenses and penalties, if you have any questions, we'll quickly take questions for 5 minutes. There is one question from Muhammad Nabi Iqbal. He's asking if a registered person is not charging sales tax in his invoice. We are covering that in the next section. Okay, next question from him as well. As a reduced rate is not claimable, can a vendor have option not to opt the reduced rate by Hold on to it. We'll be covering that in the relevant section. Sakib Rizwan is asking what is the role of Chief Commissioner and withholding tax and what's its role? What's its role? What is the role of Chief Commissioner? Chief Commissioner withholding or just Chief Commissioner? Chief Commissioner. Chief Commissioner is basically the most senior officer in the hierarchy under the board, which is directly liaising with the board. आपका एफपीआर कैसे बने? उन ऊपर बैठे हुए हैं बोर्ड में डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। ये डिफरेंट जो चीफ कमिश्नर्स हैं ना, सेल्स टैक्स के हैं, विद होल्डिंग के, ये उनके साथ डायरेक्टली कोलैबोरेट कर रहे हैं। इनके नीचे पूरी टीम्स है। प्रैक्टिकल डे टू डे वर्किंग के लिए जो अथॉरिटी और जो टैक्स पेयर की नॉर्मल लास्ट डीलिंग होती है वो कमिश्नर लेवल है। कोई मामला उससे ज्यादा एस्केलेट कर जाए तो वो चीफ कमिश्नर लेवल पे जाता है। आप ये समझ लें कि चीफ कमिश्नर इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट दैट इज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। Next question is from Omer Zaheer. He's asking who is PRA and SRA? These are the provincial revenue authorities post 18 amendment। शायद आपने थोड़ा लेट हमें ज्वाइन किया, ये मैंने बताया था कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो है ये दे दिया गया है प्रोविंसेस को विद कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। तो उसके लिए सिंध ने सिंध रेवेन्यू बोर्ड बनाया, अपनी लेजिस्लेशन बनाई जहाँ पे वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज सिंध बेस्ड कलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह पंजाब ने पीआरए बनाई, पंजाब अथॉरिटी, जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कलेक्ट कर रही है। प्रैक्टिकली ये होता है कि अगर आप इस्लामाबाद में डील कर रहे हैं तो वहां की लेजिस्लेशन को आप देखते हैं सर्विसेज पे, पंजाब में डील कर रहे हैं यहाँ की लेजिस्लेशन को देखते हैं, सिंध में डील कर रहे हैं वहां की लेजिस्लेशन को देखते हैं। अगर कोई इन सब में कवर नहीं है जो एरियाज और जो गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स हैं, उनके लिए आप एफपीआर को देखते हैं। Next question is from Salman Nabi. He's asking, is a specific scope is defined in respect to special audit or is this cover the whole area? The scope is to be set by the board. So ये अलाउ किया गया बोर्ड को। देखें एम यही है कि जो जाहिर है हर मैटर के लिए तो स्पेशल ऑडिट पैनल नहीं बोर्ड बनाएगा, लेकिन जो बड़े लार्ज डिस्प्यूटेड मैटर्स होंगे या कॉम्प्लिकेटेड होंगे, एक तरह की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर है कि टैक्स पेयर को भी उस पर एतमाद हो। लेट्स से लार्ज
मोबाइल कंपनी है, वी वॉन्ट नेम एनीवन, उनका कोई जी कई सालों से रिफंड का केस चल रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, ऑडिट के ऊपर उन्हें ऑब्जेक्शंस है, तो इस तरह के लार्ज स्केल केसेस में ऑडिट पैनल, स्पेशल ऑडिट पैनल्स बनेंगे। हैविंग सेड दैट, लॉ में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। लॉ में एज यू हैव जस्ट सीन, उन्होंने अथॉरिटी बोर्ड को दी गई है, ये ओपन रखा गया है कि बोर्ड स्कोप तय करेगा। नेक्स्ट। A similar question, relevant question from Waleed Mujahid. He's asking, special audits are surprise audits? No, special audits are not necessarily surprise audits. And actually, no audit can be surprise per se. For an audit, you normally have to be given a notice. Next question is from Abdul Arslan. He's asking, what if members of the special audit team have disagreement over their opinions? Majority. Next question is from Muhammad Ali. He's asking, can PRA conduct audit in SRB if they have found any anomaly in service provided by Sindh to Punjab? PRA cannot conduct audit in SRB. PRA can conduct audits within its jurisdiction. So it might be that a taxpayer is based in Sindh, but they are delivering services in Punjab which come under the purview of PRA. So based on that services, PRA can issue them a notice for audit of those services or their affairs based on those services. One revenue authority cannot go and conduct the audit of another revenue authority because they have different legal backing, independent legal backings based on the provincial territories. Next. A question by Mohammed Yasir Iqbal, although it has been answered in the previous session as well. Can you elaborate difference between sales tax and VAT? Yes, we did that in the morning, Yasir. There are quite a few similarities. Both are indirect ad valorem taxes. Both are levied on goods and services, but there are a few fine-tuned differences. So if you look at those similarities, they look similar, but the difference is key one. There is an element of double taxation in sales tax, which is not there in VAT. Sales tax is basically added on gross price, which is seller's cost plus the profit margin plus the tax that they have already paid. So there is that element of double taxation as well as an element of partial cost at each level of the chain. In VAT, the incidence of tax has been passed along the chain and ultimately the entire burden is borne by the end user. Next question is from Muhammad Amin Rashid. He's asking, provided that the restriction on the adjustment of input tax in excess of 90% of the output tax shall not apply in case of fixed assets or capital goods. We already covered that in the first session. However, if we have time at the end of the session today, ask me and I'll elaborate in detail again. Next question is from Ihtishamul Hassan. He's asking, if company selected for audit and we get a notice from one commissioner. Hang on to it. We'll be covering the audit provisions in detail in a later session. Next question is from Sarvan Mureed. He's asking, sir, PRA is only for the purpose to collect sales tax upon services in Punjab. Yes, sir. And that's all. Great. Okay, so now we are going to start a very, very important section, section 33, offenses and penalties. This section is very important क्योंकि एक तो आपको आइडिया हो जाएगा कि what can be the cost of not meeting your responsibility. और जो हमारे कॉमन क्वेश्चन होते हैं, क्या नॉन रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है, व्हाट इफ मैंने रिटर्न जमा नहीं कराई, व्हाट इफ अगर मुझसे गलती हो गई, व्हाट इफ अगर जानबूझ के किसी ने किया, ऑल दीज वुड बी आंसर्ड हियर. सो लेट्स स्टार्ट. Whosoever commits any offense described in column 1 on the table of the table below shall, in addition to and not in derogation of any punishment to which he may be liable under any other law, यानी बाकी पाकिस्तान के कानून के तहत जो आपको फ्रॉड की पनिशमेंट या दूसरी penal clauses है, वो अपनी जगह इंटैक्ट है. These are in addition to them. Be liable to the penalty mentioned against that offense in column 2 thereof. टेबल में आपके सामने 3 कॉलम है. पहले कॉलम में ऑफेंस होगा एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे, देन पेनल्टीज उस पे कौन सी है, और आपकी ईज के लिए लास्ट कॉलम में रेलिवेंट सेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 को रेफर किया गया है. सबसे पहले सबसे कॉमन क्वेश्चन जो होता है, इफ वी फेल टू फर्निश अ रिटर्न विद इन द ड्यू डेट, पेनल्टी वुड बी 5,000 रुपीज.
Okay. Yes, this is something new that we have gotten today. Very interesting. So ACCA is upgrading the infrastructure for your benefits constantly. So there is the penalty, 5,000 rupees. Provided that in case a person files a return within 10 days of the due date, he shall pay a penalty of 100 rupees for each day of default. So अगर 10 दिन ड्यू डेट क्या है याद है? क्विक आंसर हमने फर्स्ट सेशन में कवर किया. I'll give you 20 seconds to answer this. No answer is a wrong answer. At least आप contribute कर रहे होंगे. We are here to learn only. So just your feedback जो आपके ज़हन में आता है share कीजिए. 15th of the every month. Okay. और कोई? 18th. Okay. 20 seconds are over. Yes. अगर most common जो regime है वो monthly है. Monthly regime के लिए 15 days following the end of the month is the deadline to submit your tax return. So अगर 31 जनवरी तक की रिटर्न है 15 फरवरी तक आपने जमा करानी है. तो क्या कह रहे हैं 15 फरवरी तक अगर आप जमा नहीं कराते लेकिन 25 फरवरी तक करा देते हैं तो 100 रुपीज डेली की पेनल्टी होगी. विच मीन्स कि अगर आप 25 तक कराएं तो 1000 की आपको पेनल्टी होगी. अगर 25 के बाद कराएं तो 5000 की पेनल्टी होगी. अच्छा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है. अनलाइक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस यहाँ पे इस चीज का कोई जिक्र नहीं कि पब्लिक फंड्स इन्वॉल्व हों. कहीं ये जिक्र नहीं है कि वो नील सेल्स टैक्स रिटर्न हो या उसमें कोई सेल्स टैक्स ड्यू हो या ना हो. अच्छा प्रैक्टिकली दिस इज अ कॉन्टेस्टेड इशू. देयर आर जजमेंट्स ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल एंड अदर लीगल फॉरम्स जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के प्रिंसिपल से ही डिड्यूस करती हैं कि अगर सेल्स टैक्स रिटर्न लेट जमा हुई है लेकिन उसमें कोई सेल्स टैक्स पेएबल नहीं था या कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं थी, नील रिटर्न थी, तो नेशनल एक्सचेकर को क्योंकि कोई लॉस नहीं हुआ इसलिए उस पर नील पेनल्टी इंपोज होगी. लेकिन दिस इज अ कॉन्टेंटियस इशू. इट वेरी टैक्स पेयर टू टैक्स पेयर. द ऑफिसेज ऑफ द कमिश्नर, ऑफिसेज ऑफ द कमिश्नर मीन जिस भी ऑफिसर से आप डील कर रहे हैं चाहे वो असिस्टेंट है, एडिशनल है या डिप्टी है, दे फाइट tooth and nail to impose the relevant penalties. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कई कंपनीज होती हैं 5-5 साल उन्होंने रिटर्न नहीं जमा कराए तो उनके अब लाखों में पेनल्टीज बन रही होती है. लेकिन इफ यू आर गुड इनफ एंड यू हैव अ साउंड कमांड ऑन द लॉ you can actually contest and win this point in light of the precedents that are maujood, that are already in existence. और ये precedents जो हैं mostly deduce किए गए थे income tax ordinance से, but specific judgments regarding Sales Tax Act 1990 implications are also in existence. Anyway, ये just मैंने इसलिए mention किया कि आपके knowledge में हो outside the sphere of today. जब हम advanced taxation planning पे session करेंगे वहाँ इंशाल्लाह इसको हम डिटेल से कवर करेंगे. Second, any person who fails to issue an invoice when required under this act. सेल्स टैक्स के लिए आप रजिस्टर्ड है, इनवॉइस आपने इशू करनी है, आप नहीं कर रहे. दो रीजन हो सकते हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे या आपको नॉलेज नहीं था. याद रखिए इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. आप कहीं पे जाके ये प्ली लेकर खुद को एब्सॉल्व नहीं कर सकते कि जी मुझे पता नहीं था, मैंने रेड लाइट तोड़ दी, मुझे पता नहीं था कि रेड लाइट नहीं तोड़नी चाहिए, गलत होता है. आपको पता होना चाहिए था. When you are doing business, you are supposed to know about the relevant legislation. Anyway, if you are breaching this particular requirement, committing this offense, again the penalty is 5,000 rupees or 3% of the amount of tax involved, whichever is higher. Any person who unauthorizedly issues an invoice in which an amount of tax is specified. अच्छा, unauthorizedly कहाँ पे हो सकते हैं? आप registered ही नहीं, आप यू आर नॉट ऑथोराइज टू इशू अ टैक्स इनवॉइस, या किसी और पर्सन की आप इमिटेट कर रहे हैं कि आपने इनवॉइस इशू कर दी है जबकि आपके पास अथॉरिटी नहीं है वो इशू करने की. बेसिकली दीज आर इफेक्टिवली फॉर्म्स ऑफ टैक्स फ्रॉड. सो इन सच अ केस द पर्सन विल पे अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज or 5% of the amount of tax involved, whichever is higher. This is actually quite lenient. Just wait as we proceed through the offenses and you'll see it would start getting much more stricter. So any person who fails to notify the changes of material nature, not the word material nature,
इन द पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी। मटेरियल चेंजेस क्या हो सकते हैं? आपने ऑल टुगेदर नई ट्रेडिंग एक्टिविटी शुरू कर दी। पहले आपका स्टॉक आप नहीं रखते थे, आपने स्टॉक रखना शुरू कर दिए। हेड ऑफिसर्स या फैक्ट्रीज आपने मूव कर दी है, या नई फैक्ट्री आपने लगा दी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। So if you do not notify of these material changes to FPR, you shall be liable to pay a penalty of 5,000 rupees. And this is under section 14, which we covered in the first section, first session on our in our training series last week. Number 5, any person who fails to deposit the amount of tax due or any part therein thereof in the time or manner laid down under the rules, etc., etc., etc. ड्यू डेट तक ड्यू तरीके से आप पैसा जमा नहीं कराते। अब इसके दो एलिमेंट है, ड्यू डेट एंड द ड्यू प्रोसीजर। ड्यू प्रोसीजर क्या है? सीपीआर आपने जमा कराना है, स्टेट बैंक में कराना है, नेशनल बैंक में कराना है। आप कहते हैं, या अगर कमिश्नर आपको अलाउ करे, कई केसेस में वो कर देते हैं, आप चेक भी जाके जमा करा देते हैं, लार्ज अमाउंट से आप इन्वॉल्व हैं। आप जी ड्यू डेट तक जमा नहीं कराते, या लेट्स से आप कहते हैं कि मैंने मनी ऑर्डर आपको कर दिए, विच वॉज नॉट अलाउड, सो दैट वुड स्टिल बी अंडर दिस ऑफेंस कि आपने रेलिवेंट प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। Such person shall pay a penalty of 10,000 rupees or 5% of the amount of tax whichever is higher, provided that if the amount of tax or any part thereof is paid within 10 days from the due date। अच्छा, अब यहाँ पे आप सिमिलैरिटी देखें, लेजिस्लेशन में पीनल क्लॉजेस में भी सिमिलैरिटी है। आप याद करें, शुरू में जो हमने फर्स्ट ऑफेंस पढ़ा है कि अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट तक जमा नहीं कराई 5,000 पेनल्टी है, लेकिन 10 दिन तक कर दें तो कम पेनल्टी है 100 पर डे। सेम पैटर्न मेथड है, अगर 10 दिन तक आप टैक्स जमा करा दें तो कम पेनल्टी है, 10 दिन तक नहीं कराते तो 10,000 रुपीज या 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हाई। अगर आप 10 दिन के अंदर करते हैं, द डिफॉल्टर शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट, यानी अप टू 5,000 आपको पे करनी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ 10,000 या 5% ऑफ टैक्स, विच इन सम केसेस कैन बी वेरी मटेरियल। Provided further that no penalty shall be imposed when any miscalculation is made for the first time during a year. Provided further that if the amount of tax due is not paid even after the expiry of the period of 60 days of the issuance of notice of such payment by the officer of the Inland Revenue, not below the rank of Assistant Commissioner, defaulter shall be liable upon conviction by special judge to, अब शुरू हो रही है इंटरेस्टिंग चीजें, imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to amount equal to the amount of tax involved or with both। ठीक है जी, अगर आपको नोटिस इशू हुआ है, और नोटिस कौन इशू कर सकता है? मिनिमम असिस्टेंट कमिश्नर के डेजिग्नेशन का बंदा, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे इंस्पेक्टर या स्पेशल ऑफिसर, ये आपको इस चीज का नोटिस इशू नहीं कर सकते कि आपका ये टैक्स आउटस्टैंडिंग है, ये आप जमा कराएं, अनलेस ऑब्वियसली ऑडिट फाइंडिंग्स में आए, विच इज अ सेपरेट प्रोविजन जो हम अलग से पढ़ेंगे। इफ दिस इज द केस, तो इन वर्स्ट केस सिनेरियो आपको 3 साल तक की जेल टर्म भी हो सकती है, या फाइन विच कैन एक्सटेंड टू द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, और इवन बोथ थिंग्स। लेकिन ये प्रोसीडिंग्स होती हैं स्पेशल जज की। स्पेशल जज क्या है, उसकी क्या पावर्स हैं, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे रेलेवेंट प्रोविजन में। जस्ट लिटिल हिंट, स्पेशल जज जो होता है वो एटलीस्ट सेशन जज की लेवल का बंदा होता है, जिसको ये स्पेशली अपॉइंट किया जाता है फॉर दीज मैटर्स। एनी पर्सन हु रिपीट्स erroneous calculations in the return during a year whereby amount of tax less than the actual tax due is paid, such person shall pay a penalty of 5,000 rupees or 3% of the amount of tax involved or whichever is higher। पहली गलती आपने की, कोई मसला नहीं, करेक्ट कर, गलती रिपीट की है अगेन। अब दो चीजें, या तो कोई फ्रॉड हो रहा है या आपके सिस्टम्स में सीरियस फ्लॉ है। आइदर वे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर आप रिस्पॉन्सिबल है, ये गलती अवॉइड हो सकती थी, आपने इसको अवॉइड नहीं किया,
then you should be penalized for it, and this is the penalty, which is 5,000 rupees or 3% of the amount of tax involved, whichever is higher. Any person who is required to apply for registration under this act but does not make the registration before making taxable supplies. यहाँ पे keyword क्या है? Before making taxable supplies. So the onus is कि if you are to be registered and you do not get registered but start making taxable supplies, you are committing an offense. And what is the penal clause, the penal action? You'll be liable to pay a penalty of 10,000 rupees or 5% of the tax amount involved, whichever is higher, provided that such a person who is required to get registered under this act failed to get registered within 60 days of the commencement of taxable activity shall further be liable. 10,000 या 5% ऑफ टैक्स तो आपको पहले लगा ही लगा, दोनों में से हाई जो है. अगर आप 60 दिन तक रजिस्टर्ड नहीं हुए, फिर आपको फर्दर स्पेशल जज से कॉन्विक्ट करा के 3 साल तक की जेल टर्म या फाइन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, या दोनों आपके ऊपर इम्पोज किए जा सकते हैं. सो ये क्वेश्चन आया था ब्रेक से पहले कि जी अगर वी आर टू बी रजिस्टर्ड अंडर द लेजिस्लेशन फॉर सेल्स टैक्स और ना रजिस्टर्ड हो तो क्या हो सकता है. तो जनाब ये हो सकता है 3 साल की जेल टर्म हो सकती है, उसके साथ जितनी अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व है उसका फाइन हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, plus 10,000 rupees or 5% of tax, whichever is higher. So I think it makes more sense to get registered, especially more so कि अब जो systems develop हो रहे हैं, people issue tax invoices with tax numbers, आपके बैंक accounts recorded हो रहे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता चीजें systematic हो रही हैं, तो it's not that easier to be hidden. Of course, it's illegal. You should not do that in the first place. But लोग पहले जो सोच के करते थे sales tax avoidance के लिए कि you will be hidden, तो कितनी देर आप सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड बंदे से डील नहीं करेंगे, या तो आप डील ही अनरजिस्टर्ड बंदों से कर रहे हैं. अगर आप सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड लोगों से डील कर रहे हैं तो देयर इज अ हायर चांस कि अल्टीमेटली द स्पॉटलाइट विल बी ऑन यू. सो यू हैव टू डिसाइड वेदर इट्स वर्थ टेकिंग दिस रिस्क, एंड इन एनी वे यू विल बी कमिटिंग एन इलीगल एक्टिविटी बाय नॉट रजिस्टरिंग. Any person who fails to maintain records required under this act or the rules made thereunder. Now, this is a provision which is not in line with the ground realities. Normally, ये developed countries के laws में होती है, वहाँ पे for decades लोगों को educate किया गया, अच्छे system है, cost of doing business कम है, बहुत सारी चीजें. हमारे यहाँ literacy rate इतना नहीं है, लोगों को इतना इल्म नहीं है, कई genuine taxpayer हैं, लेकिन they don't have the capacity to maintain the records. However, जो बड़े businesses हैं उनको लाजमी करना चाहिए, लेकिन क्योंकि this is part of the law, everyone who is registered is required to maintain these records, as we have covered in the first session on this training series on sales tax. अगर आप नहीं मेंटेन करते तो क्या होगा? अगर नहीं मेंटेन करते तो पेनल्टी है 10,000 rupees या 5% of tax involved, whichever is higher straight. Where a registered person who without any reasonable cause in non-compliance with provision of section 25. Section 25 अगर आप याद करें हमने पहले सेशन में कवर किया था, it deals with producing the records when they are called by relevant officers of FPR. यानी अगर आप रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं करते पहले नोटिस पे तो 5,000 रुपीज की पेनल्टी है, दूसरे नोटिस पे नहीं करते तो 10,000 की पेनल्टी है, और तीसरे नोटिस पे नहीं करते तो 50,000 की पेनल्टी है. एंड दिस इज इन एडिशन टू द लाइकलीहुड कि आपके अगेंस्ट केस डिसाइड हो जाएगा, और जो भी वो असेसमेंट आपके अगेंस्ट की जाएगी वो भी आपको क्लियर करनी पड़ेगी unless until you decide to challenge that. So the 10th offense is any person who failed to furnish the information required by board through a notification issued under subsection 5 of section 26. In this case the penalty is 10,000 rupees. 9 और 10 का डिफरेंस ये है, सेपरेट सेक्शन डील करते हैं. 25 में ऑफिसर ऑफ एफपीआर आपसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर रहे हैं मोस्टली ऑडिट के पर्पसेस के लिए. सेक्शन 26 में जो है बोर्ड डायरेक्टली अंडर अ नोटिफिकेशन आपसे रिक्वायर करते हैं. 11 में फोकस आ जाता है एक्चुअली हार्डकोर फ्रॉड्स के ऊपर. एनी पर्सन हु फॉर्जेस अ डॉक्यूमेंट, हु प्रेजेंट a forged document to any officer of Inland Revenue or destroys, alters, mutilates or falsifies the record or knowingly or fraudulently
or fraudulently make false statement, false declaration, representation, or personify another party, etc., etc. Basically, in short word, अगर किसी तरह का आप fraud commit कर रहे हैं to subsection 37 के तहत और generally भी, तो such a person shall be liable to pay a penalty of 5,000 or 100% of the amount of tax involved, whichever is higher, basic, and further liable upon conviction. अच्छा आप देखेंगे जहां भी जेल टर्म या फर्दर पेनल्टीज की बात आ रही है वहां पे कन्विक्शन का मेंशन है. दिस इज बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान provides this protection to every citizen that they cannot be penalized in this way for any criminal act without proper legal proceedings. तो कोई भी कानून जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादिल नहीं हो सकता, इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता. हेंस दिस प्रोविजन ऑफ कन्विक्शन बाय स्पेशल जजेस टू स्ट्रीमलाइन द सेल्स टैक्स एक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. और नॉर्मली अगर केस स्ट्रांग हो तो स्पेशल जज कन्विक्ट कर देते हैं. इम्प्रिजनमेंट टर्म इन फ्रॉड के केसेस में 3 years तक है, अप टू 3 years एनी टाइम, और अ फाइन which is equal to amount of tax or both. So आपको पहले amount of tax देनी पड़ेगी if that was higher, plus another 100% amount of tax, plus up to 3 years in jail term. So this is the worst case scenario in case a party is found and convicted of committing tax fraud. Any person who denies or obstructs the access of an authorized officer to registered business premises or any other place where records are kept or otherwise refuses access to the stocks, accounts or records or fail to present the same when required under section 25, 38, 38A and 40B. 25 हम कवर कर चुके हैं, 38 और 40 हम आज कवर करेंगे इंशाल्लाह. ये भी डील करते हैं विद द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स और स्टॉक की एक्सेस. स्टॉक की एक्सेस इसलिए जरूरी होती है, मैंने पहले आपको बताया कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स चलती हैं पर्टिकुलर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से. स्टॉक टेक भी किए जाते हैं ऑडिट्स में, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के हवाले से ये क्वाइट कॉमन है. तो सच अ पर्सन, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर को रिकॉर्ड उसकी एक्सेस में रुकावट डालते हैं या उसको अपने स्टॉक रूम में एंटर नहीं होने देते, गोदाम में एंटर नहीं होने देते, तो इस तरह की ऑफेंस की पेनल्टी जो है 5,000 रुपीज या 100% ऑफ योर टैक्स लाइबिलिटी विच एवर इज हायर. एंड फर्दर अपॉन कन्विक्शन बाय स्पेशल जज, दिस इज द नॉर्म. यू विल सी दैट एवरीवेयर इन द सेल्स टैक्स एक्ट. Imprisonment, but in this case up to 5 years, or a fine which is equal to the amount of tax loss, or both imprisonment and the amount of tax loss. Any person who commits, causes to commit or attempt to commit the tax fraud, कुछ तो ऊपर डिफाइन कर दिया है, डॉक्यूमेंट्स फॉल्सिफाई करे, किसी को पर्सनफाई करे या किसी और तरह धोखा देने की ऑफिसर को कोशिश करे. लेकिन कई हमारे लोग क्रिएटिव होते हैं और भी कई डिफरेंट वेज निकाल लेते हैं, तो उनको जेनेरिकली 13 में कवर किया है कि किसी और तरह का भी टैक्स फ्रॉड कमिट करने की कोशिश करे या उसमें असिस्ट करे, कनाइफ करे, तो उसको भी पेनल्टी लगेगी 25,000 रुपीज या 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर. And again on conviction by special judge, imprisonment which can be up to 5 years or a fine equal to amount of tax loss or both the imprisonment and the amount of fine. Where a person violates an embargo placed on removal of goods in connection with recovery of tax. अच्छा ये section 48 में हमने कवर करना है, लेकिन ये प्रोविजन, ये पीनल क्लॉज समझने के लिए जरूरी है आपको एक बेसिक आइडिया हो. तो एफिलिएट्स और जिन लोगों को नहीं पता होता ये है कि सर्टेन केसेस में ये एम्बार्गो पुट कर दिया जाता है कि जी आप अपना स्टॉक रिमूव नहीं कर सकते या विदाउट ई टैग रिमूव नहीं कर सकते, कि वो चिप या डिफरेंट ई टैग लगा दिए जाते हैं. उससे ये पता लग जाता है कि डिफरेंट कस्टम पॉइंट से जब स्टॉक गुजरता है तो आइडिया हो जाता है वो कहाँ से गुजरा है. इसमें टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स फ्रॉड जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के तहत हो रहे हैं, तो ये कहा जाता है ये सामान तो जा रहा है अफगानिस्तान के लिए, लेकिन वो अफगानिस्तान की बजाय लाहौर में उतर जाता है या कराची में उसको सेल कर दिया जाता है. तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए, इस चीज को खत्म करने के लिए ये प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए गए हैं. तो अगर कोई बंदा इसको वायलेट करे, बगैर चिप के या बगैर प्रॉपर ऑथोराइजेशन के लिए सामान रिमूव कर दे, तो उसको
10% of amount of tax involved here, 25,000 rupees, whichever is higher, की penalty है, and upon conviction by special judge, a jail imprisonment term है up to a year, along with the fine of the amount of tax involved, either of the two or both, in addition to the penalty. I know sometimes it gets boring, but don't worry, we will be through the offenses quite quickly now, and then we'll get on to more interesting areas. Achha, before we proceed further, we'll take a quick break for questions, 5 to 7 minutes, and then we'll finish the offenses and move on to the next section. Okay, the first question is from Ihtishamul Hassan. He's asking who pays the penalty. We are in the business for 4 years and usually we file return after due date, but never we paid a penalty and no one asked for it. We are being showed files and are active taxpayers. Okay, Ihtisham, if you attended our first session, we covered the relevant provision that you are given leniency for the first time. अगर आप 2 consecutive महीनों की fail करो ना, to file on time. If you fail to file 2 consecutive months on time, then you come within the purview of the system. अच्छा, practically क्या होता है? पहले तो बहुत ज़्यादा leniency थी, there are capacity issues. इनके पास इतने सिस्टम नहीं थे कि सारे टैक्स पेयर को देख सकें, तो वो फोकस करते थे बहुत लार्ज टैक्स पेयर के ऊपर. बट लेटली ऑटोमेटेड सिस्टम आयरिस आ रहा है, जो क्रेस्ट है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है. आयरिस क्रेस्ट इनके ऑटोमेटेड सिस्टम है. आयरिस नया सिस्टम है जिसमें एम है कि अल्टीमेटली क्रेस्ट को रिप्लेस कर देगा. क्रेस्ट आपके सेल्स टैक्स से डील कर रहा है, इसी का पीआर है, एसआरपी के सिस्टम है. इन सिस्टम्स में अब इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं और अब लार्जली बड़ी हद तक जो 2 consecutive periods को मिस करते हैं उनको वो notices issue करते हैं. Still there are capacity issues, 100% coverage नहीं है. So if you have been lucky, that's good for you, but don't make it a habit lest you fall into the purview. अच्छा, interesting चीज ये है कि अगर ये उस वक्त आपको notice issue करें when you are in default, then you are liable to penalty. अगर आपने जमा करा दिए उसके बाद नहीं, ये normally आपको notice issue करते हैं. Next. Next question is from Muhammad Hatif Sajjad Dar. He's asking, you said that the return should be filed on 15, but there are provisions in STA 90 in which the payment of liability of 15 of the following month and the filing is 18th. Basically, there are different regimes. आपकी quarterly regime भी चलती है. जो most common regime है हमने उसकी बात की है. Monthly जो most common regime है, standard जो use होता है. There are exceptions. Some large scale exporter इवन स्पेशल केसेस में एडवांस बेसिस पे भी वो एग्री कर लेते हैं एफपीआर के साथ. तो वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक केसेस हैं जिसको हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था. लेकिन जनरली जो मोस्ट कॉमन मेथड है मंथली बेसिस, उसमें आपने 15 तक जमा करानी है एंड देन यू हैव अ फ्यू फर्दर डेज टू सबमिट योर टैक्स लायबिलिटी. मंथली बेसिस पे नॉर्मली जब आप रिटर्न जमा करा रहे हैं उसके साथ आप अपनी टैक्स लायबिलिटी जमा करा देते हैं. सीपीआर आपका साथ उसकी कॉपी लगती है कि जी ये जो लायबिलिटी हमारी बनती थी हमने चालान के मुताबिक ये जमा करा दी है बैंक में. आई होप दिस क्लैरिफाइज. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन आप सेशन 1 वाइमियो पे चेक कर लो. फिर भी कंफ्यूजन रहे, just shoot me an email. Yeah, at the end of the day, if we have any time left, come with the specific query. Next question is from Saqib Rizwan. He's asking if the sales tax person doesn't submit their return in previous year and in the current year he submitted only for the current period, will he be liable for penalty of previous years? Yes. However, अगर आप पेनल्टी नोटिस मिलने से पहले खुद सबमिट कर दो तो नॉर्मली फिर वो आपको परसों नहीं करेगा. हाँ, अगर आपने इस साल के सबमिट कर रहे हो, पिछले साल के छोड़े हुए हैं बट उस साल के लिए रजिस्टर्ड थे, it is very likely you will come under the purview of the system and get a notice issue. So अगर आपने ये किया हुआ है और अभी तक नोटिस नहीं आया, congrats, you've got a lucky break. उसको फाइल कर दें before you get a notice and the penalty. Aga Mustafa is asking, can a penalty be waived by tax authorities if an individual can prove that he was unable to submit a return because he was hospitalized or he was outside the country? The commissioner has the power. But even if you prove that you were hospitalized or outside the country, normally the question, you're running a business or a one-man show. Why didn't whoever was taking care of your account function did that?
Having said that, practically उसमें issues होते हैं, but theoretically अगर आप prove कर दें और अगर commissioner convince हो जाए, yes, they have the power. Next question is from Muhammad Naveed Iqbal. He's asking, couldn't get material nature. Please elaborate. Material, same concept जो आपने ACCA में पढ़ा है, something which has a substantial impact. Next question is from Fazal Muhammad. He's asking, can we adjust withholding tax by customer against sales tax? Yeah. Next is from Muhammad Yasir Ruhani. He's asking, what if a company is facing technical difficulties like challan is not being made, and if the due day passes, then will there be penalty in such case? मैंने अभी आपको बताया, हमने सेशन 1 में कवर किया था कि 1 महीने का तो आपको अलाउ हो जाता है ना, तो अगर आपको टेक्निकल डिफिकल्टीज है वो 1 महीने में रिजॉल्व हो जाएगी, आप एफपीआर को पराल को कांटेक्ट करोगे या पीआरए को करोगे या एसआरपी को करोगे, तो मुसलसल 2 महीने तो नहीं होना चाहिए ना. Next is from Shamal Hassan. He's asking, most small retailers, traders usually not issue invoices and mostly we give payments to them. What is the procedure of getting these things in order? देखें, अगर आप सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड हैं, you are required to issue a sales tax invoice. You are required to charge sales tax on taxable supplies. अगर आप नहीं करोगे, that's a cost you are bearing. ठीक है. Unregistered person की transaction अगर आप show नहीं करोगे, yes, they have capacity issues. अभी उनके पास इस तरह के सिस्टम नहीं कि 100% सबको डिटेक्ट कर सकें, लेकिन that is something that would be illegal. So obviously, business maybe wouldn't recommend you that you actually conduct a practice which is illegal. Next question is from Muhammad Atif Khedi. He's asking, Rule 8 of Chapter 2 of Sales Tax Rules indicates due date of filing return as 18th of the month, but you are mentioning it as 15th of the month. Is there any provision which I'm missing? Yes. What was the name? Atif Khedi. Sorry, Atif sir, we covered that in the first session. Inshallah, we'll be covering the rules in detail. वो भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल से. But जो most common method है, उसमें हम 15 तक करते हैं, 18th का भी अलाउ होता है, quarterly basis का भी अलाउ होता है. All these provisions are there. Next is from Sarmad Munir. He's asking, is it necessary for sole proprietor to register for sales tax, as he is dealing with sales tax registered persons? Clarify. Look, sales tax registration has nothing to do with dealing with sales tax registration, registered person or not. It has to do with making taxable supplies. If you are making taxable supplies and you are not a cottage industry, you should register. अच्छा, practically लोग क्यों कहते हैं कि आप sales tax registered person से deal कर रहे हो तो register हो जाओ? Because अगर आप सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन को कुछ सप्लाई कर रहे हो, तो इट इज वेरी लाइकली कि आप उसको ऑलमोस्ट वही चीज सप्लाई कर रहे हो या वन स्टेप बिफोर की आप कोई रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हो जो वो प्रोसेस कर रहा है या आगे वो प्रोवाइड कर रहा है, रॉ मटेरियल या कोई सर्विस. तो अगर वो रजिस्टर्ड हुआ है तो इसका मतलब वो टैक्सेबल सप्लाई थी. इट इज वेरी लाइकली कि आपकी भी सप्लाई टैक्सेबल हो. However, it is not almost always the case. There may be exception कि उनकी सप्लाई टैक्सेबल है, आपकी नहीं. आपको इंसेंटिव होगा कि आप अगर सेल्स टैक्स ऑलरेडी आपको वो चार्ज कर रहे हैं, आप रजिस्टर हो जाओ तो आपको रिफंड मिलने लगेंगे अगर आपके ड्यू हैं, और ऑन रिकॉर्ड आएगा आपका सेल्स टैक्स जो आप पे कर रहे हो. लेकिन मैंडेटरी कब होता है? जब आप टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं. सो रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आप सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन से डील कर रहे हो कि नहीं, रिक्वायरमेंट ये है कि आप टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हो कि नहीं. और टैक्सेबल सप्लाईज हमने डिटेल से अपने फर्स्ट सेशन में कवर की थी लास्ट सैटरडे. वाइमियो पे रिकॉर्डिंग मौजूद है, यू कैन ऑलवेज चेक दैट. Next is from Waleed Mujahid. He's asking if the check is deposited on 15 and it will be cleared on 18, so the penalty for 3 days will be imposed. आपको as long as you have the receipt, the CPR, and you can submit that with the return, you should be fine. Next is from Mansoor Arif. He's asking, as you told that in case of nil return and no loss to national treasure, then we may have no penalty. Please tell, will this also apply if there is carry forward of tax instead of payments, whereas transactions are involved instead of nil returns? Okay. For any period where there is a nil return, for that specific period,
This thing is practically the case. It can be a case, but it won't be easy. अगर आप इसके लिए जाओगे, believe me, your commissioner's office will fight you tooth and nail to get the penalty out of you. And it is very likely that you might have to go to some appellate forum, but because there are decisions on this, legal इसकी tracking मौजूद है, precedents मौजूद है, you can get it done as long as that particular period which is in question was met or did not involve any tax liability. Next question is from Mohammed Tasif. He's asking, is it compulsory to prepare and maintain the sales supplies register and annexure C, and likewise purchase register? Not just that, all the records. It is mandatory. अभी आपने offences में cover भी किया, अगर आप maintain नहीं करते, you can induce serious penalties. Next is from Muhammad Omer Zaheer. He's asking, can we submit nil returns for 11 months and then all transactions will be disclosed in last month? No. You have to disclose the transaction in the period in which it is incurred. Omer Zaheer Meer is asking, I didn't know that I was a sales tax payer for the past 5 months. Can I follow quarterly regime? Zaheer, it would depend. What is your business? Are you a manufacturer? Are you an exporter? Are you a wholesaler? So that would depend on your specific case. Bear with me. Once we cover the relevant sessions, you'll be more clarified. You'll be more clear on the subject. However, if you have still any doubts and you want to discuss your specific scenario, shoot me an email. Zulfan Heather is asking, in case a normal audit has been conducted by FTR and there was no discrepancy identified and subsequently major discrepancies were identified in special audit, will it supersede the previous audit report? Yes. In fact, if the FTR has constituted a special audit team after your audit was done, that is most likely to be because they have some objection or they have some reservations about that. Next is from Yasin Ali Badruddin. He's asking, what happens if I fail to pay the tax which I have charged to another company in fiscal year 2015 but fail to pay to tax authorities? Well, we have just covered if you fail to pay the tax, what would be the penal clause, and if you fail to disclose, we'll be covering that now in a bit. Further, if I want to pay that tax in current fiscal year, what are the penalties on that, and will the other company be able to claim it back from tax authorities if they have showed the transaction in fiscal year 2015? Once you pay that, then they'll be able to claim it back. The penalties, we have covered some and we are about to cover the others. Next. Mariam Marshad is saying, knowledgeable and interesting session. Thank you, Mariam. Next question is from Zaheer Chaudhary. Okay, this has been answered already. Next is from Tosif Ahmed. He's asking, according to section 153, we pay tax on behalf of our supplier. Is it our expense or asset, or is it claimable? Section 153, I think he is referring to income tax ordinance. Please elaborate. Next is from Zaheer Chaudhary. He's typing the same question multiple times. Okay. All done? Yeah. Wow, great. Okay, let's continue. Offense number 14. We have just covered if you violate the embargo placed on removal of goods, you'll be charged the penalty or liable to prosecution and additional fine. Any person who obstructs the authorized officer in the performance of his official duties will pay a penalty of 25,000 rupees or 100% of the tax amount involved with in the manner prescribed under section 73 of the Act. यह भी जो आपने सवाल पूछा था. You shall pay a penalty of 5,000 rupees or 3% of the amount of tax involved, whichever is higher, if you fail to fulfill any of the conditional limitations or restrictions prescribed in a notification issued under any of the provisions of the Act. You'll pay a liability of 5,000 rupees or 3% of the amount of tax involved, whichever is higher. And where an officer authorized to act under this Act acts or omits to or attempts to act or omit in a manner causing loss to the sales tax revenue or otherwise abets or connives in any such act, such officer shall be liable upon conviction by special judge to imprisonment term up to 3 years and a fine which may extend equal to the amount of tax involved or with both. अभी तक फोकस टैक्स पेयर पे था. 18 का फोकस है एफपीआर के अपने ऑफिशियल पे कि अगर वो टैक्स पेयर के साथ कॉनाइव करके नेशनल एक्सचेकर को लॉस पहुंचाता है इन एनी मैनर, तो
up to 3-year jail term है, plus there is a fine equal to the amount of tax involved, or there can be even both. Any person who contravenes any of the provisions of this act for which no penalty has specifically been mentioned, this is a cover-all. अगर आप कहीं और फॉल नहीं कर रहे तो फिर आप इधर फॉल कर रहे हैं 5,000 rupees की penalty और 3% of tax amount involved, whichever is higher. 20 has been deleted. 21, where any person repeats an offence for which a penalty is provided under this act. अगर दूसरी दफा आप कोई offence करेंगे तो आप twice the amount of penalty pay करेंगे. Any person who knowingly and without lawful authority gains access to or attempts to gain access to the computerized system of FPR or unauthorizedly uses or discloses or publishes or otherwise disseminates information obtained from the computerized system or falsifies the records from or information stored in the computerized system, or knowingly or dishonestly damages or impairs the computerized systems or the information stored therein, or knowingly or dishonestly damages or impairs any duplicate tape, etc., etc., etc. काफी लंबी है ये प्रोविजन, मैं आसान लफ्जों में आपको बता देता हूँ. किसी भी तरह से अनऑथोराइज वे में आप किसी भी कंप्यूटराइज सिस्टम को, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो या टेप में हो या उसके रिकॉर्डेड डाटा को एक्सेस करें, चेंज करें, डैमेज करें, रिप्लेस करें, फैब्रिकेट करें, किसी भी तरह से इवन एक्सेस भी हासिल करें, you'll be liable to pay a penalty of 25,000 rupees या 100% of tax amount is involved. जिस तरह पेनल्टीज का पैटर्न थ्रू हो रहा है या भी है, दोनों में से जो हायर है वो आपके इम्पोज होगा. प्लस स्पेशल जज अगर आपको कॉन्विक्ट कर दे तो इम्प्रिजनमेंट टर्म अप टू अ ईयर हो सकती है विद एन एडिशनल पॉसिबल फाइन ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू द टैक्स लॉस इन्वॉल्व. So that was that. We covered almost the 24 offences and their punishments. This brings us to section 34. अभी तक हमने ये सारी बातें कर ली जी, ठीक है, क्या रेलिवेंट अथॉरिटीज ड्राइव ये कर रहे हैं, ऑफिसर्स क्या इनके स्ट्रक्चर हैं, पीआर के क्या हायरार्की है, किन ऑफेंसेस की क्या पनिशमेंट्स होती हैं. Now we'll be dwelling more into the default surcharge. Notwithstanding the provisions of section 11, if a registered person does not pay the tax due or any part therefor, whether willfully, intentionally or otherwise, in time or in a manner specified under this act, rules or notification thereon, etc., etc., or incorrectly applies the rate of 0%. This is also important. They shall, in addition to the tax due, pay default surcharge at the rate mentioned below. The person liable to pay any amount of tax or charge or the amount of refund erroneously made shall pay default surcharge at the rate of KIBOR plus 3% of the amount of tax involved on the or the amount of refund made erroneously, or in case the default is on account of tax fraud, the person who has committed tax fraud shall pay an increased default surcharge at the rate of 2% per month. अगर unintentionally आपने किए काइबर प्लस 3% एनुअली, इंटेंशनली किए 2% पर मंथ, जो कि कंपाउंडिंग अगर आप छोड़ दें तो एनुअली 24% बन जाता है सरचार्ज आपने पे करना है फॉर टैक्स अवॉइडेंस. यहाँ पे आपका सवाल ये आना चाहिए कि उमर साहब, अभी तो हमने इतनी लंबी लिस्ट कवर की है ऑफेंसेस की, इतनी डिटेल से सारी पेनल्टीज कवर हुई है, तो ये अलग से डिफॉल्ट सरचार्ज की क्या जरूरत है? Remember one thing कि this act has evolved over time. There might be areas जहां पे थोड़ा बहुत ओवरलैप है, यहाँ पे कवर हो रहा है आपकी जीरो रेटिंग की मिस एप्लीकेशन वगैरह स्पेसिफिकली. हाँ, जहां पे ये ओवरलैप कर रहा है किसी प्रोविजन के साथ, वहां पे ये डिपेंड करेगा कि आपको जो नोटिस इशू हुआ है वो सेक्शन 33 के तहत हुआ है या 34 के तहत हुआ है. जिस रेलिवेंट सेक्शन के तहत इशू हुआ है उसकी प्रोविजन और पेनल्टीज आपके ऊपर अप्लाई होंगी. जस्ट अ फुटनोट टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट. For the purpose of calculation of the default surcharge, in case of inadmissible input tax credit or refund, the period of default shall be reckoned. Okay, कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है? जिस डेट को आपने मिसकैलकुलेशन की थी या डेट ऑफ एडजस्टमेंट थी
उस डेट से आप कैलकुलेट करेंगे, या इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, पहले हमने कब बात की, इनएडमिसिबल इनपुट क्रेडिट टैक्स या रिफंड आपने गलत क्लेम किया है, लेकिन अगर आपने नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स की है, चाहे इन पार्ट या फुली आपने नॉन पे की है, पीरियड ऑफ डिफॉल्ट जो है वो ड्यू डेट के अगले महीने की 16 से शुरू होगा, और जिस डेट को आपने टैक्स पे किया है उससे एक दिन पहले तक। यानी लेट्स से आपने 15 को टैक्स पे करना था, आपने 15 फरवरी को नहीं पे किया, तो 16 मार्च से लेकर आप पे करते हैं 20 जून को, तो 16 मार्च से लेकर 19 जून तक का पीरियड जो है, इस पीरियड के ऊपर डिफॉल्ट सरचार्ज लगेगा। आई होप दैट क्लैरिफाइज। And just a footnote, for the purpose of this section, tax does not involve the amount of penalty. I know sometimes Sales Tax Act and all these legislations can become cumbersome, but believe me, in the long term this would benefit you a lot. So just remember the purpose कि आप इस सेशन में क्यों बैठे हैं। आपके कैरियर में इंप्रूवमेंट है, आप लोकल टैक्सेशन नॉलेज लेना चाहते हैं, maybe you are planning to take some local taxation paper, whatever your aim is, remember that, and inshallah you'll get through this. On my part, I'll try to make it as simple as possible and as interesting as possible for you. So next up, ठीक है जी, इतनी सारी पेनल्टीज और डिफॉल्ट से चार्जेस हो गए हैं, कोई वे है कि हमें उससे एग्जाम्प्ट हो जाए। एक क्वेश्चन भी आया था, क्या ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी है एफपीआर के, वो हमें एग्जाम्प्ट करते हैं अगर हम बीमार थे, अगर हम प्रूफ करते हैं हम बीमार थे। वैसे दैट इज अ वेरी नॉटी क्वेश्चन। हमें पता है पाकिस्तान में कितनी मुश्किलों से डॉक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, जब तक हम जेन्युइनली बीमार ना हो हम प्रूफ तो कर ही नहीं सकते। सो अगर हम इस तरह की कोई चीज प्रूव कर दें तो क्या हम एग्जाम्प्ट हो सकते हैं, या उसको विड्रॉ किया जा सकता है जो हम पे पेनल्टी इंपोज हुई हो या डिफॉल्ट सरचार्ज। Let's see, let's find out. The federal government may, by notification in the official gazette or the board by a special order published in gazette for reasons to be recorded in writing, exempt any person or class of persons from payment of the whole or part of the penalty and default surcharge imposed under section 33 and 34 जो हमने अभी कवर किए हैं, subject to such condition or limitation as may be specified therein. आसान जुबान में जी, फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री या स्पेसिफिक टैक्स पेयर को कोई भी कंडीशन लेआउट करके या लेआउट किए बगैर किसी भी स्पेसिफिक पेनल्टी से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सेक्शन 37, पावर टू समन पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स इन इंक्वायरीज अंडर द एक्ट। आपने सेल्स टैक्स एक्ट की इंक्वायरी करनी है, अगर आप किसी बंदे को बुला ही नहीं सकते, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवा ही नहीं सकते, तो आप कैसे इंक्वायरी करेंगे? हवा में करेंगे। इंक्वायरी आप कर कभी रहे हैं जब आपको डाउट है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, मे बी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, मे बी देयर इज समथिंग फिशी अबाउट इट, मे बी कोई क्रॉस डॉक्यूमेंटेशन आई है बैंकिंग ट्रांजैक्शन में, आपने देखा है इकोनॉमिक एक्टिविटी रिपोर्ट, उसको एफपीआर कहता है, उसमें कोई डिफरेंस है कंपेयर टू व्हाट द टैक्स पेयर हैज रिपोर्टेड, मे बी डिफरेंट टैक्स पेयर में उनके रेफरेंस से, उनके सेल्स टैक्स के नंबर के हिसाब से जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की है वो उससे ज्यादा या डिफरेंट है जो उन्होंने रिपोर्ट की है। कुड बी एनी ऑफ द मेनी सिनेरियोज। तो अब उसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे अगर आपके पास पावर्स ही नहीं है कि आप कॉलिंग कर सकें any person to give testimony or call in the records? Hence section 37 giving the relevant powers. Any officer of the Inland Revenue shall have the power to summon any person whose attendance he considers necessary. Now again see the subjective nature, objectively define नहीं किया कि कौन सा बंदा होगा जो टेस्टमनी दे सकता है। ऑफिसर को पावर दे दी है जिसको भी वो समझता है कि उसकी प्रोविजन, उसकी प्रेजेंस जो है वो नेसेसरी है फॉर गिविंग द relevant evidence. The officer is authorized to call them either to tender evidence or to produce documents or any other things in any inquiry which such officer is making for any of the purposes of this act. Any person summoned under this subsection 1 we have just covered shall be bound to attend either in person or by an authorized agent as the officer may direct. Normally जो notice आते हैं उसमें mention होता है कि please attend the hearing either in person or by authorized agent. तो अगर ऑथोराइज एजेंट का मेंशन है तो आप थ्रू ऑथोराइज एजेंट कर सकते हैं। एनीबॉडी कैन बी ऑथोराइज एजेंट, आपका रिलेटिव भी हो सकता है,
आपका लॉयर भी हो सकता है, अकाउंटेंट भी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट इट्स नॉर्मली अ गुड आइडिया टू सेंड अ प्रोफेशनल हु हैज अ गुड अंडरस्टैंडिंग जो उनसे प्रॉपर्ली डील कर सके, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हु इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन अ कोर्ट अंडर। अच्छा, अब यहाँ से इंटरेस्टिंग एरिया शुरू हो गया है। आप देखेंगे फ्रॉम हेंस ऑनवर्ड आपको लिंकेजेस नजर आएंगे दूसरे लॉ से, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से, सिविल जो हमारे प्रोसीजर है पाकिस्तान के उनसे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के। अब सेल्स टैक्स एक्ट जो है वो टाई अप होना शुरू हो जाएगा दूसरे लॉस के तहत। प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हु इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन अ कोर्ट अंडर सेक्शन 132 एंड 133 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो सिविल प्रोसीजर कोड के तहत बंदा एग्जेम्प्ट है वो इनकम सेल्स टैक्स एक्ट के तहत भी एग्जेम्प्ट है फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। एनी इंक्वायरी बिफोर अ ऑफिसर, उसको उसी तरह जुडिशियल प्रोसीडिंग समझा जाएगा जिस तरह पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 193 और सेक्शन 228 के तहत होती है, यानी बेसिकली इसको पाकिस्तान पीनल कोड की लीगल सैंक्टिटी दे दी गई है। 37A पावर टू अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट, दिस इज एन इंटरेस्टिंग सेक्शन। पहले तो स्पेशल जज अपॉइंट हो रहे थे और पीनल कोड्स की सैंक्टिटी दी जा रही थी। अब यहाँ पे इफेक्टिवली दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो पावर्स दी गई हैं और जो प्रैक्टिकली कैपेसिटीज है उनमें काफी डिफरेंस है। यहाँ पे इफेक्टिवली रेलिवेंट ऑफिसर्स को पुलिस की पावर दी गई है इन सर्टेन केसेस। लेट्स फाइंड आउट हाउ। 37A पावर टू अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट, एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू not below the rank of assistant commissioner or any other officer of equal rank authorized by the board in this behalf, who on the basis of material evidence, word is evidence, has reason to believe that any person has committed a tax fraud or any offense warranting prosecution under this act। वो जो हमने 24 offense पढ़े हैं उनमें से कोई ऐसा offense जिसके तहत प्रोसिक्यूशन जरूरी है एंड वो लाइबल है प्रोसिक्यूशन को इन देयर ओपिनियन, और दे हैव अ मटेरियल एविडेंस कि उन्होंने टैक्स फ्रॉड कमिट किया है, मे कॉज अरेस्ट ऑफ सच पर्सन। तो ये हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं उस टैक्स पेयर को जाके अरेस्ट कर सकते हैं। ऑल अरेस्ट मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट प्रोविजंस of the Code of Criminal Procedure 1898। प्रैक्टिकली ऐसी अरेस्ट अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में होनी हो तो उसमें पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं ये, ऑब्वियसली फॉर कैपेसिटी इश्यूज। Notwithstanding anything contained in subsection 1 to subsection 3 or any other provision of this act where a person has committed a tax fraud or an offense warranting prosecution under this act, the commissioner may either before or after the institution of any proceedings for recovery of tax compound the offense if such person pays the amount of tax along with the default surcharge or penalty as is determined। So वो अगर आपको नोटिस आए जी आपको अरेस्ट करने लगे, आप भागे भागे जाते हैं कमिश्नर साहब के पास, जी सॉरी गलती हो गई मेरे से, आप बताइए क्या करना है, मैं पेनल्टी भी पे करता हूँ टैक्स भी पे करता हूँ, तो कमिश्नर आपका जो ऑफेंस है उसको कंपाउंड कर सकता है और प्रैक्टिकली आपकी अरेस्ट की नौबत नहीं आएगी। Where the person suspected of tax fraud or any offense warranting prosecution under this act is a company। Now this is an interesting concept। Normally आपने क्या पढ़े हैं, कानून में कंपनी डायरेक्टर अलग अलग हैं, unless आपने पर्सनल गारंटी दी हुई है, आप पर्सनली लाइबल नहीं फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द कंपनी। ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है टैक्स में। अगर कंपनी ने टैक्स फ्रॉड किया या टैक्स अवॉइडेंस है या टैक्स पेनल्टी है और आप उसकी पॉलिसीज पे असरअंदाज हो सकते थे या हुए हैं, तो आप अगर डायरेक्टर हैं आप भी लाइबल हैं। और आप लाइबल हैं इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी एब्सॉर्ब हो गई, आपको भी पकड़ेंगे कंपनी को भी पकड़ेंगे। सो every director or officer of that company whom the authorized officer has reason to believe is personally responsible for actions of the company contributing to the tax fraud any offense warranting prosecution under this act shall be liable to the arrest, provided that any arrest under the subsections shall not absolve the company from the liabilities of payment of tax, default surcharge and penalties imposed under this act। So 37B procedure to be followed on arrest of a person, basically standard procedure है, हम इसको पढ़ लेते हैं डिटेल से।
प्रोसीजर क्या है कि जब आपने बंदे को अरेस्ट करना है तो 24 घंटे के अंदर आपने उसे स्पेशल जज के सामने प्रेजेंट करना है। अगर स्पेशल जज नहीं है तो 24 घंटे के अंदर जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास करना है। मजिस्ट्रेट आमतौर पर रेफर कर देता है स्पेशल जज को। आगे डिटेल से ये भी मेंशन है कि अगर आप उसका वारंट लेना चाहें, उसको आप कस्टडी में रखना चाहें तो उसका प्रोसीजर भी है। एंड लेट्स क्विकली गो थ्रू क्या प्रोसीजर्स है 37B के तहत। When a sales tax officer authorized in this behalf arrests a person under section 37A, he shall immediately intimate the fact of the arrest of that person to the special judge, who may direct such officer to produce the person and consider such time and place and on such date as the special judge considers expedient, and such officer shall act accordingly. फौरन आप स्पेशल जज को बताएंगे, जिस जगह वक्त और तारीख को वो कहेगा उस बंदे को प्रोड्यूस करेंगे। Notwithstanding anything contained in subsection 1, any person arrested under this act shall be produced before the special judge, or if there is no special judge, within a reasonable distance to the nearest judicial magistrate within 24 hours of such arrest. अच्छा, ये 24 hours टेक्निकल चीज है कि जिसमें टाइम ऑफ ट्रेवल शामिल नहीं है। 1 और 2 को इकट्ठा आप पढ़ें, इसका मतलब क्या है 24 घंटे में आपने प्रोड्यूस करना है। हाँ, अगर जज कहे जी अभी बहुत प्रेशर है उसके पास 2 दिन बाद प्रोड्यूस करें तो दैट्स फाइन, फिर आप 2 दिन बाद प्रोड्यूस कर देंगे। When any person is produced under subsection 2 before the special judge, he may, on the request of such person, after pursuing the record, if any, and after giving the prosecution an opportunity of being heard, admit him on bail on his executing a bond with or without sureties, or refuse to admit the bail and direct his detention at such place as he deem fit. सिंपल सी चीज है, स्पेशल जज चाहे तो उसकी बेल ले ले, चाहे तो बेल रिजेक्ट कर दे। बेल विद और विदाउट श्योरिटीज हो सकती है। स्पेशल जज जो है वो बेल को लेटर ऑन कैंसिल भी कर सकता है। When the person is produced under subsection 2 before a judicial magistrate, such magistrate may, after authorizing his detention in such custody at such place and for such period as he considers necessary or proper for facilitating his earlier production before the special judge, direct his production before the special judge on a date and time to be fixed by him, or direct such person to be forthwith taken to have produced before the special judge and shall be so taken to. अच्छा, ये जो टर्म ये लैंग्वेज है इससे घबराना नहीं, ये स्टैंडर्ड जुडिशियल लैंग्वेज होती है। सच प्लेस, सच टाइम, कंसिडर नेसेसरी, बेसिकली इसको ओपन रखा गया है जज की डिस्क्रिप्शन पे कि जी वो जिस जगह पे चाहे कह सकता है जी, चाहे इसको कोर्ट लगभग जेल ले जाओ, चाहे इसको इनकम टैक्स के ऑफिस में बंद कर दो। मतलब ये जज की अपनी डिस्क्रिप्शन है जिस वक्त तक के लिए वो चाहे, तो इसको एक लीगल लैंग्वेज में यहां कवर किया गया है। ओके, अगर जो ऑफिसर जिसने अरेस्ट किया उसको और टाइम चाहिए अपनी इंक्वायरीज कंडक्ट करने के लिए, तो स्पेशल जज या मजिस्ट्रेट को इन राइटिंग अपने रीजंस के साथ रिक्वेस्ट करेगा और उनके पास ये पावर है कि वो नेसेसरी ऑर्डर कर दे। ये पीरियड ऑफ कस्टडी जो है 14 दिन से ज्यादा नहीं होगा। When any person is arrested under this act, the sales tax officer will record the fact of arrest and other relevant particulars in the register specified in subsection 10, जिसको आगे हम next page पे हम इंशाल्लाह कवर करने लगे हैं, and shall immediately proceed to inquire into the charge against such person and complete the inquiry within 24 hours. क्योंकि standard 24 hours में उसको produce करना है before special judge या magistrate, as we have covered just a minute ago, excluding the time necessary for journey after producing such person before special judge or judicial magistrate, further detention की वो request कर सकते हैं। While holding this inquiry, उसके पास वही पावर है और वो उसी तरीके से करेगा जैसे एक SHO ऑफिसर इन चार्ज कहते हैं पुलिस स्टेशन का, स्टेशन हाउस ऑफिसर करता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं, जो प्रैक्टिकली एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि पुलिस मार पिटाई करती है, इसका मतलब ये नहीं कि मार पिटाई करनी है, सिर्फ वो लीगल प्रोटेक्शन दी गई है कि आप उससे उसी तरह इंक्वायरीज कर सकते हैं, उसी तरह आपने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बनानी है। रेलिवेंट ऑफिशियल ने जो मिनिमम आपके असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के होंगे कि क्या ऑफेंस इन्होंने कमिट किया।
If sales tax officer after holding an inquiry as aforesaid is of the opinion कि कोई sufficient evidence या reasonable ground नहीं है तो वो रिलीज कर सकता है बॉन्ड के ऊपर विदाउट सिक्योरिटीज खुद भी और स्पेशल जज या मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। स्पेशल जज या मजिस्ट्रेट जिसको रिपोर्ट सबमिट की गई है वो आफ्टर इंक्वायरी या प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद या एग्री कर लेगा या डिसएग्री कर लेगा या केस को डिस्चार्ज कर देगा या फर्दर प्रोसीड करके अपना ऑर्डर पास करेगा। Sales tax officer empowered to hold inquiry under this section will maintain a register called register of arrest and detention जिसका एक prescribed format है उसमें सारी डिटेल नेम पर्टिकुलर सबके ऐड किए जाएंगे along with time and date of arrest, detail of information received, detail of things goods और document जो उस कस्टडी से रिकवर किए गए और नेम ऑफ द विटनेसेस या एक्सप्लेनेशन या दूसरा जो भी एविडेंस उसके पास है एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्टर होगा जिसकी बेसिस पे वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द इंक्वायरी सेल्स टैक्स ऑफिसर शेल एज अर्ली एज पॉसिबल सबमिट टू स्पेशल जज अ कंप्लेंट इन द सेम फॉर्म एंड मैनर इन विच द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सबमिट्स अ report before a court. A magistrate of first class may record any statement or confession during the inquiry in accordance with the provision of 164 of the Code of Criminal Procedure 1898 without prejudice to the foregoing provision of the section. Federal government may by notification in official gazette authorize any official working under the board to exercise the power and perform the functions of a sales tax officer under this section subject to such condition if they deem fit. पहले उन्होंने कह दिया जी असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे के लेवल का कोई नहीं करेगा लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बोर्ड के पास पावर है वो किसी को भी ऑथराइज कर सकता है ये करने के लिए। ओके मुझे पता है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एरिया था जो हमने कवर किया है एंड यू वुड हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। सो बिफोर वी प्रोसीड विल हैव द क्वेश्चंस। सो मिस्टर अहमद क्वेश्चंस या आपका तो नाम ही रख देना मिस्टर क्वेश्चंस। Okay, so first question is from Mohammed Saqib Ali Rashidi. He's asking for how many previous years an audit or special audit could be conducted. टाइम बार का जो कॉन्सेप्ट है ना सेल्स टैक्स में वो 5 ईयर में जाता है जिसको इवन देन सेल्स टैक्स ऑफिशियल सम टाइम कॉन्टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट Mohammed Naveed Iqbal is asking, can a blacklisted or suspended person issue a sales tax invoice? No, when you are blacklisted or suspended you are not sales tax registered at that time. Simple. Another question from Saqib Ali Rashidi is asking, as per section 34, how could it be identified whether the error or offense has done intentionally or unintentionally? The relevant official will decide. So this is one of the areas where the subjectivity is somewhat really troublesome. However, the good thing is they have given some honors to the evidence that they can't just do everything subjectively. They have to point out to the evidence on the basis of this which they have concluded it was done intentionally. Mohammed Asghar has commented, thank you ACCA for arranging such an informative webinar. Welcome. Next is from Mohammed Naveed Iqbal. Surcharge amount will be collected from the due date of filing of return or after 1 month of due date. Surcharge amount would be collected whenever you are given the notice and the date specified therein. And if you are paying a tax liability which is due, it is very good and ideal to pay the liability along with it if you have already accepted it and not planning to contest it. Next is from Salim Sadruddin. He's asking, please explain input and output sales tax of retailer. Salim sir, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ये मैंने पहले सेशन में भी समझाया था। लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। आप ये समझ लेंगे ना गेट द बेसिक्स राइट तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिटेलर होलसेलर एनीवेयर आपका ये एक बिजनेस है, ठीक है। आप जो परचेज कर रहे हैं वो आपके बिजनेस की क्या है इनपुट, जो आप सेल कर रहे हैं वो क्या है आउटपुट। जो सेल्स टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है परचेजेस पे वो आपके बिजनेस के लिए क्या है इनपुट टैक्स है, आप वो पे कर रहे हैं। और जो आप अपनी सेल्स पे अपने कस्टमर से ले रहे हैं गवर्नमेंट को पे करने के लिए आपकी सेल्स क्या है आउटपुट, तो जो उनके ऊपर है वो क्या है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स आप सेल्स पे ले रहे हैं तो आप किससे ले रहे हैं कस्टमर से ले रहे हैं। कस्टमर से ले रहे हैं तो किसको देंगे गवर्नमेंट को। इनपुट किस पे है परचेजेस पे है, परचेजेस पे आप क्या करते हैं पे करते हैं।
पे कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं? सप्लायर को, जिसने गवर्नमेंट को पे करना है। सो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट आप जहन में रख लें, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। नेक्स्ट Next is from Ihtishamul Hassan. He's asking what is the difference between special order and statutory regulatory order? We have already covered this. Special order, statutory regulatory order is also a form of that. FPR की website पे आप देख सकते हैं, periodically time to time to address different issues. FPR under the authority of relevant sections issues them. Next. Can Commissioner issue SRO for waiving the default surcharge or penalty to the taxpayer? Specific taxpayer के केस में कमिश्नर नहीं करता, ये डायरेक्ट FPR की तरफ से आता है, not the commissioner. Next the is board itself. Next is from Harun Salim. He's asking how many participants are attending the webinar today. So Harun, what are you trying to do here? जी अहमद. So we have around 205 to 210 के दरमियान में fluctuate हो रही है. We have over 200, almost 210 participants logged in right now. And since it's a Saturday, normally the number increases after lunch break. Next is from Saqib Rizwan. He's asking what will be the penalty for the director or the officer of that company. Depends on the offense. दो दर्जन offense आपने पढ़े, कौन सा offense commit हुआ है इस पे depend करेगा. Relevant. जी. Saqib Ali Rashidi is asking, does FPR have any place like police lockup to retain the arrested person before produce him before the judge? Rashidi साहब, why are you planning to go down that route here? Simply आप अपनी रिटर्न फाइल करें टाइम. Anyway, मैंने आपको बताया कि normally पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता है if it comes to this. Next is from Hashim Zaheer. He's asking of how many previous years taxpayer need to hold the record. Record retention जो है वो कही जाती है up to 5 years. In some cases, very specific cases, 6 years. Next is from Mirza Beg. He's asking if client deducted 100% sales tax and deposited only 20% as per rule, then will the company be liable for 80% or the client? Unfortunately, yes. First, they'll go after the client. If they can't get hold of the client, they'll get after you. I know it's hard, but the good thing is there is a new provision we covered in the first session on sales tax, which somewhat addresses this particular issue in some specific situations. Next. Next is from Faisal Manzoor. He's asking, can input and output tax netted off? They are netted off. When you submit the return, उसका आप pro forma देखो, इनको net off करके आपकी net liability या refund calculate होता है. Shiraz Khan is saying very informative, no questions yet. Thank you very much, Shiraz. And if you have any questions, feel free to ask. Next is from Muhammad Rizwan Safdar. He is asking regarding delegation of powers by the board and the commissioner, assistant and deputy commissioners can delegate their own assigned powers or cannot delegate even their powers. Okay, very good question. जो तो पावर उनको डेलीगेट हुई है हायर ऑफिसर की, वो स्पेसिफिकली मेंशन है, वो डेलीगेट नहीं कर सकते. जो उनकी अपनी पावर है ना, पावर वो डेलीगेट नहीं कर सकते, अपनी टीम से काम ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक रिपोर्ट बनवानी है, दे लास्ट इंस्पेक्टर कंडक्ट रिपोर्ट गिव इट टू मी, लेकिन वो इशू उनकी अथॉरिटी पे हो रही है. अगर उसमें कल को कोई मसला आता है, जैसे इसमें प्रोविजन है, अगर प्रूव हो जाता है कि जी वो टैक्स पेयर से कॉनाइवेंस में गलत किया गया है, तो द बर्डन, द ऑनेस्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल स्टिल फॉल ऑन देम. वो ये क्या कि खुद को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे, ये तो सिर्फ इंस्पेक्टर ने किया, आपने साइन किया, आपकी अथॉरिटी पे हुआ है. You should have taken care to ensure everything was in order. Next is from Ihtishamul Hassan. Is there any place in the return which can automatically calculate penalty when we file return after due date? Not as per se right now, and inshallah we'll do a session on sales tax return later on. तो वहाँ पे हम आपको डिटेल से रिटर्न भी दिखाएंगे. एट द मोमेंट ये होता है कि जब आप मल्टीपल पीरियड की वायलेशन करते हैं तो आपको एक नोटिस आता है और उस नोटिस में अमाउंट मेंशन होती है. Next is from Muhammad Zishan Afzal. He's asking how can we update in sales tax on routine basis and give basic hint to update with our SRO. I think he means to ask Ahmed how can we remain updated with sales tax legislation and SROs. Well, the best way to do is stay connected with the relevant tax bodies, or have a very good tax consultant like me. और इंशाल्लाह द वे वी आर प्लानिंग अल्टीमेटली के ACCA की जो टैक्सेशन कमेटी है, इसको हम रिफॉर्म कर रहे हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से हमारी एम है
कि जो periodically ये SROs वगैरह आ रहे हो या आप सब में ACCA की तरफ से circulate हो रहे हो. But that thing will take some time. As of right now, the other two options are on the table for you. Next. Next is from Sarmad Munir. He's asking, is there any tax credit provision in sales tax? Please explain it as well. We'll be covering in the relevant session. Next is from Imran Khan. Is it possible to get a waiver from payment of default surcharge? Imran, it is possible theoretically. Practically, it may happen in some cases, but normally you'll have to contest for it. Abdullah Zuleri is saying, thank you for such an interactive session. Kumail Raza is asking, if we are providing services, then we have to register to SRB only or in FBR2. What about? Zuleri, you're most welcome. What about? What about filing the return both in FBR and SRB? I know it's a bit complicated. Normally ideal system तो वो होता है जो एक हो यूनिफॉर्म हो throughout the मुल्क आप throughout the country आप जहाँ भी बिजनेस कर रहे हैं यूनिफॉर्मली करें. यूरोप तो across the border VAT regime ला रहे हैं, मतलब different countries में एक system ला रहे हैं. However, with post-18 amendment we have to live in the reality. It's not gonna happen. So अब इंटेलिजेंशिया और हम प्रोफेशनल ये प्रपोज तो कर रहे हैं कि डिफरेंट बॉडीज आपस में स्ट्रीमलाइन करें अपने जो लेजिस्लेशन है उसको, अपने रेट्स को, अपने ट्रीटमेंट्स को और डबल टैक्सेशन को अवॉइड करें. बट एट द मोमेंट जो सिस्टम है उसमें आपको करना पड़ेगा. अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाईज SRB और FBR दोनों के परव्यू में फॉल कर रही हैं तो फिर आपको दोनों से रजिस्टर होना पड़ेगा और दोनों की रेलिवेंट रिटर्न अलग अलग फाइल करनी पड़ेगी. Unfortunately, this is additional burden on the business, but this is how the law of the land is working. Next. Agha Mushtaba is asking, is it compulsory for a tax-registered business to only carry out transaction with another tax-registered business? Not necessarily, but it would benefit you and save you from a lot of headache. That is why most of the big businesses try to do that. लेकिन आप याद रखें, taxation laws का मकसद ये है कि इलीगल एक्टिविटी खत्म हो, टैक्सेशन नेट बढ़े. उसका मकसद ये नहीं है कि आपको मना कर दिया जाए कि स्मॉल बंदे से आप टैक्स जो टैक्सेबल सप्लाईज नहीं कर रहा या कॉटेज इंडस्ट्री उसके साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते. यू कैन स्टिल डू बिजनेस विद देम. देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन प्रोहिबिटिंग इट. Abdul Arslan has asked, is it possible that supplier gives fake registration number to prove to his customer that he is registered? If answer is yes, then how companies can verify whether their customers, suppliers are actually registered or not? Good question. Yes, it is possible. And how the companies have proper taxation system. FBR का system है, हर company, हर बंदा उसको access कर सकते हैं. Real time आप उसमें number enter करके detail check कर लेते हैं बंदा tax payer है या नहीं है. अगर है तो कोई suspended या blacklisted तो नहीं है. अगर वो ना हो या सस्पेंडेड या ब्लैकलिस्टेड हो, यू रेज रेड फ्लैग, यू डोंट प्रोसेस द ट्रांजैक्शन. और अगर वो क्लियर है देन यू प्रोसीड करो. नेक्स्ट. Faisal Manzoor has suggested that SRO circulation will be a great idea, at least if it can be updated on ACCA portal, that would be helpful as well. ACCA portal might take a bit of time क्योंकि वो सेंट्रली मैनेज होता है. ACCA पाकिस्तान की टीम माशाल्लाह बहुत इफेक्टिवली और एनर्जेटिकली इस पे काम कर रही है. आपकी अच्छी सजेशन है, इसको नोट हम कर लेंगे. एज अ फर्स्ट स्टेप इन नेक्स्ट टैक्स ईयर इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम SRO सर्कुलेशन को शुरू करें, चाहे बाय ईमेल शुरू हो जाए. फिर अल्टीमेटली इन ड्यू टाइम वो ACCA की वेबसाइट पे भी, ACCA पाकिस्तान की वेबसाइट पे एटलीस्ट जो है टैक्सेशन का सेक्शन बना के अपडेट होना शुरू हो जाए. नेक्स्ट. Adab Thedi is asking, is saying good initiative to circulate taxation SROs. Please start soon. Thank you, Thedi sahab. Inshallah. Hishamul Hassan is asking, we are sales tax payable of around 1,300,000, but commissioner is asking 200,000 and saying all liability will be waived. Can this be happen? Should we give only 200,000? I know it is prime. You have to share the specific details. Commissioner unfortunately has a lot of discretionary power. If they are asking for a bribe and you are asking me, should I give a bribe? Obviously, I'm going to say no. Practically, what is the exact situation? What are the modalities of the case? You have to look at all these factors before making up a decision. Imran Yusuf is asking, I don't know if you will cover this later or have covered this in the previous session, but
will we be covering sales tax withholding rules, procedures? Sales tax withholding procedures will be covered in a different series. Some of the relevant areas were touched in initial discussion in the first session. Vishan Nawaz is asking general question, any other country apart from Pakistan practicing withholding tax on sales? Yes, many in the region, but not to the extent and with as high rates as we are. We, mashallah, have the largest number of indirect taxes, and we, mashallah, were first in the region to introduce the concept, and we, mashallah, have the highest rates of them. And despite all of that, we have the lowest tax to GDP ratio. So obviously, we are doing something wrong somewhere. Next. Muhammad Naveed Iqbal, all SROs or circulars become the part of Act or not? File rate of telecommunication in STA in SRB is 19.5%, while actually it is 18% through SRO. SRO basically are issued on the legal authority which update the relevant law. So SRO में जो रेट आए ना उसको आप फॉलो करते हैं, वो एक तरह से अपडेट कर देते हैं रेलिवेंट लॉ को. कुछ SRO होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, तो ऑब्वियसली दे डोंट काउंट, दे डोंट बिकम पार्ट ऑफ द लॉ, बट एनीथिंग टू डील विद लॉ दैट इज इश्यूड बाय SRO. SRO का कॉन्सेप्ट क्या है समझ लें. असेंबली हर दिन आप असेंबली का इजलास नहीं बुला सकते. अगर कोई बर्निंग इशू है तो असेंबली ने अपनी पावर एज पर लॉ डेलीगेट की है PR को कि वो उस इशू को फॉर टाइम बीइंग एड्रेस करे. So it basically has the power of law. Next. Next is from Muhammad Daniel. He's saying SRO circulation would be great. Happy to hear that from ACC Pakistan. Thank you. Akib Riaz is saying, I think SROs are updated regularly on FBR site. We can visit it on daily basis. Yes, they are. And if you do that, wonderful. This is just the concept of facilitating you. If you are getting it from your alma mater in your email, that's quicker. You're probably checking your email more quickly or ACC website more quickly. But yeah, they are updated on FBR site. So you can go there and access, not a problem. Next. Second last question from Mohammed Daniel. He's asking, are we going to discuss SROs as well? I'm particularly interested in SRO 1125. Not in this session or this series. The plan is, inshallah, once we cover the Sales Tax Act and the PRA and SRB Act, then we are going to move on to rules and then eventually SROs. Meanwhile, if you have any specific inquiry, shoot me an email. As you know, tomorrow is the deadline of taxation, income tax return. So if that is not extended again, then hopefully I'll be able to respond to you more quickly next week. Last question from Osama Abdul Wahid Lakhani. He's asking, is FBR or SRB pay cash to company in cash of refund, and if yes, how? In case of refund, they don't pay you hard cash as such. That okay, Lakhani साहब ये ले briefcase, आपका 25 लाख का refund इसके अंदर पड़ा है. ऐसे नहीं वो करते. वाउचर बनता है, वो रिफंड वाउचर आपको मिलता है, लेकिन वो बड़े आप खुश नसीब हो तो आपको उस रिफंड वाउचर की जरूरत होती है. अभी तक लोगों के अरबों के रिफंड जो है वो स्टक अप है. We're done? Yeah. Okay, great. So that's that. Let's quickly proceed with 37C. थोड़ा सा आप रिकॉल करें, क्वेश्चन से पहले हम डिस्कस कर रहे थे प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो अंडर द एक्ट होती हैं, रेलिवेंट पावर ऑफ द ऑफिसर्स. उसमें जिक्र आया था स्पेशल जजेस का. होते क्या हैं स्पेशल जजेस, इनकी पावर क्या है? लेट्स फाइंड आउट. Federal government may, by notification in the official gazette, appoint as many special judges as it considers necessary, and where it appoints more than one special judge, it shall specify in the notification the headquarter of each special judge and territorial limits which he shall exercise. Why? ताकि दो special judges का आपस में conflict ना हो जाए. No person shall be appointed as a special judge unless he or she has been a sessions judge. मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्पेशल जज होने के लिए एज अ मिनिमम आप सेशन जज होने. सेम चीज यहाँ पे उसने बताई है. Cognizance of offences by special judge, in addition to anything contained in this act or any law for the time being in force, a special judge may, within the limits of his jurisdiction,
take cognizance of any offense punishable under this act in three situations. Number one, upon a report in writing made by an officer of Inland Revenue or any other official office authorized in this behalf by FPR or federal government, upon receiving a complaint or information of facts constituting such offense made or communicated by any person, or upon his knowledge acquired during proceeding under any other case. So स्पेशल जज को तीन केसेस में, तीन सिचुएशन में वो किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के हवाले से प्रोसीडिंग्स कर सकता है. उसको स्पेसिफिक कंप्लेन की है रेलेवेंट ऑफिसर ने, या उसको वैसे कोई कंप्लेन मिली है अलॉन्ग विद एविडेंस और फैक्ट्स, जनरल पब्लिक ने भेजी है एक्सेट्रा, या वो कोई और केस को प्रिजाइड कर रहा था और वहां पे उसको इंफॉर्मेशन मिली है जिधर पता लगे कि यहाँ पे भी एक ऑफेंस अंडरटेक हो रहा है और उसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए. नंबर टू, अपॉन रिसिट ऑफ द रिपोर्ट अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1, जहां पे ऑफिसर ने रिपोर्ट की है जो अभी हमने पढ़ा है, स्पेशल जज शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ द एक्यूज्ड upon the receipt of complaint of information under clause B या C. Special judge before issuing summon or warrant for appearance of person complained against will hold a preliminary inquiry. पहले में जहां पे ऑफिसर ने रिपोर्ट किया, ऑफिसर तो इंक्वायरी करके दे रहे हैं, वहां पे प्रोसीडिंग शुरू होगी. लेकिन अगर उसको केस के अंदर कोई इंफॉर्मेशन मिली है या किसी और बंदे ने उसको कंप्लेन की है, तो पहले स्पेशल जज खुद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा कि इसमें कोई बेसिस भी है, कोई एविडेंस भी है सफिशिएंट. ये नहीं करेगा कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन पे ही बंदे को खुद समन कर लेगा. ओके, अगर आफ्टर कंडक्टिंग द इंक्वायरी या आफ्टर कंसिडरिंग द रिपोर्ट ऑफ सच मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर, स्पेशल जज इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, वो कंप्लेन ही डिसमिस कर देगा. अगर there is sufficient ground for proceeding, then he or she may, अच्छा यहाँ पे ये एक्ट 1990 का बना हुआ है जो उस वक्त ट्रेंड था, ही मेंशन है, ही से मुराद she भी है. He may proceed against the person complained against in accordance with the law, and a special judge or magistrate or an officer holding inquiry under subsection 3 may hold such inquiry as early as possible in accordance with the provision of, again, section 202 of the Code of Criminal Procedure. 37E, special judge to have exclusive jurisdiction. कौन से एरियाज हैं जहां पे सिर्फ स्पेशल जजेस की jurisdiction हो? Notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force, no other court other than the special judge having jurisdiction shall try an offense punishable under this act. No other court or officer except in the manner or to the extent specifically mentioned in the act shall exercise any power or perform function under this act. No court other than the High Court shall entertain, hear or decide any appeal in accordance with the Code of Criminal Procedure. यानी लोअर कोर्ट्स में आप स्पेशल जज को चैलेंज नहीं कर सकते, क्यों? वो पहले ही सेशन जज लेवल का बंदा है जो वहां आके बैठे. लेकिन हाई कोर्ट में आप जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898. नो कोर्ट अदर देन द स्पेशल जज और हाई कोर्ट शेल एंटरटेन एनी एप्लीकेशन और पिटिशन और पास ऑर्डर और गिव डायरेक्शन अंडर दीज चैप्टर्स ऑफ द अफोरसेड कोड. 37F, provision of Code of Criminal Procedures 1898 to apply. Simply जो relevant sections है वो हमें बताए गए हैं कि for purposes of section 1 relevant section of Code of Criminal Procedures apply होता है. Unfortunately इसके लिए आपको relevant section इसका पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, इतनी मोटी बुक है, उसको खोल के Code of Criminal और Civil Procedures के आप relevant section पढ़ सकते हैं. लेकिन this is only relevant in worst case scenario जहाँ पे आपकी prosecution हो रही है और वहां पे prosecution में भी केस स्पेशल जज के पास चला गया है, वहां पे थोड़ा सा आपको लीगल नॉलेज रिक्वायर्ड होगा या एक लीगल असिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी. इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट क्वालिफाइड लीगल ओपिनियन. 37G, ट्रांसफर ऑफ केसेस where more than one special judge are appointed within the territorial jurisdiction of the High Court. High Court क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल बॉडी है जो स्पेशल जजेस के ऊपर आती है, उसके पास ये पावर है कि वो ये डिफाइन कर सके कि कौन से केस ट्रांसफर करने हैं किसको. अगर एक स्पेशल जज अपॉइंट है तो गवर्नमेंट खुद बाय ऑर्डर इन राइटिंग
at any stage of trial may transfer the case from the court of one special judge to another for disposal. Whenever it appears to the High Court, so or as the case may be, the federal government, that such transfer may promote the ends of justice or tend to the general inconvenience of the parties or witnesses. So federal government अगर एक स्पेशल जज अपॉइंटेड था, एक से ज्यादा थे, तो हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो ट्रांसफर कर सके इवन ड्यूरिंग द केस प्रोसीडिंग्स फ्रॉम वन कोर्ट ऑफ स्पेशल जज टू अनदर. In respect of the case transferred to a special judge under subsection 1, such special judge shall not by reason of the said transfer be bound to recall and rehear any witnesses whose evidence has been recorded in the case. जिनके evidence पहले record हो चुके हैं उनके दोबारा सुनने की जरूरत नहीं, उनको as it is दिया जाएगा. 37H place of sitting, special judge की place of sitting जो है normally headquarter में होगी, लेकिन parties की convenience के मुताबिक किसी और जगह पे भी neutral obviously conduct की जा सकती है. Appeal to High Court 37I. Any person including the federal government, board, commissioner or directorate of intelligence जो है अगर एग्री वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत रेलेवेंट चैप्टर के हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं. अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि आपके पास राइट ऑफ अपील रहता है, आप हाई कोर्ट इवन देन सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको जो राइट दिया है वो आपसे कोई ले नहीं सकता. यू हैव द राइट, आपके पास भी है, बोर्ड के पास भी है. अगर डिसीजन उनके अगेंस्ट आए वो जा सकते हैं अपील में, आपके अगेंस्ट आए आप जा सकते हैं. सो अगर स्पेशल जज आपके अगेंस्ट फैसला पास कर दे, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड. अगर आप मेरिट पे समझते हैं फैसला गलत है, यू कैन गो इन अपील. Which brings us to section 38, authorized officers to have access to premises, stocks, accounts and records. Any officer authorized in this behalf by the board or the commissioner shall have free access to business or manufacturing premises, registered office or any other place where any stocks, business record or documents required under this act are kept or maintained belonging to any registered person or person liable for registration or whose business activities are covered under this act or who may be required for any inquiry or investigation in tax fraud, etc., 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 etc. आसान जुबान में समझा दूं, जो भी रेलिवेंट ऑफिसर बोर्ड ने ऑथोराइज किया है वो जिस जगह पे आपका रिकॉर्ड है या स्टॉक रखा हुआ है वो उसको एक्सेस कर सकता है और आप बाउंड है कि उसको स्टॉक की भी फ्री एक्सेस दे, और स्टॉक के सैंपल भी ले सकता है और वो आपके रिकॉर्ड जो है उनकी भी कॉपीज ले सकता है. लेकिन जो भी वो चीज लेगा उसकी एक कॉपी आपको देगा और साइन करके देगा. ओके. 38A, power to call for information. Commissioner may by notice in writing require any person including banking company to furnish such information or such statement in connection with any investigation or inquiry in cases of tax fraud as may be specified in the notice. मैं इनकम टैक्स की भी ट्रेनिंग्स में बता चुका हूँ, हमारे पहले सेशन में भी आई थिंक क्वेश्चन आंसर सेशन में मैंने ये जिक्र किया था कि अब वो वक्त नहीं रहा कि बैंक आपकी इंफॉर्मेशन नहीं देते थे. अब लीगली आपने ये भी पढ़ लिया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी मेंशन है, बैंक रिक्वायर्ड है कि जब एफपीआर उनको इन राइटिंग रिक्वायर करता है वो आपकी इंफॉर्मेशन देने के बाउंड है. इसके अलावा भी अब टैक्सेशन अथॉरिटी सिस्टम बना रही है जहां आपके बैंक अकाउंट्स को उसमें इंटीग्रेट किया जा रहा है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी रिपोर्ट्स आती हैं. Provided that the commissioner may require any regulatory authority to provide information concerning the licenses and authorization issued by it, SCCP वगैरह से भी information ले सकते हैं. Taxation bodies 38B, obligation to provide documents and provide information, notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force. Any person required to maintain the record under the act or on demand by any officer not below the rank of an assistant commissioner. आप देखेंगे पैटर्न है कि कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर की रिक्वायर करते हैं कि अनलेस बोर्ड स्पेसिफिकली मेंशन करे, कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का ऑफिसर जो है वो ये इंक्वायरीज कर सकते हैं. बाय नोटिस इन राइटिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इन नोटिस शेल. अगर आपके पास रेलिवेंट रिकॉर्ड है और कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का ऑफिसर आपसे रिक्वायर कर रहा है, आपने वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करनी है या अलाउ करना है ऑफिसर को कि वो एक्सट्रैक्ट कर दे या उसके सामने जाके टेस्टिमनी देनी है. An officer of inland revenue conducting audit inquiry or as the case may be an investigation under the act may require in writing any person, department, company or organization to furnish any information as is held by them and they are bound to cooperate. ठीक है, this is pretty much straightforward. The board may require in writing any person, department, company or organization as the case may be to provide
any information or data held by the person, department, or company or organization, which, in the opinion of the board, is required for the purposes of policy or administration of customs, sales tax, federal excise, or income tax. Every person, department, company or organization आसान चीज है स्पेसिफिकली उन्होंने इंडिविजुअल देन कंपनी का मेंशन की है कि विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस जो रिक्वायरमेंट आपसे की गई है वो इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है. We are right on target, so we can spare 10 minutes for question and then we'll cover the next two sections. So Mr. Question, do we have any questions? Yes, we do. First one is from Muhammad Amin Rashid. He's asking if a person fails to file return for first time, similarly fails to pay its liability for the first time, then what are the consequences? We have covered that extensively in section 33 and 34. Just have a look. I'll quickly help you recap. The first one was non-filing in section 33. Minimum penalty 5,000 per month, or if you file within 10 days of the deadline, 100 rupees per day. Depending on the amount on the offense, whether you did it first time or second time, the liability can range anywhere from 3 to 5% of the tax amount involved to 100% of the tax amount involved, along with prosecution resulting into up to 3 years of imprisonment, along with an additional fine up to 100% of the tax amount involved, which if you have repeated the offense can be doubled. I hope that helps. But if you want to read specifically, section 33. Next. Omer Zaheer Meer is asking, will there be any session on income tax ordinance? We have already conducted 3 sessions and will be doing more sessions on further law as well as on the income tax law in the coming year. The existing sessions, if you want to quickly review, you can go and review them in on Vimeo at ACCS channel. Muhammad Mohsin is saying it is appreciated if obsoleted SRO and active SRO should be spared for updation by ACCA Pakistan. Obviously, we will not send you any obsolete SRO. We are only going to send you the SROs that will be in operation. Next is from Abdul Hamid. He's asking withholding rules for sales tax on services for the company registered for federal sales tax only. Okay, we'll be covering that in due time. Today we are covering Sales Tax Act, which covers FBR's operations, which is not exactly what you're looking for. Another suggestion from Osama Abdul Wahid Lakhani. He's saying please also conduct session on how to prepare sales tax challan and monthly returns. Okay, noted. I'll pass that on. But you can also quickly shoot an email to Harun Saab or send one to Ahmed or send one to me, and we'll pass it on to him. He is, mashallah, very receptive. And when you'll propose these topics, inshallah, we'll plan and coordinate to conduct them. Next. Zishan Nawaz is asking if FBR is not refunding to businesses, then ultimately they are discouraging unregistered businesses to be in the tax net and encouraging fraudulent activities. That is one perspective. How you can say they are playing with the limitations. Most of the refunds that are outstanding are of the businesses that are involved in import-export. And they cannot do import-export unless they are registered for sales tax. So, cash 22. Zulkarnain Haider is asking, can you please give a brief overview of section 36 as my connection was lost at that time? Okay, Zulkarnain, why don't you do this, that at the end of the session today, come back with this query, and inshallah, if we have time, we'll cover it today. If not, you can access the recording on Vimeo. Next. Momin Suhail Khan is asking, can Deputy Commissioner providing purchase invoices used in claiming input tax without issuing any notice via a phone call? That wouldn't have the legal sanctity. They have to give you a notice in writing. Normally what they do, they send you the notice and through UMS or post, and you never receive it, but in their records you receive it. These are the practical difficulties. Next. Another question from Zulkarnain Haider. He wants to have a brief overview of section 37A as well. Same thing, Zulkarnain. Shoot me at the end of the day. If we have time, I'll do that again. Otherwise, check the recording on Vimeo.
Similar question from Salman. He wants Similar response. Okay. Mohammed Kotwala is asking what is the minimum requirement for keeping records of books of accounts for the purpose of sales tax? Already mentioned, mostly 5 years, few specific cases up to 6 years. Next. Abdul Arslan is asking, one of my colleagues in head office when preparing internal report of monthly P&L shows net revenue after deducting withholding tax on sales and then deducts cost of sales and then expenses. I think it is wrong treatment. Is it right or wrong? For internal management purposes, why is it wrong? Internal management purpose, management want to see what your business is doing excluding taxes and also that's fine. However, when you are reporting it formally in your income taxes or sales tax, then there is a specified format to be followed. Next. So Steve Ahmed is asking if you are holding records at two places as most of the companies doing to keep their database safe, whether you have to inform the sales tax office in case of inquiry. Obviously, you have to inform them. But normally, you inform them of the prime location. The backup location can just be a bank safe too. The purpose is to keep the data safe. Next. Shiraz Khan is asking what are the actual responsibilities of Commissioner Inland Revenue? Who can replace him? Another Commissioner Inland Revenue can replace him, or while the seat is vacant, as we stated already in the sessions earlier today, I think it was in the morning session before tea break, they have the authority, the FPI has the authority to temporarily delegate the power to the additional and deputy commissioners. Mohammad Zishan Afzal is asking if case win by taxpayer from Supreme Court due to wrong show cause by department initially and then by CER appeal, ATIR and High Court then taxpayer can claim expenses those are executed during fighting case against department. Yeah, in fact, normally what it's done is when you are filing in the court, in your prayer you stated that you are requesting a claim for the refund or whatever tax liability, etc., as well as any, if you are one of those interested on that, as well as any other relief the court may deem appropriate, including the costs of litigation. So normally taxpayers do include this thing, and however, the trend has been that normally taxpayer is very happy just to get a refund. Because if you are fighting it to High Court and Supreme Court level, this means the tax is above 6 figures, maybe 7 figures, maybe 8 figures or so on. So that is a very substantial amount, and maybe you might be spending a few thousand or a few 100,000 in getting that. However, there is no limitation on that, you can claim for that. Next is from Tosif Ahmed. He's asking most of the companies keeping two types of records, one for taxation purpose and one for own purpose. Yeah, that's the practical thing that is happening as per law. That's illegal, but that is happening in practice. What is the penalty for this? You have seen that in Section 33. In worst case scenarios, the penalties can be up to 100% of the tax liability involved, up to 3 years imprisonment, and a fine of 100% tax liability too. Keshav Majid is asking, companies ordinance is another important law. Will we have any session on cards? Yes, we had 3 sessions on, we had sessions on income tax ordinance, not yet on companies ordinance. Yes, we will have sessions on companies ordinance. To speed it up, again, shoot an email to either me, Ahmed here, or Harun sir, and we'll plan and line that up for you too. Muhammad Amin Rashid is asking, it means there is no relaxation of the mistake for first time, either in sales tax No, there is. If you make a genuine error the first time, you are not penalized. If you repeat the error, you are penalized. Even अगर आप रिटर्न पहले महीने लेट फाइल करते हो आपको पेनल्टी नहीं पड़ती, 2 consecutive month में पड़ती है. ये हम पहले सेशन में ऑन सेल्स टैक्स कवर कर चुके हैं जो लास्ट सैटरडे को हुआ है. नेक्स्ट. Kanzar Nasir is asking, in section 34 subsection 2b, by the 16th day of the month, do we mean 16 days after the due date of tax submission? Yeah. Next is from Khwaja Behroz Faisal. He's asking, if some inspector writes a letter to any financial institution under section 38, should we write a letter to him, her, requesting him to provide delegation of powers of Commissioner Inland Revenues in his favor as the required delegation of powers under section 140 of income tax?
before giving Inspector won't write you letter on their own. Inspectors draft the letter, they write it, and then they take it minimum to the assistant commissioner and get it signed from him. Then they bring that letter to you, and then they show you the letter, give you the copy, and tell you that under law you have to give us the information. So I've not seen any inspector who is stupid enough to sign a letter in his name. Firstly, violating the law. Second, taking personal liability. Why would they do that? But if hypothetically someone does that, yes, you can ask them. Mohammed Asghar is asking, is it Commissioner for Appeal next to Inland Officer in case of any dispute? Commissioner Appeal is equivalent office to the Commissioner of Relevant Section. Commissioner Appeal does not come under Commissioner of Relevant Section. Commissioner Appeal is a separate office which can offer you, at least in theory, a recourse against the decisions of the Commissioner. And Shamul Hassan is asking how long we can claim federal sales tax on supplies. Not the topic today. Mansoor Arif is asking what a person should do if tax authority is repetitively sending notices to taxpayer even after response and records are submitted to them. The main reason is the transfer of their officers and they do not look to the response provided and pressurizing taxpayers that they have not provided any response of the previous notices by giving final notice every time. Two things here. What was the name? Mansoor Arif. Mansoor sir, first of all, you have to mention specifically what's the matter, because notices can be of different nature and they have varying implications depending on the nature. Secondly, when you are submitting your response, there is a way to do that. If such is the case as you have mentioned, I would suggest that send someone from your office to actually deliver it on the counter and get a receiving on the copy. When you have that receiving, then they are in a precarious position to claim that they haven't received it. Next. Mohammed Kotwala is asking, currently we are discussing the act which is very knowledgeable. However, would really appreciate if we can have some sessions on dealing with practical operational working of withholding of sales. Very good question, and I think you tuned it late. We covered this in the opening remarks that ACCA has, in an unprecedented move, unlike any other accountants body ever in Pakistan, has planned these continuous series of CPDs on taxation, where first we are starting with the basic laws, building the knowledge, then inshallah we will have every year continuously these basic law series as well as the rules. Then we'll have the basic laws rules along with the advanced level. So yeah, it's a continuous process where we are evolving you to the process where ultimately inshallah in due time you will have expert level expertise. Next. Muzammil Shakir is asking, if a person is performing a business in different provinces and not paying tax, all the cases are in the federal court or in the different provincial courts? No, relevant. SRB would pursue you in their domain, PRA would pursue you in Punjab, similarly FPR would pursue you in their domain. Muhammad Nabil Iqbal is asking, can a commissioner appeal refer back the case with a decision of annulling the order? Yes. Kumail Rada is asking, currently STN and NTN is used for the same purpose. If it can be used for both income tax and sales tax filing? No, they are not used for the same purpose, Kumail. STN is actually referred to as STRN, Sales Tax Registration Number, which shows you are sales tax registered. NTN is more focused on income. The aim is to ultimately tie everything for individuals in their CNIC and for companies to have one number. But I think that is still some time in the future that we'll see something like this happen. But yeah, it's a good suggestion. Would save so much trouble to businesses. Next. Osama Lakhani is asking, is it possible to claim previous refund sales tax or adjusted in future sales tax? Yes, possible. The best way is to go for adjustment because refunds just practically take ages. Next. Shamul Hassan is asking, can we adjust federal input sales tax against provincial output sales tax? No, you can't, and please focus on today's figure. I've answered this one because it's coming repeatedly, but please focus on today's session. We will cover these things in due time. Next. Muhammad Tahir is asking, can a minor start a business and be registered for sales tax? Minor? Yeah. Okay, how will a minor start a business? How would they operate their bank account?
what identity documents would they have to get their business registered? And certainly they can't be registered in tax for tax purposes, even if they are doing it as an individual. CNIC is mandatory. So you don't have CNIC, you can't go for that. So a minor, maybe one possibility can be they get into partnership with someone. Legitimately, the partnership would be providing them with their share and the legal backing, and then the partnership can get registered with tax. So that is one way to get around it. Last two before break. Okay. Imran Khan is asking, is it possible to transfer the case in SRB from Karachi to Peshawar where SRB is not applicable? If the case is in SRB's purview, why would SRB transfer it to Peshawar? So the answer is no. If you mentioned about special judges, this particular law that we are discussing today is Act 1990, the FPR law. We will cover separately the SRB legislation separately in 3 planned sessions, inshallah. Kanza is saying, thank you for never missing any question, Mr. Ahmed and Mr. Umar. You are most welcome, Kanza. You can thank me for the answers. It's Ahmed who is not missing the questions, reading them. Next. Okay, last question. Gulrez is asking, if someone delayed tax payment then? Penalty, section 33. So guys, it's almost 1:1 in ACCS clock. We will have a lunch break. Go get something to eat, refresh yourself, say your prayers. I'll see you all back in exactly 1 hour, and inshallah we'll continue from where we've left. We'll continue from section 40 then. I'll see you in 1 hour. Thank you.
Assalamu alaikum, hello and welcome again. It's exactly 1 past 2, 1 hour since our last break. I hope you all ate well and are all ready and raring to go. So let's begin with section 40. Section 40 is basically about searches under warrants. Where an officer of Inland Revenue has any reason to believe that any of the documents that you being the taxpayer has served or things which in his opinion may be useful for or relevant to any proceedings under this act are kept in any place, he after obtaining a warrant from the relevant magistrate may enter the place and cause a search to be made at any time. So special judge या magistrates आपके पास आएंगे, warrant लेंगे, अगर उनके पास reasonable cause है और वो believe करते हैं कि आपने कोई document hidden रखी है, and they have this authority to search your premises under the warrant. The search made in his presence under subsection 1 shall be carried out. ये मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पे टाइम होता जा रहा है legislation, local legislation के साथ जो already हमारी enacted है, Code of Criminal Procedure 1898. 40A has been obsolete, deleted. 40B जो है वो officers की posting से deal करता है, subject to such conditions and restrictions as deemed fit to impose by the board, or the chief commissioner may post officer of Inland Revenue to the premises of registered person or class of person to monitor production, sale of taxable goods and stock position. अच्छा, इसका क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब और इसकी मिसाल. प्रैक्टिकली मैंने आपको जिक्र किया था कि FTAs जो हैं, इंक्लूडिंग जो हमारे पर्टिकुलरली अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से जो हमने certain, let me try to sort this pen thing out. Okay, great. So अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कुछ दूसरे हैं, उसका मैंने आपको जिक्र किया था, वेदन कंट्री भी हो जाता है. फिर प्रोडक्शन फिगर्स जो हैं, कई दफा कुछ ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनकी रियल और रिपोर्टेड में फर्क होता है, तो ये अथॉरिटी दी गई है चीफ कमिश्नर को और ओवरऑल बोर्ड को कि वो अपने किसी भी ऑफिसर को ऐसे किसी टैक्स पेयर के प्रेमिसेस पे भी पोस्ट कर सकता है ताकि वो ऑब्जर्व करता रहे कि एक्चुअल क्या प्रोडक्शन हुई है, किधर जा रही है, कितना स्टॉक निकला, एटसेट्रा एटसेट्रा. Provided that if a commissioner on the basis of material evidence has reason to believe that a registered person is involved in evasion of sales tax or any other tax fraud for that matter, they may, by recording the reason in writing, post an Inland Revenue officer to the premises of such person to monitor production or sale of good and stock position. Just what I shared with you a moment ago. अच्छा, यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि डाउट रिमूव करने के लिए इट इज डिक्लेयर्ड कि ये पावर्स जो है बोर्ड की, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर की, ये सेक्शन 40 की बाकी प्रोविजंस के अलावा है. वो प्रोविजंस तो मौजूद हैं ही है, ये उनके अलावा इजाफी इख्तियारात है. सेक्शन 40C मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीन्स, इसमें सब सेक्शन 3 जो है ये लेटेस्ट इंसर्शन है फाइनेंस एक्ट 2015 की. आपको याद है हमने पहले आज ये बात की थी कि जी अब ये डिस्कशन हो रही है, इनफैक्ट हमने सुबह पहले सेशन में इन द बिगनिंग बात की थी कि अब ये डिस्कशन हो रही है कि जी इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग की जाए और उसकी सारी जो ऑडिट है, उसकी रिकॉन्सिलिएशन इनफैक्ट जो है वो पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट डिपार्टमेंट को दी जाए. सो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीन्स. ठीक है, आपने उनकी फैक्ट्री पे या गोदाम पे वहां पे आपने ऑफिसर्स रख दी, लेकिन एक तो कितने ऑफिसर आप रखेंगे, दूसरा अब वो कहाँ कहाँ जा रहा है, आप हर ट्रक पे भी एक बंदा बिठाएंगे, फिर तो आपको पूरे पाकिस्तान को टैक्स डिपार्टमेंट में भर्ती करना पड़ेगा. सो द आंसर इज टेक्नोलॉजी. Subject to such condition, restrictions and procedures that it may be fit to impose or specified, the board may by notification in the official gazette specify any registered person or class of registered persons or any good or class of goods in respect of which monitoring or tracking of production, sales, clearance, stocks or any other related activity may be implemented through electronic or other means as may be prescribed.
From such date as may be prescribed by board, no taxable goods shall be removed or sold by manufacturer or any other person without affixing the tax stamp, banderole sticker, labels, the new insertion, barcodes, etc. in any such form, style, manner, or may be prescribed by board in this in this behalf. होता क्या था कि टैक्स स्टैम्प, बैंडरोल, स्टिकर्स वगैरह माशाल्लाह हमारे लोग क्रिएटिव तो बहुत होते हैं, उनकी कॉपीज बन जाती थी. ऑन ड्यूटी ऑफिसर को मेल प्रैक्टिसेस होती थी, स्टॉक पे निकल जाता था. अब उसका सॉल्यूशन लाए हैं कि चंद लिमिटेड कंपनीज को ऑथोराइज करेगा एफपीआर, उनके बारकोड्स लगा करेंगे और जिस कस्टम पोस्ट से गुजरेगा वो बारकोड स्कैन हो रहा होगा और ऑटोमेटेड रिकॉर्ड आ रहा होगा. दे आर एमिंग कि इसमें जो वेस्टेज थी टैक्सेशन रेवेन्यू की वो मिनिमम हो, ह्यूमन एलिमेंट कम से कम हो, तो जो पॉसिबिलिटीज ऑफ करप्शन या मेल प्रैक्टिसेस है वो भी मिनिमाइज हो जाए. इसी की कंटिन्यूटी में ये सबसेक्शन 3 इंसर्ट किया गया है कि सच टैक्स स्टैम्प्स, banderoles, stickers, labels, barcodes, etc. shall be acquired by the registered person referred to in subsection 2 from a licensee appointed by the board for the purpose against price approved by the board. Price board ने नहीं पे करनी, आपने पे करनी. क्यों? आपकी प्रैक्टिसेस के हवाले से ये डाउट हुआ है, आपने कंट्रोल इनपुट करने अपने बिजनेस में. दीज आर पार्ट ऑफ योर बिजनेस कंट्रोल टू एक्चुअली कैरी आउट द बिजनेस, which shall include the cost of equipment installed by such licensee in the premises of the said registered person. So pretty much what we discussed. 44 तक जो है they have been omitted. 45A से हम continue करते हैं. Power of the board and commissioner to call for records. The board may, of its own motion or otherwise, call for and examine the record of any departmental proceedings under this act or the rules made thereunder for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any decision or order passed therein by any officer of Inland Revenue, provided that no order imposing or enhancing any penalty or fine requiring payment of a greater amount of ST than the originally levied shall be passed unless the person affected by the order. बगैर सुने, आप बगैर शो को नोटिस दिए आप किसी को अनहर्ड कॉन्डेम नहीं कर सकते. ये लीगल प्रिंसिपल है, इसको कहते हैं ऑडी अल्ट्रम पल्ट्रम, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस. यू हैव टू लिसन टू द पर्सन यू आर एक्यूजिंग बिफोर पासिंग अ फाइनल वर्डिक्ट. और किसी भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स वगैरह के हवाले से बोर्ड जो है रिकॉर्ड्स कॉल कर सकते हैं टू रिव्यू दैट. No proceeding under this section shall be initiated in the case where appeal under 45B or 46 is pending. 45B हम अभी कवर करते हैं and then 46. No order shall be made in this section. जो आप टाइम बार का पूछ रहे थे, इस सेक्शन के हवाले से टाइम बार का कॉन्सेप्ट है 5 years from the date of original decision or order of the subordinate officer referred to in subsection 1. 45B appeals. Any person other than the sales tax department aggrieved by any decision or past order passed under section 10, 11, 25, 36, 66. Why not sales tax department? ये अगर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट यानी पीआर अपसेट है तो वो क्यों नहीं अपील कर सकता? कम ऑन, क्विक रिस्पॉन्स, 20 सेकेंड्स. हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, जो जहन में आता है बताइए. जी, any response? Can you repeat the question, sir? And one response, integrity issues. Okay, the question was कि हम 45B अपील को पढ़ना शुरू किया. इसमें वो कह रहे हैं कोई भी बंदा अपील कर सकता है सेक्शन 10, 11, 25, 36 या 66 के तहत जो डिसीजन पास किए गए हों सवाए सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के. सवाल ये, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को अगर कोई फैसला उसके खिलाफ आ गया है टैक्स पेयर के हक में तो वो क्यों नहीं अपील कर सकता? Because it has all the powers and therefore right to appeal rests with taxpayer. No. In certain cases, sales tax department यानी FPR will appeal. ये जो सेक्शन है इनमें इनका अपना ऑफिसर ही फैसला दे रहा है, अपना ऑफिसर को अपने खिलाफ नहीं दे रहा. और अगर अपना ऑफिसर असेसमेंट अपने खिलाफ कर रहे हैं
तो वहां पे आप कहाँ अपील पे जाएंगे, अनलेस आप ये मेलाफाइडी प्रूफ कर सके, इन विच केस ये सेक्शन नहीं, सेक्शन 33 इन एक्शन आ जाएगा और उसके रेलिवेंस ऑफेंसेस की पेनल्टीज लागू होंगी। Okay. Order passed by an officer of Inland Revenue may, within 30 days of the receipt of such order, a decision or order, prefer appeal to Commissioner Inland Revenue Appeal. आप टैक्स पेयर है, आपके खिलाफ सेक्शन 10, 11, 25, 36, 66 का ऑर्डर आए, तो जिस डेट को आपको ऑर्डर मिला है, डेट ऑफ डिसीजन नहीं, डेट ऑफ रिसिट ऑफ ऑर्डर, उसके 30 डेज के अंदर आप कमिश्नर अपील्स को अपील फाइल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट एन अपील प्रेफर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। अगर 30 डेज गुजर जाए तो फिर कमिश्नर अपील की मर्जी है, अगर आप उसको जस्टिफाई करें और वो सेटिस्फाई हो, कोई वैलिड रीजन है, तो वो आफ्टर 30 डेज भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन नॉर्मली यू शुड ट्राई टू अपील विद इन 30 डेज बिकॉज देन यू विल बी ऑन शेडी ग्राउंड्स। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अपील शेल बी अकम्पनीड बाय अ फी ऑफ 1000 रुपीज, इसकी फी है जो पे होती है एज द बोर्ड में प्रिस्क्राइब। प्रैक्टिकली क्या होता है, पीआर की वेबसाइट पे ई पेमेंट में जाके सेल्स टैक्स सिलेक्ट करके मिसलिनियस को आप सिलेक्ट करके उसका चालान निकाल लेते हैं और जाके वो स्टेट बैंक या नेशनल बैंक की रेलिवेंट प्रिस्क्राइब ब्रांचेस जो भी है उनमें से किसी में भी आप जमा करा देते हैं। Wherein a particular case the commissioner appeals is of the opinion recovery of tax levied under this section shall cause undue hardship to the taxpayer, he, after affording opportunity of being heard to the commissioner or officer of Inland Revenue against whose order appeal has been made, may stay the recovery of such tax for a period not exceeding 30 days in aggregate. अगर कमिश्नर अपील कहता है भाई टैक्स तो बनता है लेकिन आपको बड़ी अनड्यू हार्डशिप होगी, फौरन पे नहीं कर सकते, तो वो 30 दिन तक के लिए उसको स्टे कर सकते हैं, आपको टेम्परेरी रिलीफ दे सकते हैं। The commissioner appeals may, after giving both parties the opportunity to be heard, pass such an order he thinks fit, confirming, banning, altering, setting aside or annulling the decision or order appealed against। तो ये जो पहले सवाल आया था, जी बिल्कुल कमिश्नर अपील अनल भी कर सकते हैं, सेट असाइड भी कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं, कंफर्म भी कर सकते हैं। Provided that such order shall be passed not later than 120 days from the date of filing an appeal or within such extended period as the commissioner appeal may for reasons to be recorded in writing fix, provided that such extended period in no case shall exceed 60 days. So 30 days के अंदर आपने अपील फाइल करनी है, 120 days plus maximum 60 days, 180 days में उसने डिसाइड करना है। So this can take a good 7 months for this to be decided. और ये भी पहला प्लेटफॉर्म है। कमिश्नर अपील के बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल है, अगर आपको मेलाफाइडी लगे, मैल प्रैक्टिस लगे, आप एफटीओ जा सकते हैं, अदरवाइज फिर आप हाई कोर्ट वगैरह में जा सकते हैं। सो इट इज अ cumbersome and time consuming process. As you can see, it will take up to 7 months to just conclude this commissioner appeal process if everything goes fine. Provided further that any period during which the proceedings are adjourned on account of a stay order or ADR or alternate dispute resolution proceedings, the time taken through that by the petitioner not exceeding 30 days shall be excluded from the computation of above period. So, एकदम 7 से 8 months हो गया। In deciding an appeal, the commissioner appeals may make such further inquiries as may be necessary, provided that he shall not remand the case for de novo consideration. So section 46 appeal to appellate tribunal. ठीक है जी, कमिश्नर ने आपके खिलाफ फैसला दिया, आप कमिश्नर अपील के पास गए। कमिश्नर अपील भी डिपार्टमेंट का बंदा है, बहुत ईमानदार है, लेकिन उसकी सोच वही है जो डिपार्टमेंट की है। आपको लगता है कि जी इसने फैसला गलत दिया है, इसने पॉइंट ऑफ लॉ मिस किया है, या इसने कोई फैक्ट्स जो मैंने दिया कंसिडर नहीं किए। Do you have any other platform open? Yes, you do. Appellate tribunal. Under section 46, you can go to appellate tribunal. Any person, including an officer of Inland Revenue, not below the rank of an additional commissioner, aggrieved by any order passed by the Commissioner Inland Revenue Appeals under section 45B जो हमने पढ़ा है, या Commissioner Inland Revenue की adjudication या किसी और प्रोविजन के अंदर, या बोर्ड ने सेक्शन 45A में कोई डिसीजन दिया हो, तो उनकी 60 डेज ऑफ रिसिट ऑफ द ऑर्डर के एपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। अच्छा, आप देखें टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है। कमिश्नर के ऑर्डर रिसीव होने के 30 डेज में आप कमिश्नर अपील के पास हो, कमिश्नर अपील का जो ऑर्डर है या बोर्ड ने ऑर्डर दिया है या कोई और प्रोविजंस के तहत जो आपको मिला है उसके 60 डेज के अंदर आप एपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं।
एपिलेट ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि क्या उसने इस केस को एडमिट करना है या नहीं करना। अगर उसने केस को एडमिट करना है तो फिर वो उसकी डेट फिक्स कर देगा हियरिंग की, as per procedures laid down in section 131 and 132 of income tax ordinance। अब यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल की जो वर्किंग्स है वो वही है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, ये हम कवर कर चुके हैं। आप वाइमियो पे इसको चेक कीजिएगा, इंशाल्लाह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेशन हम दोबारा भी करेंगे। All appeals and proceedings under this act pending before Customs, Excise and Sales Tax Appellate Tribunal constituted under Section 194 of Custom Act 69 shall stand transferred to Appellate Tribunal constituted under Section 130 of Income Tax Ordinance 2001 from 28 October 2009। So 28 October 2009 से onward ये सारे केसेस जो है ट्रांसफर हो चुके हैं एपिलेट ट्रिब्यूनल की फंक्शनिंग को जो वर्क करती है अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के। 47 रेफरेंस टू द हाई कोर्ट। 30 डेज में आपने अपील की कमिश्नर अपील को, 60 डेज में आपने की एपिलेट ट्रिब्यूनल को आफ्टर रिसीविंग डिसीजन। एपिलेट ट्रिब्यूनल ने भी आपके खिलाफ फैसला दे दिया, अब क्या करें? या बोर्ड के खिलाफ दे दिया तो बोर्ड क्या करे? बोथ ऑफ यू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर अ रेफरेंस टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को आप अप्रोच कर सकते हैं विद इन 90 डेज। अब 90 डेज हो गया है एपिलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन मिलने के 90 डेज के बाद एग्रीड पर्सन या एनी ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल कमिश्नर ऑथोराइज्ड बाय कमिश्नर वो हाई कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता है, बट दैट वुड बी बेस्ड ऑन स्टेटिंग अ क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट अराइज आउट ऑफ द डिसीजन। Statement to High Court referred to in subsection 1 shall set out the facts, determination of the decision of appellate tribunal and the question of law। ये फैक्ट थे केसेस के, ये डिसीजन आया और इसमें ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो डिस्प्यूटेड है। Where an application made under subsection 1 on an application made under subsection 1, High Court, if High Court is satisfied that a question of law arises out of the order, then High Court उसको admit कर लेगा केस को and it would proceed further into the hearing phase। Reference to the High Court under this section will be held by shall be held by a bench of not less than 2 judges of High Court in respect of the reference। The provisions of section 98 of Code of Civil Procedure 1908 जो है वो अप्लाई करेगा so far as may be notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force। So one of the things जो मैंने आपको पहले मेंशन की थी कि सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 98 जो है उसके तहत हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी। द हाई कोर्ट में अपॉन हियरिंग अ रेफरेंस अंडर दिस सेक्शन shall decide the question of law by reference and deliver judgment thereon, specifying the grounds जिस पे उन्होंने अपनी जजमेंट बेस की है। कोर्ट फिर एक कॉपी ऑफ जजमेंट जो है वो एपिलेट ट्रिब्यूनल को भेज देगा and the cost of any reference of the High Court shall be in the discretion of the court। कोर्ट बताएगा कि वो कॉस्ट किसने बेयर करनी है, आपने बेयर करनी है या वो एफपीआर बेयर करेगा। Notwithstanding that a reference has been made to the court, the tax shall be payable in accordance with the order of appellate tribunal। इंटरेस्टिंग चीज है कि जितनी देर तक आपने एपिलेट ट्रिब्यूनल में थे आपका मामला रुका हुआ था, एपिलेट ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दे दिया टैक्स आप जमा कराएं, फिर हाई कोर्ट में आप जाएं। हाई कोर्ट अगर आपके हक में फैसला देता है आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन टैक्स आपको जमा कराना पड़ेगा। Provided that if the amount of tax is reduced as a result of judgment in the reference by High Court and amount found refundable, High Court may on application by an additional commissioner within 30 days of receipt of judgment of High Court that he intends to seek leave to appeal to the Supreme Court, make an order authorizing the collector to postpone the refund। अगर एफपीआर जाके हाई कोर्ट को ये रिटर्न में दे दे कि वो अपील करना चाह रहे हैं तो हाई कोर्ट 30 डेज के लिए आपका रिफंड या रिबेट एक्ट को जो है पोस्टपोन कर देगा ताकि वो अपील कर दें। जब तक अंडर अपील होगा मैटर डिसाइड नहीं होगा आपको वो रिफंड वगैरह नहीं मिलेगा, तो एफपीआर फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, उतनी देर आपका टैक्स उनके पास महफूज पड़ा रहेगा। Where recovery of tax has been stayed by High Court by an order, such order shall cease to have effect on the expiration of a period of 6 months following the day on which it is made, unless the reference is decided or such order is withdrawn by the High Court earlier। अगर आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया किसी मैटर में कि आपसे रिकवरी नहीं हो सकती, तो स्टे की मुद्दत 6 महीने, अनलेस के वो डिसाइड हो जाए या हाई कोर्ट उसको विड्रॉ कर ले पहले ही।
मैक्सिमम 6 मंथ है। सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908 जो है, दैट ऑल्सो अप्लाइज टू एप्लीकेशन मेड टू हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1। Application under subsection 1 by a person other than additional commissioner authorized by commissioner जो है shall be accompanied by a fee of 100 rupees। FPR का भी अगर एडिशनल कमिश्नर के अलावा कोई और अपील फाइल करेगा तो 100 रुपए की फीस जमा कराएगा। Notwithstanding anything contained in any provision of the act where any reference or appeal were filed with the approval of commissioner by officer of lower rank than the commissioner and reference or appeal is pending before appellate forum or the court, such shall always be deemed to have been so filed by the commissioner। वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले बताया, अथॉरिटी कमिश्नर की और डीम यही होगा कि कमिश्नर ने उसको फाइल किया। बिफोर वी प्रोसीड ऑन टू 47A ADR, डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? मैं अहमद आपकी आंखें देखते हुए मुझे आइडिया हो जाता है कि हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। Okay, this is one question during the break session from Omer Zaheer Meer. He's asking, can the Inland Revenue Officer visit the taxpayer premises or computer servers, or can meet the customers during 40B exercise, or can take custody of computer equipment? Rest of the things, but normally they don't meet customers. Okay, another question, can the Inland Revenue Officer visit the tax? Okay, this is the same. Mohammed Asghar has asked, sir, in the media company news channel where the sales tax is withheld by customer whose ad is on air by media company, if customer is not providing us with tax challans which he was handling, what we have base documents to show to tax authorities that tax on our sales is submitted with them and we do not have any tax liability anymore? Your invoices, the invoices you received, the invoices you issued. But there is one interesting phenomena here you have to understand. इसको हमने सेक्शन 1 में कवर किया था। देखिए, the responsibility lies with you। आप जिस पार्टी से डील कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए वो शैडोई बिजनेस प्रैक्टिस तो नहीं कह रहा। अगर वो ये टैक्स जमा नहीं कराता तो एफपीआर उसको फॉलो करेगा, वो नहीं पकड़ा जाता तो आपके पीछे आएगा। नेक्स्ट, Usama Abdul Wahid Lakhani has asked, despite being registered in sales tax, can a company issue invoice without GST for goods supplied? Sometimes I force vendor to issue invoice without GST and they easily agree. Is it legal? And second question is, why companies not claim input on purchase of fixed assets? Illegal. Second, we'll cover in a bit. Tawseef Ahmed has asked, we used to submit sales tax every month and income tax return once in a year. My question is this, whether income return should be inclusive of all sales tax or excluding? Obviously, income tax में आपके सेक्शन है जहाँ पे आप मेंशन करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में जो आपने टैक्सेस पे की। Next. Muhammad Amin Rashid has asked, sir, as we know FPR does not have enough resources, so what are their criteria for it? अभी तो जी वो रैंडम ऑडिट करते हैं बैलेटिंग पे, बट अब उनको प्रपोजल ये जा रहे हैं कि बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स। लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं, रैंडम ऑडिट आमतौर पे उन्हीं पार्टीज के निकलते हैं जिनकी या तो डॉजी प्रैक्टिसेस रही हैं या वो लार्ज टैक्स पेयर हैं। अब ये बाय चांस ऐसा होता है, लेकिन एक प्रोपोर्शन स्मॉलर टैक्स पेयर की भी हर साल निकलती है। सो दे क्लेम इट्स अ रैंडम ऑडिट based on some factors which they keep confidential, because they say if we divulge that, then the taxpayer, in their opinion, would take actions to rectify that or evade that, should we put it that way. Next. Another question by him, what is de novo consideration? That the case is referred back. Abdullah Suleri has asked, 17% tax charge in restaurants is whether under provincial government or federal? Provincial. Next is from Mohammed Zuhair Chaudhry. I didn't know that I was a sales taxpayer. I didn't know that I was a sales taxpayer for the past 5 months. Can I follow quarterly regime and avoid penalties? This has been answered already. Yeah. And the other part of the question is, in case I'm currently selling kids' clothes and I'm not a manufacturer, why there is allowed 30, 60, 90 days to file an appeal in different stages?
That's the standard procedure that the law has laid out. Mohammed Hatif Sajadar has asked, what happens if you don't go for appeal in 30 or 60 days? Where applicable, can the authorities recover the tax? After that, the decision becomes binding and you have to follow it. Muzammil Shakir has asked, if a person won the case, the cost of the case will be refunded or not? Discretion of High Court. High Court can also award the case or the appellate tribunal or whichever forum you are referring to. And you can also specifically take the plea for the recovery of costs next. Sarmat Munir is saying, Sarma, your energy has been boosted too much after lunch break. Well done. Really appreciate you, sir. Can you please tell us what you had in lunch? No, that's a secret, but thank you very much. Agha Mushtaba is asking, is the due date for filing your return the same if the tax is paid electronically? Yeah. Mohammed Shahid Mughal is asking, in the case where we are just hang on. Your return goes electronically. You submit the CPR electronically, and there is at present no system to transfer it as such electronically from your online portal. It has to be submitted in the banks, or it has to be paid by way of the mode that Commissioner authorizes, maybe a check or demand draft, etc. Next. Mohammed Shahid Mughal is asking, in the case where we are marketing expenses to digital vendors such as Facebook, Google, and etc., they don't charge GST on invoice. However, in marketing vendors, we have to withhold the GST on crossing up. Kindly explain what should the company do? Okay. Ask me this question at 5 p.m. If we have time, then I'll answer this. It's a very specific question, and it would take a bit of time. But just to give you a hint, if you are making taxable supplies and not charging the relevant amount of tax, you are footing up the bill. Next. Mansoor Arif is asking, if the input tax provider is active taxpayer and later on he is suspected or not 100% active taxpayer, then will FBR call us to recover input tax from us if FBR unable to recover from him anyhow? I've said that repeatedly. Yes. Unfortunately, yes. Muhammad Kotwala is asking, what if some business has also given its records to customs for verification of imports, particularly in case of textile sector which has huge reliefs due to exporter? And in this case, can sales tax department have authority to access those records with customs for cross verification? Two things. First of all, businesses normally keep a copy. You'll have a copy. If for some reason a strange business which does not keep a copy for the management, कि आपने सारे रिकॉर्ड दे दिए, आपको कुछ पता ही नहीं, then you'll write so to the FPR in response to their notice that there is an inquiry going on with custom and the records have been handed to officers such and such in response to notice such and such dated such and such. Enclose the copy of the notice, the relevant documentation, and hand it over to me. Next. Sarosh Fatma is saying, amazing session courtesy ACCA. She was here with us a few moments ago. Oh yeah, thank you so much, Sarosh. It was good to have you here. Sarosh is not only part of ACC community but also part of ACC Pakistan team. So it was good to have you here. Sorry we couldn't have a bit of discussion. There were so many things going on. So hopefully I'll catch up with you next week. Thank you. Mohammed Tawseef is asking, can any registered person being a manufacturer of, say, confectionery items carry out any export transactions of textile or any other non-related business as a trader? Yes, you can. There is no limitation. You can simply update your record of sales tax registration, add yourself as a exporter, or if you are also want to manufacture of textile. There is no prohibition that if you are one, you cannot be other. You can be all those things. That's fine. Another part of his question, if yes, can they adjust the input tax of non-related business? Okay, if you are doing all the businesses under one umbrella, you are submitting, you have one sales tax registration number. You are submitting one return. It is taking account of everything. If you are registering separate businesses with separate sales tax registration number, then you are submitting separate returns. Next. Imran Khan is asking, please explain de novo once again.
5 p.m. now. Next. Abdullah Sulari is asking, do you teach tax somewhere? I teach text only for ACCA. I do conduct training sessions as a passion, as I mentioned in my introductory session. Some of them are on taxation, but they are on very complicated subjects at expert level. And beside that, finance, economics, different areas. So yeah, in my spare time, mostly on weekends. But as for such detailed session on taxation, they are something exclusively reserved for ACC as of now. Mansoor Arif is asking if we have proof that input provider was 100% active at the time of invoice or the sale, but so why authorities will recover from us later on if he is suspected. Any legal coverage for us in it? No. Last question, Muzammal Shakir is asking, foreigners have to face some consequences or not? Hang on. Regarding the legal coverage, it's a bit technical. I'll try to make it simpler for you. There are certain situations in which you can take pleas. If you can prove that the guy was registered when you made the transaction, you can refer to some constitutional provisions and can actually go in appeal and might actually be able to win that. So that's the only provision that's available to you to save yourself from that. And the last one, foreigners have to face some consequences or not? What consequences? If you mean the impact of taxation, sales tax, if a foreigner is conducting business in Pakistan or at the receiving end of the business, obviously they'll pay the tax. Sales tax is levied on goods and services which are sold and provided within Pakistan. No question. Yeah. Wow. So let's proceed further. Section 47A, ADR, Alternate Dispute Resolution. अच्छा आपने देखा कि अब 7 महीने लग जाते हैं इसमें कमिश्नर अपील के पास जाने में, फिर उसके बाद appellate tribunal can take as much time as they want, हाई कोर्ट में केसेस सालों चलते रहते हैं. तो ये एक सोच डेवलप हुई है कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है और it's often very costly. I don't know I should say that or not, but I'll just share with you. It's often said in Pakistan, a sad unfortunate truth, कि आपको पाकिस्तान में इंसाफ लेने के लिए खिज़र अलैहिस्सलाम की उम्र, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र और कानून का खजाना चाहिए. So keeping that practical norm in consideration, alternate dispute resolution lately काफी डिस्कशन में रही है. सेल्स टैक्स एक्ट में भी उसकी प्रोविजन रखी गई है कि ठीक है अगर आप इसको छोड़ के ऑल्टरनेट मैटर से आपका डिपार्टमेंट का डिसएग्रीमेंट हुआ है, आप बैठ जाएं बीच में कोई आपको एडजुडिकेट कर दें एक लेस फॉर्मल सेटिंग में और अगर आप कंसेंसस दोनों रीच कर जाएं तो वेल एंड गुड, आपके भी पैसे बचेंगे, टाइम बचेगा, डिपार्टमेंट की भी हेडेक कम होगी. सो लेट्स सी व्हाट दिस इज ऑल अबाउट. Notwithstanding any other provisions of this act or the rules made thereunder, any registered person aggrieved in connection with any dispute pertaining to कोई भी टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन किसी भी डिस्प्यूट के रिलेटेड जिससे वो एग्रीव्ड है वो एडीआर को कांटेक्ट कर सकता है. किन चीजों के लिए? द लायबिलिटी ऑफ टैक्स अगेंस्ट द रजिस्टर्ड पर्सन या एडमिसिबिलिटी ऑफ रिफंड्स एज द केस में भी, एक्सटेंड ऑफ वेवर ऑफ डिफॉल्ट सरचार्ज एंड पेनल्टी, द क्वांटम ऑफ इनपुट टैक्स एडमिसिबल in terms of subsection 3 of section 7, ये हमने पहले सेशन में कवर किया था. Relaxation of any procedural or technical irregularities and condonation of any prescribed time limitation या any other relief जो वो seek करना चाह रहे हो, they may apply to the board कि एक ऐसी कमेटी आप अपॉइंट करे जो हमारे इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे. But for the appointment of committee for the resolution of any hardship or dispute mentioned in detail in the application, which is under litigation in any court of law or an appellate authority, except in cases where first information reports, FIRs have been lodged under the act or criminal proceedings.
initiated or their interpretation of question of law having larger revenue impact in the opinion of FPR is involved may apply to FPR for the appointment of committee for the resolution of dispute and may be entertained under the provision of this section. क्या क्या है? बहुत सिंपल चीज है. कोई भी मामला है आप उसके लिए बोर्ड को लिख सकते हैं कि जी मैं एडीआर करना चाहता हूँ, अब कमेटी अपॉइंट करें. बोर्ड दो सिचुएशन के अलावा बाकी सब में कमेटी अपॉइंट कर देगा इस सेक्शन के तहत. वो दो सिचुएशन कैसी है? आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई है. एफआईआर नॉर्मली वहां लॉन्च होती है जब आपने कोई बड़ा सीरियस ऑफेंस किया, फ्रॉड किया है या कोई टैक्स ऑफिसर को असॉल्ट किया था उसकी ड्यूटीज से काम करने से रोकने के लिए. उसमें एडीआर नहीं होगा. दूसरी, अगर पॉइंट ऐसा है जिसपे एफपीआर समझता है कि इसकी बड़ी लार्जर इम्प्लीकेशन होनी है. फॉर एग्जांपल, हम आजकल जो केसेस कर रहे हैं उनमें एक केस है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है. वो केस है मिनिमम टैक्सेशन के ऊपर सेक्शन 1531. 1531B का इशू ये है, ये मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का बता रहा हूं. उसका इशू ये है कि उसमें एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग एसआरओज वगैरह सर्कुलर्स आए. इन शॉर्ट 2010 और 11 के लिए एफटीओ ने उसको मिनिमम डिक्लेयर कर दिया, 9, 12 और 13 के लिए नहीं है. अब डिपार्टमेंट इज ऑफ द व्यू के 9 से 13 तक के लिए. वी द प्रोफेशनल्स आर ऑफ द व्यू दिस इज नॉट राइट. तो अब उसमें हमने कमिश्नर अपील को अपील की, उसने डिपार्टमेंट की फेवर में किया. वी आर विद अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड देन वी माइट इवन गो टू द कोर्ट. अब अगर इस केस में हम एडीआर के लिए भी जाते हैं तो क्योंकि इसकी लार्जर रेवेन्यू इम्प्लीकेशन है विद रेफरेंस टू सेल्स टैक्स एक्ट, अगर ये सेल्स टैक्स एक्ट के हवाले से हो रहा होता तो फिर बोर्ड इस पे एडीआर नहीं बनाता. ठीक है, आपके खिलाफ एफआईआर कट गई है या इशू ऐसा है जिसकी लार्जर रेवेन्यू कंसिडरेशन है, बड़ा इंपैक्ट होना है, पॉलिसी मैटर बन सकता है, वहां पे एडीआर नहीं बनेगा. और एडीआर की एक रिक्वायरमेंट ये है कि मैटर आपका कोई अंडर हियरिंग हो या ऑलरेडी चल रहा हो. So the board, after examination of the application of the registered person, may appoint a committee within 30 days of your application being received by the board. अच्छा, कमेटी में कौन होगा? बोर्ड का ऑफिसर जिसका मिनिमम रैंक एडिशनल कमिश्नर का हो and 2% from the notified panel consisting of retired judges not below district and session judges. कम से कम दो लोग ऐसे हों जो या तो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस हो या above, या चार्टर्ड और कॉस्ट अकाउंटेंट्स हो या एडवोकेट्स हो या ट्रेड बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव हो या एसोसिएशंस के हो या कोई और रेप्यूटेबल टैक्स पेयर्स हो. एक कौन हो गया? एफपीआर का अपना बंदा और दो बंदे सुपोजिडली जो न्यूट्रल है. इन बंदों पर मुश्तमिल कमेटी जो है बोर्ड अंडर दिस सेक्शन विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिट ऑफ योर एप्लीकेशन बनाएगा, एक्सेप्ट फॉर द एक्सेप्शंस जो मैंने आपको डिस्कस कर दी. The committee constituted under subsection 2 shall examine the issue and may, if it deem fit, conduct inquiry, seek expert opinion, direct any officer of Inland Revenue or any other person to conduct an audit and shall make recommendation within 90 days of its constitution in respect of the dispute. So जी कमेटी के पास इख्तियार है वो इशू देखे, ऑडिट कराना कराए, जो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए ले ले, एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए ले ले, लेकिन 90 डेज में उसने अपनी फाइंडिंग्स दे. अगर कमेटी इस पीरियड में फाइंडिंग्स नहीं दे सके तो बोर्ड कमेटी को डिसॉल्व करके नई कमेटी बना देगा जिसने मैटर एक फर्दर 90 डेज में डिसाइड करना है. अगर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड डिस्प्यूट अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ तो फिर मैटर को एप्रोप्रिएट एपेलेट फॉरम पे ले जाया जाएगा या जो भी एप्रोप्रिएट फॉरम है जहां पे प्रोसीडिंग्स हो रही है. The board may, on the recommendation of the committee, pass such order as it may deem appropriate within 45 days of the receipt of recommendation of the committee findings. So committee की जो findings हैं उनकी basis पे board 45 दिन के अंदर relevant order pass कर सकता है. Notwithstanding anything contained in subsection 4 or under subsection 4, the chairman may, on the application of an aggrieved person for reasons to be recorded in writing and on being satisfied that there is an error in order or decision, pass such an order as may be deemed just and equitable. ठीक है, चेयरमैन जो है उसको आप डायरेक्टली भी राइट कर सकते हैं and they have the authority to pass the relevant order. The registered person may make payment of sales tax and other duties and taxes as determined by board
etc., and such order of the board shall be submitted before the forum tribunal or court when the matter is sub judice for consideration of order as deemed appropriate. The board may by notification. Okay, plain simple वही चीज है जो हमने कवर की है. बाकी फॉर्मल टर्मिनोलॉजी है, बोर्ड के पास अथॉरिटी है, वो इंडिविजुअल एप्लीकेशन पे भी डिसाइड कर सकता है, वो आपको अलग से नोटिस पे इशू कर सकता है, ऑफिशियल गैजेट में रूल्स चेंज भी कर सकता है, एडिशनल डिटेल रूल्स भी लेड आउट कर सकता है. चैप्टर 9 रिकवरी ऑफ एरियर्स. ठीक है जी, टैक्स पे नहीं किया, अब आप क्या करेंगे? हम ऐसा करते हैं, हम ये रिकवरी ऑफ एरियर्स चैप्टर 9 जो है सेक्शन 48 इसको कवर करके हम फिर एक क्विकली जो है क्वेश्चन आंसर्स की एक ब्रेक ले लेंगे एंड देन विल सी इट फ्रॉम देयर. या पहले ले लें, कितने क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके पास? तो ठीक है, वी विल फिनिश दिस फर्स्ट. रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ टैक्स subject to subsection 1A where any amount of tax is due from any person. किसी भी शख्स ने किसी भी अमाउंट की देनी हो टैक्स की, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर में डिडक्ट द अमाउंट. अच्छा, ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा तवज्जो दीजिएगा. आप खुदा न खास्ता डेथ हो गई है, इनहेरिटेंस से निकाल सकते हैं, बैंकक्रप्ट हो गया है तो लिक्विडेटर को फर्स्ट चार्ज जो है टैक्सेशन का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मीन इन शॉर्ट के फर्स्ट जो राइट है वो टैक्सेशन अथॉरिटीज को दिया गया है ऑन योर प्रॉपर्टीज. डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम एनी मनी ओइंग टू पर्सन फ्रॉम whom such amount is recoverable and which may be at the disposal or in the control of such officer or any officer of income tax, custom or central excise department. इनके पास आपका कोई रिफंड पड़ा है, कुछ भी है, उसमें से डिडक्ट हो जाएगा. Required by notice in writing any person who holds or may subsequently hold any money for or on account of the person from whom the tax. आपके जो डेटर्स हैं उनको डायरेक्ट लिख के कहेंगे ये पैसा हमें दें. ठीक है, लीगली एक्सेप्टेबल होगा, कानून के तहत कर रहे हैं, उन्होंने आपका खाता क्लियर कर दिया टैक्स अथॉरिटी को आपकी टैक्स लायबिलिटी पे करके. स्टॉप रिमूवल ऑफ एनी गुड्स फ्रॉम द बिजनेस प्रीमिसेस ऑफ सच पर्सन टिल सच टाइम द टैक्स इज पेड इन और रिकवर्ड इन फुल. फैक्ट्री सील हो गई, कोई गुड नहीं जा सकते जब तक आप टैक्स पूरा पे नहीं करेंगे. Required by a notice in writing any person to stop clearance of imported good or manufactured goods or attached bank account. Relevant authorities को लिख सकते हैं, आपको लिख सकते हैं, क्लियरेंस रुकवा सकते हैं आपके सामान की, आपके जो बैंक अकाउंट है उनको अटैच कर सकते हैं. अटैच का मतलब क्या? फ्रीज हो गए, जितना पैसा पहले टैक्स अथॉरिटीज को मिलेगा, टैक्स बिल क्लियर होगा तो आगे कुछ होगा, उसमें और कोई ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकेंगे, पैसा डाल सकेंगे, निकाल नहीं सकेंगे. Seal the business premises till such time the amount of tax is paid or recovered in full. This is a worse form of C. C में तो सिर्फ स्टॉक को आने जाने से रोका था, यहाँ पे पूरे बिजनेस प्रीमिसेस रिसील कर दिए. जब तक आप टैक्स पे नहीं करते आप काम ही नहीं कर सकते. Attach and sell or sell without attachment any movable or immovable property of the registered person from which the tax is due, including your stock. Recover such amount by attachment and sale of any movable or immovable property of the guarantor. सिर्फ आपकी नहीं, जिसने गारंटी की थी उसकी, पर्सन, कंपनी, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर गारंटर और एनी अदर पर्सन, कंपनी, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेल्स टू मेक पेमेंट अंडर सच गारंटी बॉन्ड और इंस्ट्रूमेंट. अगर किसी ने आपकी ये लाइबिलिटी गारंटी की हुई है तो दे आर ऑल्सो लायबल टू दीज प्रोविजंस. इफ एनी एरियर्स ऑफ टैक्स डिफॉल्ट चार्ज पेनल्टी और एनी अदर अमाउंट विच इज adjudged or payable by any person and which cannot be recovered in the manner prescribed above, the board or any officer authorized by the board may write off the arrears in manner as may be prescribed by the board. यहाँ पे बिल्कुल ही रिकवरेबल नहीं, बोर्ड अगर सेटिस्फाई है उसमें तो फिर ड्यू प्रोसेस फॉलो करके उसको राइट ऑफ कर सकते हैं. फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स पेनल्टी और एनी अदर डिमांड रेज्ड अंडर दिस एक्ट, द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू शैल हैव द सेम पावर्स which under Code of Civil Procedure 1908 a civil court has for the purpose of recovery of an amount due under a decree. So कानूनी फैसले के तहत जो एक कोड, सिविल कोड को इख्तियार है, सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत वही इख्तियार एफपीआर के रेलिवेंट ऑफिशियल्स को है टैक्स को कवर करने के लिए अंडर दिस सेक्शन. अच्छा, आप देखें ये भी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमने आज तक अपने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर दोबारा नहीं बनाए, वही जो अंग्रेज हमें 1908 का बना के देखे गया उसी को रिवाइज कर करके हमने काम चलाया. तो बहरहाल जाहिर है हमारे लेजिस्लेटर बहुत बिजी होते हैं, बट अगर उनके पास टाइम हो तो ये चंद एरियाज हैं जहां पे फर्दर इंप्रूवमेंट की जा सकती है अलॉन्ग विद टैक्सेशन लॉज.
Next up is Chapter 10, which covers miscellaneous, and Section 49, which covers sales of taxable activity or transfer of ownership. But we'll first have questions from Ahmed sir, as promised. Ahmed, हमारी next break 3 है या 3:15 है? 3:15 लगता है. Okay. He is getting ready. So. Hashim Zahid is asking, what is the benefit to government by providing sales tax exemption to vendors? Hashim, a very good question. Normally, 2-3 इसके factors होते हैं. आपकी fiscal, economic policies, आपके budget documents में ये सारी चीजें पहले स्टडी हुई होती हैं. आपकी इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स होते हैं जिनको हुकूमत चाह रही होती है वो ग्रो करें. क्यों? इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है. वो ग्रो करेंगे तो बाकी सेक्टर ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रो करेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी बाकी सेक्टर्स से, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से हुकूमत को इजाफी टैक्स आएगा. तो इस तरह कुछ सेक्टर्स को ये इंसेंटिव हुकूमत इसलिए देती है कि इन देयर ओपिनियन ओवरऑल आपके जीडीपी पे, आपकी इकोनॉमी पे और एज अ रिजल्ट आपके टैक्सेशन रेवेन्यूज पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है. आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. नेक्स्ट. Atif Thedi is asking, if any case goes to ADR, would the existing proceedings at court would stop or they will continue simultaneously? Atif Thedi sir, Atif, the way it works is कि ATR में आप पहले जाते हैं, बाद में. अगर आप ऑलरेडी कोर्ट में मौजूद है, ठीक है, ATR फॉर दोज जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है या नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दीज टर्मिनोलॉजीज, ATR इज एपेलेट ट्रिब्यूनल. ठीक है. A similar thing is alternate dispute resolution, which is ADR. अगर तो आप ADR का जिक्र कर रहे हैं तो जो मामला कोर्ट में है बिल्कुल वो ADR में जा सकता है. अगर आप एपेलेट ट्रिब्यूनल को रेफर कर रहे हैं तो नो, पहले मामला एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाता है, कोर्ट इज अ हायर फॉरम. हाँ, जो मामला चाहे एपेलेट ट्रिब्यूनल में हो चाहे कोर्ट में हो, उसको आप ADR में भेज सकते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. नेक्स्ट. Next is from Muhammad Hatif Sajjad. What if the recovery of tax is after the order, but the company intends to go for appeal? The commissioner cannot recover the tax from the company's refund. क्या नाम है उनका? Hatif Sajjad. अच्छा, हाफिज, द वे इट वर्क्स इज कि कमिश्नर जब आपको ऑर्डर देता है ना तो उसमें मेंशन भी होता है कि आप इसको अपील भी कर सकते हैं, ना भी मेंशन हो तो आप अपील कर सकते हैं. तो अगर तो आप अपील फाइल कर देते हैं ना तो यू हैव दैट टाइम पीरियड, आप कोर्ट में जाके स्टे ले सकते हैं कि जी मैं अपील फाइल कर दूं, तो आप इनको रोक दें कि ये अभी जो हमने पढ़ा कि 6 महीने तक स्टे वैलिड होता है, ये रिकवरी ना करें, तो फिर वो रिकवरी नहीं कर सकते. उस दौरान आप अपील फाइल कर देते हैं, अपील का डिसीजन हो जाता है. सो दैट्स हाउ इट practically work in reality. I hope that answers your question. Next. Mohammed Kotwala is asking, can we have any relief in sales tax payment in case on having brought forward losses or current year losses? हाँ, सेल्स टैक्स का आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है. हमने ये डिस्कस किया था कि इन आवर फर्स्ट सेशन ऑन दिस सीरीज, अगर आप उसको विद इन दैट प्रिस्क्राइब पीरियड कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो एडजस्टमेंट हो जाती है. दैट्स फाइन. Next is from Atif Thedi. He is asking, what are the legal formalities that needs to be fulfilled before attachment of bank account? Sorry, Atif there are sir, few sections. That's okay. You are on fire today. Maybe I should charge you some consultation fee. No, that was on a lighter note. You can thank ACCA for that, so you can have all your questions answered. The question was the legal formalities for attachment of account, that they have given you the appropriate opportunity to respond. आपको notice, show cause notice, reminder सर्व हो गए हैं, आपने उसको respond नहीं किया या adequately respond नहीं किया, relevant proceedings complete हो गई है, then they can proceed to disattachment. Unfortunately in practice, especially ये अब जो पीरियड आ रहा है मार्च ऑनवर्ड, क्योंकि टारगेट भी करने होते हैं, जून के बजट के IMF का प्रेशर भी होता है, तो इन प्रैक्टिस नाउ दिस इज समथिंग, अब आप लोग सारे मेरे PR से दुश्मनी ही कराओगे, प्रैक्टिकली वो इनमें से कुछ चीजें स्किप कर देते हैं. सो अगर आप प्रूव कर सकें कि उन्होंने स्किप की है, देन इट बिकम्स इलेजिटिमेट एंड यू आर एबल टू गेट रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट्स. He is saying thanks for the appreciation. You are welcome. Mohammed Yasser Iqbal is asking, in recovery of area tax department strictly take action, will listen tax filers' reason.
I think he wants to ask that in case of the recovery of tax arrears, will the tax department take stringent action or listen to taxpayers' reason? You are never condemned unheard, so you are given a notice and have the ability to give your reason. But what reason would you give? I did not pay your tax because I went on holiday, or because I used that to buy a new car, or what? I mean, what kind of reason you can possibly give them? The only thing is, okay, sorry, we didn't pay, we are ready to pay now. Unless obviously you are planning to dispute the claim, you are saying that this is not applicable to me. This is not the tax due by me. Imran Khan is asking, recently rice producers are trying to classify rice as zero-rated supplies. Is there any statutory procedure in place through which any industry can apply for such matters? We'll be covering that maybe in the last session today, or most likely in the next session, inshallah, next Saturday on this sales tax act. Last question from Muhammad Kotwala. He's asking, if a decision is made by ADR and any of party is not agreed on it, then can they go to Commissioner Appeal or High Court, or will ADR decision will be considered as final? Okay, पहले तो आप ADR का concept ले लें. ADR है एक alternate dispute resolution. आपका dispute resolve कर रहे हैं. The dispute resolution is not binding unless both parties are satisfied. आपको बांध नहीं किया, ठीक है. लीगल फैसले में भी आपके पास अपील का राइट है. तो यहां भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप आगे जा सकते हैं. किस फॉरम पे जाएंगे ये डिपेंड करेगा कि किस लेवल पे आपका केस था जब आपने अपील की. कमिश्नर अपील के पास था, आप एडीआर में आए, एडीआर में सेटिस्फाई नहीं हुए, यू कैन गो एंड प्रोसीड. हाई कोर्ट में था, आप एडीआर में आए, नहीं हुआ, यू कैन गो एंड प्रोसीड. सो इन शॉर्ट, yes, if you or the FPR, either of the parties is not satisfied, they have this ability, they have this provision by law to go and follow the due process of law. I hope that answers the question. जी और कोई क्वेश्चन तो नहीं? Okay. This brings us to section 49, sales of taxable activity or transfer of ownership. क्या मतलब है इसका? हो सकता है आपने बिजनेस किसी को ट्रांसफर कर दिया या टैक्सेबल एक्टिविटीज खत्म हो गई, तो अब क्या होगा? ये चीज क्यों रेलेवेंट हो सकती है? सोचें. इसलिए रेलेवेंट हो सकती है कि हो सकता है आपके पास पहले का कुछ टैक्सेबल सप्लाई स्टॉक में पड़ी हो. लेट्स सी व्हाट इट एक्चुअली मींस. इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी और पार्ट देयर ऑफ, चाहे पूरी या कुछ हद तक टैक्सेबल एक्टिविटी आपने बंद कर दी है, सेल और ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप टू अ नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, द पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स और पार्ट देयर ऑफ बाय द रजिस्टर्ड पर्सन shall be deemed to be a taxable supply, and the registered person shall be required to account for and pay the tax on the taxable goods held by him. क्रिएटिव अकाउंटिंग नहीं होगी. लास्ट बैच पढ़ा हुआ है, हम तो अब रजिस्टर्ड ही नहीं रहे, फायदा ले लें, ऐसे नहीं होगा. वो जो लास्ट बैच पढ़ा हुआ है उसको प्रॉपरली अकाउंट करेंगे तो फिर आपकी जान छूटेगी. Provided that if the tax payable by such registered person remains unpaid, the amount of unpaid tax shall be the first charge on the assets of the business and shall be payable by the transferee of the business. अगर कोई unpaid tax है, तो जैसे हमने थ्रू आउट देखा और हमने ये कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स की सीरीज में भी पढ़ा था कि टैक्स हमेशा फर्स्ट चार्ज होता है अगेंस्ट द एसेट. तो सेम वुड बी द केस हियर. जिसको आपने बिजनेस ट्रांसफर किया है या सेल किया है, उस बेचारे को वो चार्ज पहले पे करना पड़ेगा. इन द केस ऑफ सेल और ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ अ टैक्सेबल एक्टिविटी और पार्ट देयरऑफ टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन एज एन ऑनगोइंग कंसर्न, sales tax chargeable on taxable goods or part thereof shall be accounted for and paid by the registered person to whom such sale is made or ownership is transferred. Business going concern basis पे ट्रांसफर किया है, ठीक है, जिसने लिया उसकी लाइबिलिटी है, क्लियर करें. कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, आप याद रखें, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी. ये सारी क्लॉजेज आपको याद रहेगी. टैक्समैन का पैसा लेके आप नहीं भाग सकते, टैक्स का पैसा आप लेके नहीं भाग सकते, लीगली नहीं आप भाग सकते. जहां भी आप जाएंगे उनका पहला राइट है, खत्म. सी कितना आसान बना दिया, इतने लंबे लंबे सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं.
49A लिक्विडेटर्स क्या होते हैं? क्विकली पढ़ा हुआ है एसीसी स्टडीज में, मिनिमम यहां पे एफिलिएट्स हैं, 20 सेकेंड्स है, क्विकली रिस्पॉन्ड करें, टाइम स्टार्ट्स नाउ। An answer, an effort is appreciated even if it's wrong. आपका नाम नहीं आएगा गलत आंसर पे। Those who administer the closure of business. Okay. 20. The company defaulters. Sorry? Selling the company. Selling the company. Okay. Individual who has the responsibility to liquidate the company. Very good. Precisely as you have studied in your ACC studies, liquidator is the person who is liquidating the business. डिफॉल्ट हुआ, बैंकरप्ट हुआ, जो भी हुआ उसको आप नीलाम करने लगे, जो बंदा उसकी नीलामी कर रहा है उसको सेटल कर रहा है, वो लिक्विडेटर है। सो एवरी पर्सन हियर एंड आफ्टर रेफर टू एज लिक्विडेटर हु इज, अब कानूनी तौर पे उन्होंने तमाम चीजें कवर कर दी हैं। लिक्विडेटर कौन कौन है? सेक्शन 49A ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक, ए जो कंपनी को लिक्विडेट कर रहा है, बी अगर किसी कोर्ट ने या आउट ऑफ कोर्ट कोई रिसीवर अपॉइंट किया है, सी किसी बैंकरप्ट पर्सन का ट्रस्टी या कोई मोर्गेज इन पोजेशन, इनमें से कोई भी जो है वो लिक्विडेटर ही ट्रीट होगा। सो द लिक्विडेटर विद इन 14 days ऑफ बीइंग अपॉइंटेड और टेकिंग पोजेशन ऑफ एन एसेट इन पाकिस्तान, विच एवर अकर फर्स्ट, जिस दिन वो पोजेशन लेता है एसेट की या उसके अपॉइंट होने के 14 दिन के अंदर, जो भी पहले हो, वो कमिश्नर को एक रिटन नोटिस देगा। कमिश्नर नोटिफाई होने के 3 महीने के अंदर लिक्विडेटर को इन राइटिंग बताएगा वो अमाउंट जो कि आउटस्टैंडिंग है अगेंस्ट सेल्स टैक्स और पेबल है उस शख्स की तरफ से जिसके एसेट्स लिक्विडेटर की पोजीशन में। लिक्विडेटर शैल नॉट विदाउट लीव ऑफ द कमिश्नर पार्ट विद एनी एसेट हेल्ड। सो जब तक कमिश्नर का जवाब नहीं आता और जब तक कमिश्नर की तरफ से उसको इजाजत नहीं मिलती, वो कोई एसेट डिस्पोज नहीं कर सकता। क्यों? पहला चार्ज जो है वो सेल्स टैक्स का क्लियर करना है, और अगर कोई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आप पढ़ चुके हैं, इनकम टैक्स का अगर चार्ज है, जो गवर्नमेंट का चार्ज है, टैक्स जो आउटस्टैंडिंग है, उसको पहले क्लियर करना है। A liquidator shall set aside out of the proceeds of sale of any asset by the liquidator the amount notified by the commissioner under subsection 2 or such amount as is subsequently agreed to by the commissioner। जो भी अमाउंट कमिश्नर ने कही है या निगोशिएशन के बाद एग्री की है, वो अमाउंट पहले लिक्विडेटर निकाल के अलग रखेगा, वो कमिश्नर को देगा, उसके बाद जो सिक्योर्ड लोन्स है या कोई और बोरोइंग्स को सेटल करेगा। Liquidator shall be liable to the extent of the amount set aside for the sales tax liability of the पर्सन हु ओन द एसेट। नहीं करता ये तो फिर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है लिक्विडेटर, उसको पकड़ा जाएगा। यही चीज 5 में क्लियर कर दिया। लिक्विडेटर शैल बी पर्सनली लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट रिकवर्ड रिक्वायर्ड टू बी सेट असाइड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ द टैक्स रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 इफ एंड टू द एक्सटेंट दैट द liquidator fails to comply with the requirements of this section। That is why liquidators take so much time and are so careful, क्योंकि अगर वो ये चीज नहीं करेंगे तो उनकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। एंड देयर इज नो पॉइंट, व्हाई वुड दे वांट टू टेक एनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू और समथिंग दैट मोस्ट लाइकली यू मेस्ड अप। Where the proceeds of sale of any asset are less than the amount notified by the commissioner। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि टोटल जो जायदाद थी या जो एसेट अभी डिस्पोज ऑफ की है, उससे जो अमाउंट रिकवर हुई है वो टैक्स की लायबिलिटी से कम है। अब लिक्विडेटर क्या करेगा? इन सच अ केस द एप्लीकेशन ऑफ सबसेक्शन 4 and 5 शैल बी लिमिटेड टू द प्रोसीड्स ऑफ सेल। कॉमन सेंस भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस भी है। जितने एसेट है वही देगा ना लिक्विडेटर। उसने ये गुनाह तो नहीं किया कि अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज कर रहा है, उसने तो टैक्स चोरी नहीं की, वो टैक्स से कंप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट चार्ज टैक्स का ले रहे हैं, उस चार्ज को वो सेव रख रहे हैं, पहले कमिश्नर को ड्यू प्रोसेस फॉलो करके राइटिंग परमिशन ले रहे हैं। तो जितनी अमाउंट वहां से रिकवर हुई है उस अमाउंट तक ही लिमिटेड होगा। लिक्विडेटर ने अपनी जेब से नहीं देना। हाँ, लिक्विडेटर वहां पे पर्सनली लायबल होगा अगर वो प्रोविजंस फॉलो नहीं करता। मिसाल के तौर पे अगर लिक्विडेटर डिस्पोज ऑफ करना शुरू कर देता है एसेट
अगर लिक्विडेटर टैक्स का चार्ज नहीं सेट असाइड करता, अगर लिक्विडेटर पहले कमिश्नर को इंटीमेट नहीं करता, अगर लिक्विडेटर कमिश्नर की परमिशन के बगैर डिस्पोज ऑफ कर देना शुरू कर देता है, इन केसेस में लिक्विडेटर लायबल होगा। लेकिन अगर लिक्विडेटर के पास एसेट्स ही लिमिटेड आए हैं पार्टी के जिनसे टैक्स रिकवरी पूरी नहीं हो रही, तो वो पर्सनली लायबल नहीं, जितनी रिकवरी हुई वो टैक्स डिपार्टमेंट को देगा, which in this case is FPR. This section shall have effect notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force. This is in addition to any other law which is in force at the moment. Okay, section 50, power to make rules. The board may by notification in the official gazette make rules for carrying out the purposes of this act, including rules for charging fee for processing of returns, claims and other documentation and preparation of copies thereof. बोर्ड के पास कंप्लीट अथॉरिटी है ऑफिशियल गैजेट में, जैसे थ्रू आउट हमारा पैटर्न रहा है डिफरेंट चैप्टर्स में। इस चैप्टर में भी बोर्ड को पावर दी गई है कि वो रूल्स बना सकता है और फीस सेट असाइड कर सकता है रेलिवेंट सर्विसेज की। Get your questions ready. We are going to take questions after this. All rules made under subsection 1 or any other provision of this act shall be collected, arranged and published along with general orders and departmental instructions and rulings, if any, at appropriate intervals and sold to public at reasonable prices. अब वो और भी बेहतर चीज कर देते हैं, वेबसाइट पे लगा देते हैं, आपको मुफ्त में मिल जाता है। So see, that's something good actually, right? Okay, we are gonna have some questions, then we are gonna take a quick 15 minutes break, and then we will come back and proceed with the last session of the day. So अब जो आपने अपने अपने सफ़ों पे सवाल लिखे हैं उन्हें निकालिए, जो आपके relevant questions हैं, please feel free to ask. First question is from Asim RF. He's asking, should a company pay sales tax in its What's the name? Asim RF. Asim RF. Asim, we have a very nice friend and in fact member of our taxation committee with a very similar name. So I just almost thought you were him. The question is? Okay. The question is, should a company pay sales tax in its prepayments? If the company has opted for the prepayment regime with the authorization from the commissioner or chief commissioner office, then of course. Next question is from Mohammed Shahid Mughal. He's asking if company consume the taxable goods but not regulated products. As per law, sales tax is payable as per the prescribed rate. What should be the tax base? The selling price to distributors or MRP? Okay, that's an interesting question. It's something that your business will decide. As far as the selling price is concerned, that would include your cost, your profit margin, and the sales tax that you have already paid. All these things would be added together, and that is the base on which you'll add on the sales tax as per whichever category you are dealing in. Next. Muhammad Rizwan Jabir Sukhera is asking, what is the procedure for sales tax deregistration? Why you want to get deregistered? There is a procedure. We'll be covering that. Anyway, I'll tell you that briefly. You can get deregistered if you are ceasing to continue your business operations or you are seizing the taxable supplies. In such a case, you write an application to the relevant commissioner, whoever RTO you are dealing, whoever RTO and office is dealing your case, and with that application, you'll submit the proof. They'll most likely call you in for a personal hearing. If after that they are satisfied, they'll allow the deregistration. I hope that answers. Muhammad Sharik Shakir is asking why ADR option is available, whether it is meant to deal with parties to go for win-lose situation to avoid long hearings of ADR and High Court. Why ADR is available? To give you an alternate option, one additional option. Underlying aim, Sharik, it's a good question actually. As I've told you, the legal procedures and processes are very cumbersome, unfortunately, in Pakistan. Extremely time-consuming and very costly. Now it goes both ways. कई दफा होता है कि डिपार्टमेंट का जेन्युइन क्लेम होता है, लेकिन लोग स्टे ले लेके कई साल गुजार देते हैं.
और कई दफा ऐसा होता है टैक्स पेयर का जेन्युइन क्लेम होता है, लेकिन जैसा आपने अभी स्टडी किया कि सिर्फ जो पहला टियर है कमिश्नर अपील, वहां पे ही अप टू 8 मंथ्स लग जाते हैं। और वो सूरत हाल में है कि अगर कोई ऑफिसर सीट पे मौजूद है, इट्स प्रिटी नॉर्मल कि 2-3 महीने तो ऑफिसर आया ही नहीं सीट पे, तो साल 1.5 साल कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ये फर्स्ट लेवल। उसके बाद आपके एपेलेट ट्रिब्यूनल है, फिर उसके बाद आप कोर्ट में जा रहे हैं। तो जस्ट थिंक ऑफ द एक्सपेंस एंड द टाइम दैट इज इन्वॉल्व। कंसिडरिंग दैट पूरी दुनिया में एडीआर जो है डेवलप हो रहा है, पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में भी हुआ है, इसको ज्यादा फोकस मिला है जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उनके टेन्योर में। तो सेल्स टैक्स एक्ट में ये प्रोविजन मौजूद है। बेसिकली टैक्स पेयर डिपार्टमेंट दोनों को ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि ऐसे केसेस जो बहुत ज्यादा सीरियस इस लिहाज से नहीं कि उसमें कोई ऐसा ऑफेंस नहीं हुआ कि आईआर कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उसमें कट गई हो, या जो पॉलिसी मैटर को इम्पैक्ट कर रहे हो, अगर इस तरह के मैटर्स नहीं है तो इन दैट केस आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है। आप भी बैठ जाए, डिपार्टमेंट भी बैठ जाए, बीच में डिपार्टमेंट का एक बंदा हो गया, 2 न्यूट्रल लोग हो गए, मिल बैठ के डिसाइड कर लें। अगर आपको वो चीज समझ आती है, डिपार्टमेंट को आती है, आपका टाइम भी बच गया, कॉस्ट भी बच गई। नहीं आती तो वो बाकी ऑप्शंस तो आपके पास अवेलेबल ही है। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Next. Mohammed Sharik Shakil is asking whether government tax includes local taxes also. I don't get what you are trying to ask. We are focusing on sales tax. तो सेल्स टैक्स का हमने पहले सेशन में पढ़ा था कि पूरे एक्ट में जहां भी टैक्स को रेफर किया गया है, अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन हो जैसे कि इनकम टैक्स है या एफईडी एक्सेट्रा, इट मींस सेल्स टैक्स. So if you can elaborate, maybe I can guide you more. Next. Mirza Beg is asking, what is the process to request board for waiving surcharge? You have to specify कौन से सरचार्ज की आप बात कर रहे हो मिर्जा. प्रोसेस उसका यही होता है कि कमिश्नर के पास ये अथॉरिटी होती है. यू हैव टू लॉज अ रिक्वेस्ट विद द कमिश्नर. आप अपील कह सकते हो, एप्लीकेशन कह सकते हो. अलॉन्ग विद दैट आपको बैकिंग अप एविडेंस जिस भी बेसिस के ऊपर आप कर रहे हो. अब दैट वुड डिपेंड ऑन क्या आपका बिजनेस है, कौन सा सरचार्ज लेवी हुआ था, क्या कोई आपको पेनल्टी के सरचार्ज लेवी हुआ था, लेट फाइलिंग है, व्हाटएवर. डिपेंडिंग ऑन दैट आप वो अपनी अपील कमिश्नर को फाइल करोगे. यस, द कमिश्नर हैज द अथॉरिटी. इफ ही और शी इज सेटिस्फाइड दे कैन वेव इट ऑफ. नेक्स्ट. Hassan Rafaqat is asking, is there some criteria for who the liquidator should be? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दो चीजें समझ. सेल्स टैक्स एक्ट इसको गवर्न नहीं करता कि आपका लिक्विडेटर कौन होगा. सेल्स टैक्स एक्ट इसको गवर्न करता है कि जो भी इस लिक्विडेटर की डेफिनेशन में आ रहा है उसके पास जो भी एसेट्स आएंगे पहले वो कमिश्नर से चेक करेगा, जितनी उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है वो पे करेगा, फिर उसको लिक्विडेट करेगा. लिक्विडेटर जो है इनको सेपरेट रेगुलेटर्स गवर्न करते हैं एंड दिस इज नॉट आवर परव्यू टुडे. सेल्स टैक्स एक्ट लिक्विडेटर्स को गवर्न नहीं करता. सेक्शन 49 जो हमने अब पढ़ा है वो लिक्विडेटर्स को सिर्फ इस हद तक गवर्न करता है कि उनके पास जो एसेट्स हैं उनके ऊपर पहला चार्ज जो है वो टैक्सेशन का है एंड दे हैव टू गेट इन टच विद द कमिश्नर बिफोर प्रोसीडिंग ऑन टू लिक्विडेशन. आई होप दैट आंसर्स. नेक्स्ट. Next, we have a long suggestion from Samad Munir. He's saying, Dear Sir Harun Ahmed, I personally request you to please arrange physically classes for Pakistan tax, including income and sales tax, for ACCA members and affiliates, besides through webinar, etc. I shall be very thankful and appreciate. The classes should be with proper course outline and time period with proper practice as well. Thank you. Okay, interesting suggestion. माशाल्लाह अरुण इज अ वेरी रिसेप्टिव गाय. आप उनको ईमेल करें, आई एम श्योर वो आपको रिस्पॉन्ड भी करेंगे, इसको कंसिडर भी करेंगे. विल आल्सो पास दैट ऑन. इसका मैं वैसे आपसे शेयर कर देता हूँ. दिस आइडिया हैज बीन डिस्कस्ड अ फ्यू टाइम्स एंड दैट्स व्हाई के ये सीपीडी सेशन फॉर द टाइम बीइंग किए जा रहे हैं आपकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए. आपको बेसिक लॉ, देन मूविंग ऑन टू रूल्स, प्रोसीजर्स एक्सेट्रा, ऑल द वे टू द स्किल लेवल वेयर यू कैन बी डेल्ट एज एन एक्सपर्ट, बट दैट वुड टेक सम टाइम. क्लासेस जो है एज सच एसीसीए का परव्यू नहीं है, बट अगेन दैट इज वन ओपिनियन जो हमें मिलता रहा है. आप मेंबर हैं, एसोसिएशन आपकी है, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है. डू शूट एन ईमेल टू हारून साहब एंड आई एम श्योर ही विल कंसीडर एंड गेट बैक टू यू. नेक्स्ट. Next question is from Imran Khan. He's asking how the liquidator
prioritize the claims, that is, how would he rate the sales tax, whether it would be on the top of list of claims by shareholders would take the top slice? Top taxes, sales tax, income tax, etc. After paying the taxes, whatever is left would then be distributed amongst us. Others, हमारा आज का टॉपिक नहीं, लेकिन मैं क्विकली बता दे दूं, जो आपकी सिक्योर्ड लाइबिलिटीज हैं, टैक्सेशन के बाद पहला चार्ज उनका है, अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज का सेकंड चार्ज है, फिर उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो शेयर होल्डर्स के. आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. नेक्स्ट. Next is from Hashim Barak. He's asking, a company in Islamabad providing IT services get monthly reimbursement of expenses from US headquarters. These expenses are based on an estimate. Are these reimbursements of expenses It will fall under the Islamabad Capital Territory Act. Unfortunately, that's not the topic today. But you can shoot later on. Next. Muhammad Kotwala is asking, when are input taxes deferred on grounds of non-filing of returns by seller? What is remedy available to us for recovery of refund? You can't as such defer it. अगर वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, आप रिस्पॉन्सिबल. सिंपल. आप क्या कर सकते हो, आपकी उसकी बिजनेस डीलिंग है, मे बी उसकी पेमेंट रोक लो, वट एवर. बट अगेन इट्स अ बैलेंस, इट्स अ ट्रेड ऑफ. आपने अपने बिजनेस पे भी उसका इम्पैक्ट देखना है. एज फार एज सेल्स टैक्स एक्ट इज कंसर्न, वो नहीं पे कर रहा तो आप पे करोगे. दैट्स इट. Next is from Sakib Ali Rashdi. If we make non-taxable supplies but we purchase from the registered persons and they charge us sales tax, then whether they would benefit to be registered for us and could we claim our input tax? अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप आउटपुट जो सेल कर रहे हैं उस पर सेल्स टैक्स लग ही नहीं रहा. ठीक है, तो आपके पास कोई सेल्स टैक्स आ नहीं रहा जो आपने हुकूमत को देना है, लेकिन अपनी परचेजेस पे आप पे कर रहे हो. इनपुट आपकी जो है उसके ऊपर आप पे कर रहे हो, वो आपको वापस मिलना है. ठीक है, तो यस, देयर इज अ बेनिफिट, देयर इज अ रिफंड ड्यू टू यू. I hope that answers the question. Next is from another question from Hashim Barar. If I book a revenue in books of Pakistan branch, the US IT company, but the receivable is then adjusted against the payable to headquarter account, is this revenue which exists only in books is chargeable to sales tax? Repeat the question. If I book a revenue in books of Pakistan branch, the US IT company, but the receivable is then adjusted against the payable to headquarter account, is this revenue which exists only in books is chargeable to sales tax? Okay, this is intra-company transaction between you and head office of the service delivery. If the delivery is happening in Pakistan, then yes, sales tax would be chargeable. If the delivery is happening outside Pakistan, that would come under the purview of export services. And from what you are defining, that would either be zero rated or exempt. Most likely zero rated. Next. Muhammad Muhsin is asking, if distributor is selling goods to retailer, then would he charge sales tax on MRP or on price on which he is selling goods? We'll cover that in the next session. Hold on to that. Next. Samad Munir is saying, and please request Mr. Umar to conduct these classes, the classes which you discussed. That's really nice of you, Sarman. I would be more than happy to do that. I'm always there for you guys and for my alma mater. In fact, ACC is the priority. Different institutes and all our corporate sector, public sector, very valuable to us. But whenever there is a conflict, I always give preference to ACCA. So if ACCA decides to conduct such a class or classes, I would be more than happy to be there. But that is a decision that ACCA team will have to take. So thanks for the kind compliment, but please send the suggestion first to our own self. Next. Waqar Ahmed is asking how service companies can claim input taxes on services. Service companies are basically providing services and they fall under the purview of the provincial authorities, which will be covering after finishing up the Sales Tax Act, the last of which would be next week. So we'll be covering that later on. Hold on to that. Anyway, just if to give you an idea, and then I'll request again to focus on relevant questions, is they can claim the relevant refunds or an adjustment depending on which provincial authorities purview they fall within. Next. Mohammed Kotwala is asking, if we receive any notice for hearing in front of Commissioner Inland,
What if such letter received just before hearing date and leaving no preparation time or even after hearing date? What should be our course of action to deal with? Send a letter of adjournment. A letter requesting adjournment, citing you have just received it and need time for preparation. They normally allow adjournment. No big deal. I hope that helps. Next. Next is from Omer Zaheer. Non-for-profit organizations have to pay sales tax or not? Non-for-profit are not doing any business. Sales tax is levied on the sale of goods and services. That is a business activity. Next is from Osama Abdul Wahid Lakhani. If the company is liquidate and company have sales tax refund, so how settle it? Okay, Lakhani sir, you need the answer in theory or practice. In theory, you'll get your refund back, you'll pay off your creditors, everyone is happy. In practice, your refund would remain outstanding and the liquidator would have to do with the assets he have. And yeah, one thing about the NGOs. Look, sales tax का ये होता है कि जो end user है वो पेयर करता है. तो अगर NGO कोई ऐसी चीजें खरीद रही है जिसमें वो end user है, तो वो sales tax तो पे कर रही होगी, लेकिन वो उसका business की तरह refund claim वगैरह वो नहीं करेगी. Next. Mirza Bey, if client is deducting sales tax, then what evidence should we take? Just their own payment voucher or CPR, etc. देखें, जो आपको क्लाइंट नॉर्मली उस सूरत हाल में डिडक्ट करता है, आप जब सेल कर रहे हो तो आपके पास आ रहा होता है. क्लाइंट दो सिनेरियोज में डिडक्ट करते हैं. अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है एक, और दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आप टैक्स के लिए रजिस्टर्ड नहीं है या आप ब्लैक लिस्टेड या सस्पेंडेड है. दूसरे केस में तो यू डोंट हैव मच टू डू, और पहले केस में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो आपको रूल 12 का सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं, वो आपको लेटर भी इशू करते हैं, और एट द एंड अगर आप उनसे टाइमली मांगते रहें तो वो आपको वाउचर्स और सीपीआर्स वगैरह जो है उनकी कॉपीज भी देते हैं. सो हैव दैट रिकॉर्ड फॉर योर पर्पसेस जस्ट इन केस एन ऑडिट इज कॉल्ड फॉर. नेक्स्ट. Umar Farooq is saying thanks to Sir Umar and ECC team for such wonderful training session. Well, Umar, first of all, I really love your name for obvious reasons. Thanks for the compliment, and I hope to see you in the next session next Saturday. Osama Abdul Wahid Lakhani is asking if the company is sales tax registered, so it's mandatory for the company to charge sales tax export sales. It is mandatory to charge sales tax on taxable supplies. Most of the export will fall under zero rated category. So you have to be careful. We'll be covering these schedules, the schedules in the next session. उसको आपने देखना है कि आपकी taxable activity किस category में fall कर रही है. Next. The last three questions. Yes, इतने ही हैं. इसके बाद अगर कोई आएंगे तो वो फिर after in next break. Muzammil Shakir is asking, receivable and payable tax should be paid separately or net of this. They are netted off. आपकी जो आप सेल्स टैक्स रिटर्न देखना, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको भी सेशन करें. ये सारा उसमें आता है, ठीक है. जैसे इनकम टैक्स रिटर्न है ना, कॉन्सेप्ट वही है, सारी चीज आती है. इनपुट आउटपुट का फर्क है ना सेल्स टैक्स में. तो जो नेट अमाउंट आपने गवर्नमेंट को पे करनी है या आपको रिफंड है, वो एज पर द लेजिस्लेशन एडजस्टमेंट करके आपके पास फिगर आ जाती है. Last two are from Shayan Qureshi. If supplier is not paying sales tax and customer is withholding and depositing its due share in government kitty, is the customer still liable to the amount not paid by customer on account of sales tax? And the second one is, if not-for-profit organization is getting sales tax services, will it need to be paid or it can get exemption? Okay, for the first question, unfortunately, अगर आपका कस्टमर पे नहीं कर रहा, वैसे ये होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मली मैंने आपको बताया दो ही सिनेरियोज हैं. मोस्टली पाकिस्तान में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ही हैं जो विदहेल्ड करते हैं बीइंग ऑन द कस्टमर साइड, बिकॉज देयर आर पर्टिकुलर लेजिस्लेशंस दैट गवर्न देम. तो वो तो जमा करा रहे होते हैं, बट जस्ट टेक सम एविडेंस फ्रॉम देम. सेकेंडली, आप ब्लैक लिस्टेड हैं, तो उस सूरत हाल में उसने आपको कोई फायदा तो पहुंचाना नहीं. फर्स्ट गेट योर स्टेटस सॉर्टेड. बट अगेन, फॉर थ्योरी पर्पसेस, हाइपोथेटिकली आपने जो सिनेरियो क्रिएट की है, अगर ये सिनेरियो हो जाए और कस्टमर पे ना करे, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल. दूसरा एनजीओ वाला क्या था? If non-for-profit organization is getting sales tax services, will it needs to be paid or it? ये मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया कि देखें, एनपीओ और एनजीओ इज नॉट अ बिजनेस. दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट. दे आर an activity which is not for profit.
एज द नेम सजेस्ट, तो उन पे उसका वो टैक्सेबल सप्लाईज तो नहीं वो कर रहे। हाउएवर सेल्स टैक्स का इंसिडेंस क्या है, लाइक वीएटी अल्टीमेट या मैक्सिमम ऑनर्स जो है एंड यूजर पे आता है। तो एज एंड यूजर लेट से वो कुर्सियां खरीद के लाते हैं, फर्नीचर लाते हैं, तो उस पर तो वो सेल्स टैक्स पे करेंगे ना, लेकिन उसका वो रिफंड नहीं क्लेम कर सकते। दैट्स द थिंग, दैट्स द कॉन्सेप्ट। आई होप इट क्लैरिफाइड, आपको क्लियर हो गया हो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको लिख लीजिए। इंशाल्लाह वापस आने के बाद हम थोड़ा अपना ये कंप्लीट करेंगे, एंड आई थिंक वील हैव अ गुड 20-30 मिनट्स में भी क्वेश्चन सेशन फाइनल, अगर हम बीच में ब्रेक ना लें। So right now it's almost 3:22 in ACCS clock. We'll take 15 minutes quick tea break. आप जाइए, फ्रेश हो जाए, नमाज पढ़नी है, आप पढ़ाइए। तो I'll see you all at 3:37 sharp. Thank you very much. Stay connected.
Assalamu alaikum, hello and welcome back to you all again. I hope चाय की ब्रेक के बाद नमाज पढ़ के आप लोग सारे फ्रेश हो गए होंगे. Let's continue from where we left. लास्ट से हमारा अब सेशन है आज का. इसमें सेक्शन 50 से 58 तक इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे and then we'll proceed on to the questions that we may have. In fact, दरमियान में भी हम एक आधी क्वेश्चन ब्रेक ले लेंगे ताकि you'll stay on top of things. जाने से पहले हमने सेक्शन 50 स्टार्ट किया था. सेक्शन 50 में हमने देख लिया कि बोर्ड हैज द पावर टू मेक रूल्स. 50A जो है वो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स को कवर कर रहा है. द बोर्ड में प्रिस्क्राइब द यूज ऑफ computerized systems for carrying out the purposes of this act, including the receipt of application for registration, returns, and such other declaration or information required to be provided under this act, and the rules made thereunder from such date and for such registered persons or classes of person as the board may by notification in the official gazette specify. Basically, times are changing, technology is coming into play. उसकी provision रखी हुई है कि ये जितने प्रोसेसेस रिटर्न रजिस्ट्रेशन वगैरह के हैं इन सबको बोर्ड अपने गैजेट में नोटिफाई करके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के थ्रू रिसीव कर सकता है, जो प्रैक्टिकली एट द मोमेंट हो रहा है. रजिस्ट्रेशन आपकी ऑनलाइन आप चले जाते हैं, फिर एफक्यू जाके बाकी डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं, रिटर्न आपकी ऑनलाइन सबमिट हो रही है, सीपीआर चलान ऑनलाइन बन रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स. The board may make rules for regulating the conduct and transaction of business in relation to the submission of returns or other information to the board by the persons required to transmit or receive any information through the computerized system, including matters such as grant of authorization, suspension, cancellation of authorization, and for security of the information transmitted or received through the computerized system. So bank board, not bank, board जो है इन प्रोसेसेस को कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस या ऑनलाइन प्रोसेसेस को डिफरेंट रूल्स और प्रोसीजर्स बनाएगा और बना सकता है. Unless otherwise proved, the information received in the computerized system from or on behalf of any registered person shall for all official and legal purposes be deemed to have been furnished by and received from such registered person. जिसका लॉगिन पासवर्ड है उसके लॉगिन पासवर्ड से आई है, अनलेस कॉन्ट्रेरी प्रूव हो सके उसी की तरफ से भेजी हुई कंसिडर होगी. द बिजनेस इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू कंप्यूटराइज्ड सिस्टम shall be confidential to be used only by officials for official and legal purposes, and no unauthorized person shall claim for any access to such information. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली वेस्ट में इसके ऊपर बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है. पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट टू प्राइवेसी देता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन की प्रोटेक्शन की बात करता है. वही प्रिंसिपल यहाँ पे इम्बेड किया गया है कि ये ऑनलाइन जितनी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, हमसे मुराद एफपीआर, इस तरह बाकी टैक्सेशन अथॉरिटीज का भी है, एज पर लॉ वो सिर्फ ऑफिशियल और लीगल पर्पसेस के लिए ऑथोराइज लोग एक्सेस कर सकते हैं. आपको मिसाल दे दूं, सेल्स टैक्स की हम बात कर रहे हैं. सेल्स टैक्स की जो आपकी ये ब्लैक लिस्टिंग सस्पेंशन होती है, जब इसकी रिमूवल होती है वो डायरेक्टली अल्टीमेटली चीफ कमिश्नर के लेवल पे होती है. चीफ कमिश्नर का लॉगिन पासवर्ड है जिससे वो कराते हैं इसको. सो इस लेवल की सिक्योरिटी सिस्टम में इम्बेड करने की कोशिश की गई है. इन थ्योरी तो ये है कि चीफ कमिश्नर खुद करे, लेकिन प्रैक्टिकली चीफ कमिश्नर का और बहुत काम होते हैं, तो किसी को असाइन कर देते हैं कि आप बैठ के इसको करो. सो वन ऑफ दोज एरिया जहां पे थ्योरी और प्रैक्टिस में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन बहरहाल डेलीगेशन ऑफ पावर है, जिसको बिठाते हैं वो भी एक ऑथराइज बंदा होता है जो ट्रस्टवर्दी होता है. 50B, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रूटनी एंड इंटीमेशन. The board may implement a computerized system for the purpose of automated scrutiny, analysis, and cross-matching of returns and other available data relating to registered persons, and to electronically send intimations to such registered persons about any issue detected by the system. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग वगैरह शुरू हो गई, सारा कुछ हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रूटनी और इंटीमेशन भी तो करनी है. तो बोर्ड ऑटोमेटेड स्क्रूटनी एनालिसिस, क्रॉस मैचिंग
एक्सेट्रा और इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न इंटीमेशन सेंड करने के लिए सिस्टम डिजाइन और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जो नया सिस्टम इनकम टैक्स के लिए आया था आईरिस का, और अल्टीमेट एम इनकी यही है कि सेल्स टैक्स को भी उसमें इम्बेड कर दिया जाए, उसमें आपके ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाते हैं जो बोर्ड की तरफ से आपको आए होते हैं। The intimation sent by the computerized system under subsection 1 shall be in the nature of an advice or advance notice aimed at allowing the registered person to clarify the issue, rectify any mistake, and take other corrective action before any legal or penal action is initiated. So subsection 2 again, ऑडियो अल्टम पल्टम नेचुरल जस्टिस का रूल है, अनहर्ड आप कॉन्डेम नहीं कर सकते। जो आपने नोटिस भेजना है वो एडवांस में होना चाहिए ताकि करेक्टिव एक्शन या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की अपॉर्चुनिटी टैक्स पेयर को मिले बिफोर यू टेक एनी पीनल एक्शन, यू बीइंग द टैक्स अथॉरिटीज। द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम shall be so implemented so as to keep record of the issues detected। आपने अपने कंप्यूटराइज सिस्टम को मेंटेन ऐसे करने पर्पस क्या है? एक आपका रिकॉर्ड सारा मेंटेन हो, आप देखिए कौन सी इंटीमेशन गई थी, कौन सी इंटीमेशन नहीं गई, नोटिस जो आपने भेजे थे कौन से नोटिस रिसीव हुए हैं, उनके ऊपर क्या उनका रिस्पॉन्सेज आपको आए हैं, क्या एक्शन लिया गया है, एंड देन ऑल दिस इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड टू द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू और द बोर्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। बोर्ड एज यूजुअल, जिस तरह ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी ऑलमोस्ट हर सेक्शन में है कि बोर्ड प्रोसीजर और स्पेसिफिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकता है और उनको अमेंड भी कर सकता है फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। बार ऑफ सूट्स, प्रोसिक्यूशन एंड अदर लीगल प्रोसीडिंग्स। ऑफिशियल कैपेसिटी में जो ऑफिशियल काम कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल को आप सू नहीं कर सकते, और उसके अगेंस्ट या फेडरल गवर्नमेंट या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो उसने गुड फेथ में ऑर्डर पास किया आप उसको सू नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई उसमें ऐसी चीज है जहां मैलाफाइडी है, मैल इंटेंशन है, ऑब्वियसली उसको आप सू कर सकते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन जिसने अपीलेट ट्रिब्यूनल या ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू के सामने अपेयर होना है, वो किसी बंदे को इन राइटिंग ऑथोराइज कर सकते हैं। नॉर्मली इसका अथॉरिटी लेटर होता है जिसपे आपकी लीगल फीस या टिकट लगती है, वो आप प्रेजेंट करते हैं कि यू आर द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एंड देन यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। 52A, इंटरमीडिएट्स टू बी अपॉइंटेड। ई इंटरमीडिएट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि अब ऑनलाइन फाइलिंग हो रही है, तो जो ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं जिसके थ्रू हो रहा है वो ई इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट इन बिटवीन, ई ऑनलाइन। Subject to such conditions, limitations and restrictions, the board may by a notification in the official gazette appoint a person to electronically file return under chapter 5 and such other documents electronically as may be prescribed from time to time on behalf of a person registered under section 14. A person registered under section 14 may authorize an e-intermediary to electronically file return or other documents as specified in subsection 1. जो बंदा रजिस्टर है वो अपने भाव पे किसी को ऑथोराइज कर सकता है रिटर्न और अदर सच अदर डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय एन e-intermediary on behalf of a registered person shall deem to have been filed by the registered person. रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं होती, आप किसी को ऑथोराइज कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, डीम यही होगा आपने फाइल किया, कोई गलती होती है तो आप लायबल। Where this act requires anything to be done by the registered person, and if such thing is done by an e-intermediary authorized by the registered person under subsection 2, again वही concept है, unless you can prove to contrary, जो e-intermediary ने किया है वो expect किया जाएगा आपकी instruction पे किया, आपके knowledge में था and you are responsible for that. Where e-intermediary authorized by a registered person under subsection 2 to act on his behalf knowingly or willfully submits a false or incorrect information. अब क्या है कि e-intermediary जानबूझ के गलत काम कर रहा है with an intent to avoid payment of tax due or any part thereof or claim tax credit or refund. Such e-intermediary shall be jointly and severally responsible for the recovery of the amount of tax short paid or the amount refunded
in excess as a result of such incorrect or false information or document or declaration. कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक प्रोफेशनल है, प्रैक्टिशनर है, उसके नॉलेज में गलत काम है तो उसने नहीं करना. अगर वो जानते पूछते गलत काम कर रहा है तो वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है. The board may, by notification in the official gazette, prescribe rules for the conduct and transaction of business of e-intermediaries, including the appointment, suspension, and cancellation of appointments, subject to such conditions as specified therein. Again, board इनके rules बना सकते हैं कि क्या है, किस तरह चीजों को चलाना है. So, we'll have some questions. And I would like to appreciate you guys. मुझे अंदाजा है आज पाकिस्तान इंडिया का मैच है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम इसको 5 के करीब जो है बंद कर दें. एंड डिस्पाइट दैट जो ओवर 200 आप लोगों की पार्टिसिपेशन रही है, मेंबर्स एंड एफिलिएट्स, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स एवर इन सीपीडी सेशन इन पाकिस्तान. So thank you so much for the response and it's tremendous and it's good to know कि आप desire है knowledge की. It also motivates us to come back with even more to help you develop your professional skills. So अब जो आपके questions हैं, please feel free to ask. Muhammad Tawseef is asking, can we adjust sales tax on mobile phone bills as input tax in our monthly GST return? अगर अच्छा ये हम बाद में कवर कर रहे हैं लेकिन चलें मैं अब आपको बता दें तो कोशिश करें थोड़ा फोकस करें जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर. अगर आपकी रेलेवेंट बिजनेस है और आप प्रूव कर सकते हैं वो फॉर बिजनेस पर्पसेस था, देन यू कैन क्लेम इट. इफ यू कैन नॉट प्रूव दैट देन यू कैन नॉट क्लेम इट. नेक्स्ट. Muhammad Ali has asked how a company registered in SRB adjusts credit note of client in PRA. Again, my dear, we have to focus on the subject in hand. अगर 5 बजे के करीब मेरे पास टाइम हुआ तो चले 5-10 मिनट के लिए मैं इनको भी यहाँ पे बैठा लूंगा और आप मुझसे ये सवाल पूछ लीजिएगा. But right now, let us focus with the topic in hand. Focus on that. Next. Rahim Akbar is asking if a person providing taxable services to one of his clients and issue invoice for services in February, but the payment will be received in April or March. The question is in which month's statement this transaction be shown, whether sales tax paid by the person providing the services in the month in which invoice issued or the transaction showed in the month when the payment received. We'll cover further कि different regimes हैं accruals based और cash based. अगर आप cash based कर रहे हैं तो cash incidents पे pay करेंगे, accruals based कर रहे हैं तो month of transaction पे करेंगे. Next. Next is from Rahim Akbar. Is asking, is there any cash basis scheme exist in STA? I just answered that, Rahim. Yes. Umair Iqbal Lal is asking, don't know the issue is at your end or mine as my internet is disconnecting again and again. अब इसमें उमेर ये हो सकता है कि अगर ये यहाँ से आपके इंटरनेट कनेक्शन में जाए और वहां पे कोई ये गड़बड़ करें फिर तो पॉसिबल है. अदरवाइज मोस्ट लाइकली ये आपके आईएसपी का इशू है क्योंकि माशाल्लाह 200 से ज्यादा मेंबर्स और एफिलिएट्स ने ज्वाइन किए और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ आपको ये प्रॉब्लम आ रही है. बट गुड न्यूज, इसकी रिकॉर्डिंग वाइयों पे अवेलेबल होगी. सो द पार्ट यू आर मिसिंग यू कैन ऑलवेज कैच. Next. Mohammed Mohsin has asked if a company is brokerage house in Sindh and paying FED to FBR and company is receiving services of software maintenance from Punjab and vendor charging sales tax, then can company claim input? And second, if same company is purchasing any fixed asset from Sindh vendor, then? Don't you love that? क्या ख्याल है इसका आंसर कर ही देंगे. बार बार यही सवाल आ रहे हैं. कर दें. चलें जी, अहमद साहब की सिफारिश है. अब ये रेलेवेंट क्वेश्चन जब मुझे नेक्स्ट टाइम टीम कहेगी क्यों आपने किया, मैं दूंगा अहमद ने कहा. नो नो, आई एम जस्ट किडिंग, आई विल टेक इट ऑन. अच्छा, इसके बाद प्लीज फोकस ऑन द टॉपिक इन हैंड. आप इसको डिवाइड करेंगे तीनों में. जो पीआरए से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ आप पीआरए से क्लेम करेंगे. जो एसआरबी से रिलेटेड है वो एसआरबी से. कैपिटल टेरिटरी एक्ट में जो फॉल करेगी वो वहां पे आप डील करेंगे. फेयर है ना. अब सवाल ये आ गया कि जी फिक्स एसेट पे जो हमने अगर हमने बाय किया है वो हम क्लेम कर सकते हैं कि नहीं. अब देखना पड़ेगा आपका हेड ऑफिस कहाँ पे है,
कौन सी jurisdiction में आपने ये fixed asset buy किए हैं और आपके business की nature क्या है. It would depend on those factors. Next. Mohammed Amin Rashid is saying, I lost the connection. So, sir, can you explain section 49, sales of taxable activity or transfer of ownership? Okay. In simple words, अगर आप business dispose of कर दो, taxable activity भी रोक दो, tax कहीं नहीं जाएगा. वो आपको पे करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके पास वो स्टॉक पड़ा हो जो taxable supply का था, अभी आपने क्लियर नहीं किया, तो उसके ऊपर आपको अपना relevant tax पे करना पड़ेगा. अगर as it is going concern basis आगे आप दे देते हो या आप tax पे नहीं करते, तो जिसको आपने ट्रांसफर किया है उसको वो tax पे करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा. That's all what this section is about. I hope that answers. Next. Muhammad Shahid Shakir is asking whether ATR has authority to increase the liability of order made by subordinate one. So, appellate tribunal, can they increase the authority, increase the liability? देखिए, कोई उन पे बार नहीं है कि वो नहीं कर सकते, क्योंकि अमेंडमेंट में ये कवर है. अमेंडेड ऑर्डर मीन कि ऑर्डर को अमेंड करना, अमेंडमेंट अपवर्ड्स भी हो सकती है. प्रैक्टिकली एक चीज समझ ले कैसे है. आप अपील लेके गए या डिपार्टमेंट लेके गए, जो प्ली है उसके अकॉर्डिंगली एपिलेट ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है. एपिलेट ट्रिब्यूनल ये डिसाइड नहीं करता कि आप गए हैं कि जी मुझे रिफंड मिलना चाहिए, वो कहीं नहीं है कि एक्चुअली तुम 50 करोड़ और दे दो, ठीक है. अनलेस ऑब्वियसली जो डिपार्टमेंट का ऑफिसर है वो कोई काउंटर प्ली लेके जाए. तो अगर तो डिपार्टमेंट की काउंटर प्ली है या डिपार्टमेंट लेके गया है कि लाइबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, ये भी तो हो सकता है ना. नीचे आपकी फेवर में डिसीजन दे दिया कमिश्नर अपील ने, एंड इट वाज द डिपार्टमेंट हु वेंट टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो वो तो इसीलिए गए हैं कि अपील कि आपकी लाइबिलिटी अपवर्ड रिवाइज हो. तो इन शॉर्ट, यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल, बट इट वुड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द केस एंड व्हाट इज द प्रेयर बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल. I hope that helps. Next. Mohammed Daniel has asked, give a brief description of how CREST works. Daniel, we'll inshallah cover that in next session. मैं आपको बता देता हूँ. CREST, for those who don't know, is the online system जिसके थ्रू ये सारा सेल्स टैक्स का ऑपरेशन काम कर रहा है. आप कर रहे हैं, बैक एंड के ऊपर है, रिटर्न आपकी जा रही है, वहां उनको सारे एल्गोरिथम्स एनालिसिस वगैरह आ रहे हैं. How it works, like any good software system should. For now, this should be sufficient. I hope that helps. Next. Another question from Mohammed Mohsin is asking, what is the treatment of advance received but have not agreed about the goods to be sold? You have received an advance against what? What is the treatment of advance received? Why would you receive an advance when you have not agreed anything that what you are going to supply? What kind of business would that be? I would answer your question, but I would want you to give me the example where this would happen first. I'll be waiting while I'm answering other questions. Ji, next. Next is from Aga Mushtaba. He's asking, is there any reduced tax rate in Pakistan for senior citizens? Yes, Aga Sahab, there is reduced tax rate for senior citizens and income tax. Today we are covering sales tax. Unfortunately, sales tax में नहीं है. देखें, sales tax है क्या? Indirect tax होता ही regressive है. यही तो इसका मसला है कि senior citizen भी वही रेट पे कर रहे हैं, आपका स्वीपर भी वही रेट पे कर रहे हैं, आप भी वही रेट पे कर रहे हैं. हालांकि होना क्या चाहिए, जो ज्यादा कमा रहा है या जो कमा रहा है वो ज्यादा पे करे, जो कम कर रहा है सोसाइटी गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करे. यही बिगेस्ट प्रॉब्लम है इनडायरेक्ट टैक्सेशन की, कि इसमें ऐसा नहीं होता. हर बंदा चाहे वो ज्यादा कमा रहा है कम, उसको एक रेट पड़ता है, तो इफेक्टिवली जो कम कमा रहा है वो अपनी आमदनी की हायर प्रोपोर्शन टैक्स पे कर रहा है, जो ज्यादा कमा रहा है उसको स्टेट सब्सिडाइज कर रही है, वो अपनी आमदनी की कम प्रोपोर्शन टैक्स पे कर रहा है. तो इट्स अ नेगेटिव सिस्टम, रिग्रेसिव सिस्टम. आई होप दैट हेल्प्स. Next is from Momin Suryail Khan. He's asking, can new 40B proceeding be exercised by the FPR before conclusion of the previous 40B proceeding regarding the same taxpayer? If the time period has expired without any conclusion or report to that effect being submitted. Next. Next is from Muhammad Naveed Iqbal. He's asking, can we adjust the input against withholding tax on sales tax? Can we adjust the input against withholding tax on sales tax? Yes.
Please clarify what do you mean by withholding tax on sales tax? Do you mean the sales tax that you withhold? If yes, that is called output tax. And the answer is yes. If you meant something else, please clarify and I'll be more than happy to help. You meant the same. Okay, great. Next. Next is from Muhammad Adif Reddy. He is asking example question for advanced sales tax. Supplier get the deposit and the quantity and rate is not agreed. It is a normal routine in sugar industry. The great sugar industry. Bilkul, bilkul. Kisano ka, all that. Okay, if you have received an advance and nothing has been agreed, you'll have to see कि कौन सी regime आप follow कर रहे हैं, ठीक है? अगर तो आप accruals कर रहे हैं और sugar industry वाले prefer करते हैं accrual को क्योंकि cash payment तो उन्होंने करनी बाद में जाके होती है. So in that case जो accruals का incidence है उसके accordingly आप इसको deal करेंगे. Sorry, cash को prefer करते हैं. Cash basis पे अगर आप कर रहे हैं तो जब actual cash payment होगी उसके accordingly करेंगे. Let's assume आपकी accrual basis पे है, आपको cash आज receive हुए हैं, जब आपकी ट्रांजैक्शन फाइनलाइज और एग्री हो जाए, यू नो व्हाट इज टू बी डिलीवर्ड, उस डेट को आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे. अगर कैश बेसिस पे हो रहा है, आज आपको कैश रिसीव हुआ है, इसी पीरियड के अंदर आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे. नाइस एंड इजी. अच्छा, ये जो आपकी सेल्स टैक्स अकाउंटिंग के रूल्स है ना, यू आर एक्चुअली इन अ वेरी गुड प्लेस कंपेयर टू लॉयर्स, क्योंकि इधर बेसिक जो ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट हैं वो अकाउंटेंसी के हैं जो आप पढ़ चुके हैं. ये वही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, कैश अकाउंटिंग, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या एक्रूवल्स अकाउंटिंग. तो यू आर इन अ मच बेटर पोजीशन टू एक्चुअली कॉम्प्रिहेंड दैट. आई होप दैट हेल्प्स. नेक्स्ट. We have two more questions from Omer Zaheer Meer regarding 40B. He is asking what is the time period you referred to regarding starting a new proceeding of 40B before previous proceeding has had any conclusion? We just covered that, but I'll show you again. I think maybe you lost connection or something there because we covered that in quite an extensive detail. Okay, the officer has been posted, okay, and they are posted for any time period to give their report. The time period can be any time period that the commissioner who has given the notification in writing deem appropriate. If during that time period for some reason the commissioner believes the officer is colliding, maybe section 33 proceedings have been initiated against them or for any other reason, they can initiate a new one. Okay, I hope that clarifies. And another question from him, can the inland revenue officer visit the taxpayer premises before the taxpayer has received the notice regarding 40B? No. Next is from Muhammad Saqib Ali Rashidi. He is asking how would the computerized system work implemented by the board? Will this implemented generally or for the specific companies as well? A very good question, Rashidi sir. The purpose of mentioning it here in these sections is basically to give the board the room to create the systems and procedures and continually evolve. The aim here is to focus generically on creating the system. However, there is nothing barring the board or the relevant taxation officer from focusing on an individual. However, individual side पे वो आपकी computerized record मांगते हैं, आपके लिए वो individual system नहीं create करेंगे. Hope that helps. Next. Daud Kanatra is asking why is Pakistan sales tax very much difficult as compared to other countries' laws? Because we are intelligent people. And the tax officials want to see how intelligent we are. देखें अभी recent study हुई थी एक उसमें कहा गया था despite all the odds, all the problems, Pakistanis are the second or third most intelligent and competent nation of the world. फिर इतनी intelligent nation को test तो करना चाहिए ना. Anyway, that was on a lighter note. Practically, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो टैक्सेशन लॉज डेवलप हो रहे हैं उनका फोकस बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे, फिर पॉलिटिकल इश्यूज और इकोनॉमिक इश्यूज आपस में गड़बड़ हो रहे हैं. 18 अमेंडमेंट का परव्यू था कि प्रोविंसेस को एक तरह की ऑटोनॉमी दी जाए, लेकिन उसके टैक्सेशन के ऊपर रेमिफिकेशंस आए. लोगों ने उस वक्त नहीं सोचा जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट होगा, कुछ इंसेंटिव्स भी थे उसके.
हाँ, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि दी प्रोविंसेस आर नाउ एटलीस्ट मोटिवेटेड टू डू समथिंग. पहले तो फेडरेशन शेयर दे देती थी, कोई मोटिवेशन नहीं थी रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाने की. लेकिन जो स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, हार्मोनाइजेशन करने की जरूरत है, उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया अनफॉर्चुनेटली. दूसरा इशू ये है कि इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, right man for the right job and the will to actually do things and execute. Because if you have the right person to do the right job and you have the will to back them up, nothing is impossible. दुनिया में क्या कुछ नहीं हुआ. ये लॉस भी हम बना रहे हैं तो हम सही भी बना सकते हैं. And since I'm on this professional forum, I think कम कहे को ज्यादा समझे. Read between the lines. Next is from Imran Khan. He's asking how often a sales tax audit may be conducted. There is no bar. हर साल भी वो आपका कंडक्ट कर सकते हैं. Whenever the commissioner deem it appropriate, या तो ये भी प्रोविजन मौजूद है इमरान, अगर आपने गौर किया हो कि आपका ऑलरेडी ऑडिट हुआ है, कमिश्नर किसी वजह से समझता है और फिर वो लिखता है, ऑथोराइज करता है, तो स्पेशल ऑडिट आपका कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, ऑडिट के ऊपर ऑडिट. सो उस तरह की कोई बार नहीं थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली ऑडिट इन्वॉल्व्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, तो उनको फोकस किया जाता है. Next is from Hashim Barak. He's asking, I'm not sure if this has been answered or will be answered later. The question is, in the current Finance Act, GST input can be claimed up till months old. But now the sales tax withheld has to be deposited on accrual basis. So when you put the input in third or fourth month, the withheld CPR is not picked by FBR. Okay. Very good question. First of all, I like the way you asked the question. I don't know whether it has been answered or will be covered later on. We will be covering it later on, but because you asked the question in such a nice way, I'm going to answer that anyway. जी बिल्कुल ये टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं सिस्टम के. इन सच अ केस, अगर इफ यू आर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, कॉल प्राग ऑनलाइन हेल्प सर्विस, ask them to get it fixed for you, and they normally do, although they would take some time. I hope that helps. 051 111 772 772. Next is from Muzammil Shakir. He's asking, if a person performs a sales transaction and generating lower value invoices, are these invoices provide sufficient evidence of paying lower tax, or government look for other things as well like market value of that product? ठीक है, आप सेल्स की लोअर इनवॉइसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो काउंटर पार्टी है वो उसको कैसे रिपोर्ट कर रही है, पहली चीज. ठीक है, मार्केट प्राइसेस को भी असेस किया जा सकता है, स्पेशल ऑडिट. देयर इज नथिंग प्रोहिबिटिंग दैट. सो हम इतनी मेहनत इस साइड पे क्यों करें, हम थोड़ी सी मेहनत अपने बिजनेस को पॉजिटिवली एक्सपेंड करने और अपने ड्यू टैक्सेस पे करने पे करते हैं, शायद ज्यादा फायदा हो जाए. Next is from Hashim Zaheer. He's asking, has filer non-filer status affect sales tax liability? जी बिल्कुल करता है. जो नॉन फाइलर है या नॉन रजिस्टर्ड है उसको 2% एडिशनल हम चार्ज करते हैं, ये हम पहले सेशन में कवर कर चुके हैं. आई होप आप सबको फाइलर नॉन फाइलर का डिफरेंस पता है. अगर कोई कंफ्यूजन है, जस्ट शूट अ क्वेश्चन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लैरिफाई. नेक्स्ट, Rahim Akbar is asking, before opting the cash basis scheme, is it compulsory to inform the taxation authorities? Just bear with us, we'll cover it. But yeah, it's you have to actually take the authorization. Next is second last question. It's from Mohammed Shaikh Shakil. He's asking, what is minimum requirement to be included in invoice to be accepted as sales tax invoice? Sharik, we have covered that extensively in the first session. It includes your sales tax registration number, date, your business relevant details, the person you are sending it to, their details, the relevant rates, net of tax and gross of tax, sales tax amount of all the different items or services that you are providing, the gross totals, the net totals separately for all three columns, description of the items you are providing, quantity of the items you are providing. So all these things are covered within that. I hope that helps. So somebody has asked regarding, Sir, Assalamu alaikum, please explain difference between filer and non-filer. It's from Sulaiman Sheikh. Walaikum assalam, Sulaiman sir. We have discussed this a few times. Filer, non-filer का concept especially ये फाइनेंस बिल 2015 में बहुत अहमियत इसको दी गई है और आगे गवर्नमेंट इसको लेके चलना चाह रही है.
फाइलर वो है जो अपनी रिटर्न्स टाइम पे जमा करा रहा है। इनकम टैक्स के लिए सिर्फ रजिस्टर्ड है तो उसकी, सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड है तो इनकम टैक्स सेल्स टैक्स दोनों की। नॉन फाइलर वो है जो रिटर्न जमा नहीं करा रहा। द ऑनस इज ऑन फाइलिंग रिटर्न, नॉट टैक्स। हो सकता है आपका नील टैक्स बन रहा हो, इट डजंट मैटर। इफ यू आर फाइलिंग रिटर्न यू आर अ फाइलर। इनकम टैक्स के लिए ये है कि फाइलर 1 ईयर इन पास चल रहे, एक्सेप्ट फॉर VTCS वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस स्कीम जो गवर्नमेंट ने ट्रेडर्स के लिए अनाउंस की है, उसकी जो लास्ट टैक्स ईयर की रिटर्न जमा करा रहे हैं वो फाइलर में आ रहे हैं। अदरवाइज 2014 की जो जमा करा रहे हैं वो इस साल के फाइलर में आ रहे हैं, जो 15 की कराएंगे वो अगले साल के फाइलर में, अनलेस गवर्नमेंट चेंजेस द सिस्टम ऑब्वियसली। फाइलर नॉन फाइलर का एक फायदा ये है कि तकरीबन तमाम एरियाज में मेजर में गवर्नमेंट ने डिफरेंशियल टैक्स स्लैब लगा दिया। जैसे आप फाइलर है 0.6 जो अभी 0.3% टैक्स है बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे नहीं देना, नॉन फाइलर है वो आपको देना। इसी तरह गाड़ी आप खरीदने जा रहे हैं वहाँ रजिस्ट्रेशन पे टैक्स पे डिफरेंसेस है, प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं वहां पे है, कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे भी थ्रू आउट। अब ये कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएशन डाली गई है टू मोटिवेट पीपल टू कम विद इन द टैक्स नेट। I hope this clarifies. Any other questions? Last one from Omer Zaheer Meer. He's asking, can Commissioner attach bank accounts of taxpayer before passing of order pertaining to appeal filed by taxpayer in same case before appeal commissioner? Is there any need to be cautioned about bank accounts in such case regarding 40B? Okay. अगर कमिश्नर ने इन राइटिंग ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है, then there is nothing stopping them from attaching the account. अटैचमेंट अकाउंट के लिए वो आपको पहले नोटिस देते हैं, आपको टाइम पीरियड देते हैं। अगर उस टाइम पीरियड में आपने करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, अपील फाइल नहीं की, स्टे नहीं लिया, then they will attach the account. There is nothing stopping them. I hope that answers. Next. So that's pretty much it for right now. We'll continue from where we left. और इसको खत्म करने के बाद इंशाल्लाह हमारा फिर एक दफा फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे जिसमें डिटेल से जो आपके क्वेश्चन होंगे विल आंसर देम। सो 52A E इंटरमीडिएट्स टू बी अपॉइंटेड, ये हमने कवर कर लिया था, ठीक है। ओके, दिस विल ब्रिंग अस टू 53 स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। स्टेट क्या होती है? एनी आइडिया? वी हैव 30 सेकेंड्स, आप अपने रिस्पॉन्सेस दीजिए। वैसे इसी स्टडीज में आप लोग पढ़ चुके हुए हैं कि स्टेट क्या होती है। Fifteen seconds gone now. Property. Okay. Estate, wealth. Estate means all owned property linked with deceased person. Property and assets, real estate, net worth of a person, the properties and assets of an entity, property, land, property. Very good, very good, very good. See, ACCA की quality is really good. बिल्कुल जी, estate होती है जितने भी assets हैं, they form the estate. So, estate of a deceased person are all the asset of the deceased person that he has left or she has left behind. Tax liability of a deceased person under the Act shall be the first charge on his estate in the hands of his successors. Same concept है, टैक्स का पहला चार्ज है। अगर आप ये समझते हैं कि कोई शख्स अल्लाह ताला के पास चला गया तो टैक्स अथॉरिटीज उसे छोड़ देंगी, तो ऐसा नहीं होगा। टैक्स अथॉरिटीज कहेंगी कोई बात नहीं, जायदाद तो मौजूद है ना, जो उसके वारिस हैं उनको मिलने से पहले टैक्स का शेयर दें। ओके, नंबर 54, सेक्शन 54, स्टेट इन बैंक्रप्सी। अगर किसी ने अपनी स्टेट बैंक्रप्सी में दे दी है, बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी है, देन if a registered person registered in this context mean tax registered which is sales tax registered person is declared bankrupt, the tax liability under this act shall pass on to the estate in bankruptcy if it continues to operate the business. If tax liability is incurred by an estate in bankruptcy, the tax is deemed to be a current expenditure in the operation of the estate in bankruptcy and shall be paid before the claims preferred by other creditors are settled.
अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, अगर बिजनेस चल रहा है जो बैंक्रप्सी की स्टेट में दिया है तो उसकी लाइबिलिटी बन जाएगा ये, और अगर बिजनेस बैंक्रप्सी में जो है उसने टैक्स लाइबिलिटी इनकर की है तो वो उसका करंट एक्सपेंस समझी जाएगी और उसके बाकी क्रेडिटर्स से पहले पे की जाएगी। कॉन्सेप्ट वही है कि स्टेट का जो आपने शेयर देना है वो पहला राइट है, बाकी दूसरे लोगों का राइट उसके बाद आता है। सेक्शन 55 रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। If any difficulties arises in giving effect to the provisions of this Act or the rules made or notifications issued thereunder, the board may through a general order or otherwise issue instructions or directions not inconsistent with the provisions of this Act for such action to be taken by an officer of Inland Revenue or any other person as it considers necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties। अगर किसी भी एरियाज में कोई डिफिकल्टी आ रही है टैक्स पेयर को, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो बोर्ड के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो कोई सर्कुलर इशू कर दे, गैजेट में कर दे, जनरल ऑर्डर कर दे या इंस्ट्रक्शन इशू करे जो बाकी पूरे सेल्स टैक्स एक्ट से मुतसादिम ना हो, इन कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और बाय वे ऑफ दैट क्लैरिफाई कर दे और वर्किंग्स को स्ट्रीमलाइन कर दे। सेक्शन 56 सर्विस ऑफ ऑर्डर्स एंड डिसीजंस एक्सेट्रा। जो ऑर्डर्स होते हैं उनकी सर्विस करना कैसे होता है? सबसेक्शन 1 सेक्शन 56 का कहता है सब्जेक्ट टू दिस एक्ट यानी सेल्स टैक्स एक्ट 1990, एनी नोटिस, ऑर्डर और रिक्विजिशन required to be served on a resident individual other than in a representative capacity for the purposes of this act shall be treated as properly served on the individual if personally served on the individual or in the case of an individual under legal disability or a non-resident individual the representative of the individual। कोई नोटिस, ऑर्डर या रिक्विजिशन आपने बंदे किसी को सर्व करनी है तो कैसे समझा जाए कि आपने उस पर सर्व की? क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है ना, जब तक नोटिस सर्व नहीं आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। पहले तो ये है कि आपने पर्सनली इंडिविजुअल को सर्व कर दिया, या अगर वो लीगली डिसेबल है या नॉन रेजिडेंट है तो उसके ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को आपने सर्व कर दिया। दूसरा ये है कि यू कैन सेंड इट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और कोरियर सर्विस स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 जो हम पहले सेशन में पढ़ चुके हैं, टू द इंडिविजुअल्स यूजुअल और लास्ट नोन एड्रेस इन पाकिस्तान। And this is the most preferred method. Mostly डिपार्टमेंट जो है पोस्ट ऑफिस को यूज करता है यूएमएस का, और अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकली जो हमारी पोस्टल सर्विसेज का हाल है, कभी वो मिल जाता है कभी नहीं मिल जाता, तो प्रैक्टिकली इट डज क्रिएट हर्डल्स फॉर टैक्स पेयर एंड मे बी दे कैन स्टार्ट यूजिंग अ कोरियर सर्विस टू एड्रेस दिस इशू। बट दिस इज वन ऑफ दोज एरियाज जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी और थ्योरी में थोड़ा डिफरेंस है और प्रैक्टिकल हर्डल्स हैं इन प्रैक्टिस। Third, served on the individual in the manner prescribed for service of a summon under the Code of Civil Procedure 1908, यानी उसके घर के बाहर आप नोटिस वगैरह लगाते हैं एक्सेट्रा। सो इनमें से कोई भी आप काम कर लें तो इट वुड बी डीम्ड कि जो रेलिवेंट बंदा है, जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है अंडर कंसिडरेशन, उसको आपने नोटिस सर्व कर दिया है। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि सब्जेक्ट टू दिस एक्ट एनी नोटिस, ऑर्डर or requisition required to be served on any person other than a resident individual to whom subsection 1 applies। अब सबसेक्शन उसको डील कर रहे हैं जो बाकी बचा है सबसेक्शन 1 के अलावा। other than a resident individual for the purposes of this act shall be treated as properly served on a person if non-resident बंदे को रिप्रेजेंटेटिव को पर्सनली आपने सर्व कर दिए। अगेन वही चीजें हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर के थ्रू आपने सर्व कर दिया उसके लास्ट नोन एड्रेस पे, या अगर उसका कोई एड्रेस नहीं है पाकिस्तान में तो नोटिस इज सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द पर्सन इन पाकिस्तान, या सर्व्ड ऑन द पर्सन इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ सर्विस ऑफ समन्स अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908 के उनके ऑफिस के बाहर जाके लगा दिए। यानी अगर नॉन रेजिडेंट का पाकिस्तान में अपना एड्रेस नहीं है तो उनका बिजनेस तो होगा, तभी तो वो रजिस्टर्ड है, तो उस बिजनेस एड्रेस पे आप भेज देंगे। आपसे मुराद टैक्स अथॉरिटीज है, आप नहीं है।
Subsection 3 states where an association of person is dissolved. हमने association of person की definition पढ़ी थी section 2 definitions में पहले session में वाइमियो पे recording है आप check कर लीजिएगा. Where an association of person is dissolved, आपने dissolve कर दी. Any notice, order or requisition required to be served under this act on the association या a member of the association may be served on any person who was the principal officer or a member of the association immediately before dissolution, because they are supposed to know about the other members. The concept of joint and several liability. Creative accounting का दरवाजा बंद किए कि सिर्फ टैक्स अवॉइडेंस के लिए अगर आप डिसॉल्व करें तो वो काम नहीं करेगी. Subsection 4 states where business stands discontinued, any notice, order or requisition required to be served under this act on the person discontinuing the business may be served on the person personally or on any individual who was the person's representative at the time of discontinuance. अगर हम बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा नोटिस, ऑर्डर या रिक्विजिशन जो टैक्स अथॉरिटीज ने हमें भेजना है अंडर दिस एक्ट वो हमें सेंड कर सकते हैं डायरेक्टली जो बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हैं या हमारे ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को एट द टाइम ऑफ डिसकंटिन्यूएंस. Subsection 5. The validity of service of a notice under this act shall not be called into question after the notice has been complied with in any manner. ऊपर हमने जो प्रोसीजर्स डिस्क्राइब किए हैं उनमें से किसी भी तरीके से अगर नोटिस सर्व हो गया है तो उसकी वैलिडिटी को आप लीगली चैलेंज नहीं करेंगे, ना कर सकते. तो क्विकली कौन से 3 तरीके हैं? इन पर्सन आप सेंड कर दें बंदे को या उसके ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को उसके एड्रेस या बिजनेस एड्रेस पे भेज दें या वहां पे फिक्स कर दें इन अकॉर्डेंस विद दी वी जस्ट कवर्ड इट Code of Civil Procedure 1908. This brings us to 56A and 56B. These are the new subsections which have been inserted as a result of the Finance Bill 2050. 56A deals with the agreement for the exchange of information. आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट जो है वो जा रही है ग्लोबली कोलैबोरेशंस की तरफ, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो रहे हैं, गवर्नमेंट्स के एग्रीमेंट्स आपस में हो रहे हैं, डिस्क्लोजर्स एग्रीमेंट्स हो रहे हैं. तो उन्हीं प्रोविजन को लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए सेल्स टैक्स एक्ट में ये प्रोविजन डाल दी गई है विच स्टेट्स सबसेक्शन 1 ऑफ 56A. The federal government may enter into bilateral between 2 parties or multilateral, multiple parties, more than 2 parties, agreements with provincial governments or with governments of foreign countries. पोस्ट 18 अमेंडमेंट याद कीजिए बताया है कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मैनेज कर रही हैं, तो अब फेडरल गवर्नमेंट उनके साथ भी एग्रीमेंट कर सकती है और फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ भी फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू सेल्स टैक्स इम्पोज्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ ऑफ पाकिस्तान and under the corresponding laws of such countries and may by notification in the official gazette make such provisions as may be necessary for implementing such agreements. The provisions of section 107 of Income Tax Ordinance 2001 shall mutandis apply to the provision of this section. सो बेसिकली कवर किया गया है लीगली कि अब फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फॉरेन गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकती है ये देखने के लिए कि कोई टैक्स अवॉइडेंस तो नहीं हो रही. 56B डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय अ पब्लिक सर्वेंट. सबसेक्शन 1 स्टेट्स any information acquired under any provision of this act or in pursuance of a bilateral or multilateral agreement or tax information exchange agreement shall be confidential, and no public servant shall disclose any such information except as provided under section 216 of Income Tax Ordinance 2001 taxation inquiry के केस में. So information आपको कहा गया आपकी confidential है, bilateral
बायलैटरल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट के तहत या टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट के तहत जो हासिल की गई हो, और कोई भी पब्लिक ऑफिसर सर्वेंट जो उसको डील कर रहे हैं वो सिवाय सेक्शन 216 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के किसी और प्रेटेक्स पे उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। और ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ लॉ का मंगवाना उसमें कवर्ड है, तो इफ कोर्ट ऑफ लॉ आस्क फॉर इट दे हैव टू प्रेजेंट इट। Section 2 is same like for 56A. The provisions of Section 216, it's on similar basis, not exactly same. Here it's about Section 216 of Income Tax Ordinance. There it was about Section 107. So the provision of Section 216 of Income Tax Ordinance 2001 shall mutatis apply to the provision of this section. And before you ask the question, mutatis mutandis is a legal term. If I remember correctly, I think it's a Latin term. इसका मतलब यही है कि वही क्लॉज जो है एज इट इज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। समझ लें कि वो क्लॉज 216 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस यहाँ पे इंसर्ट हो रही है, ठीक है। और अगेन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे हमने 3 सेशन किए हुए हैं, ACCA के Vimeo चैनल पे अवेलेबल है। यू कैन ऑलवेज क्विकली गो थ्रू देम एंड अप्रोच देम। 56C, price schemes to promote tax cultures. The board may prescribe price schemes to encourage general public to make purchases from registered person issuing tax invoices. So tax culture को promote करने के लिए अब government time to time price schemes भी announce कर सकती है। 57, rectification of mistake. इंसान है जी, tax officer भी इंसान है, हम भी इंसान है, गलती हो जाए फिर उसको रेक्टिफाई कर कैसे? द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, कमिश्नर, द कमिश्नर अपील्स और द अपीलेट ट्रिब्यूनल मे बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग, नॉट जस्ट वर्बल, रिटन ऑर्डर, amend any order passed by him to rectify any mistake apparent from the record on his or its own motion, or any mistake brought to his or its notice by a taxpayer, or in the case of a commissioner of the commissioner appeals or the appellate tribunal commissioner. इनकी नोटिस में कोई भी मिस्टेक आई, चाहे खुद से चाहे ये रेलिवेंट लोग इनकी नजर में लाए, रिटन ऑर्डर ला के उसको अमेंड कर सकते हैं। इन थ्योरी जरूर करते हैं, इन प्रैक्टिस इट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन ACR। आपने पहले क्यों नहीं गौर किया? सो नॉर्मली वो हमें क्या कहते हैं प्रैक्टिशनर्स को, जी बिल्कुल मीर साहब गलती होगी, लेकिन आपके पास एपिलेट फॉरम है ना, आप वहां पे चले जाए। क्यों? क्योंकि खुद अपनी गलती को करेक्ट करना उनके लिए इसलिए मुश्किल है कि अब ये स्ट्रक्चरल इशू है कि इस तरह डिजाइन हुई हुई है उनकी परफॉर्मेंस के वो उनकी ACR में बैडली रिफ्लेक्ट होगा। यानी टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करना एक्चुअली बैडली रिफ्लेक्ट होगा, जो इन इफेक्ट अगर मेरा कॉन्फिडेंस बीइंग अ टैक्स पेयर वो विन करे तो उनके रेवेन्यू टारगेट में हेल्प करे। बट दिस इज वन ऑफ द एरियाज जहां पे ये स्ट्रक्चरल इश्यूज मौजूद हैं। सबसेक्शन 2, no order under subsection 1 which has the effect of increasing an assessment, reducing a refund, or otherwise applying adversely to the taxpayer shall be made unless the taxpayer has been given a reasonable opportunity of being heard. कोई ऐसा ऑर्डर जिससे टैक्स पेयर को नुकसान हो रहा, चाहे उसकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से, चाहे उसका रिफंड कम होने की वजह से, वो तब तक आप पास नहीं कर सकते जब तक आप टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी ना दे कि वो अपना मौकफ प्रेजेंट कर लें। अगेन ये ऑडियो अल्ट्रम पल्ट्रम का प्रिंसिपल है जो मैं पहले भी 2 दफा रेफर कर चुका हूँ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एज एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान टू। Concept ये you cannot condemn anyone unheard, you have to hear them first. So we are nearing the end of presentation, so as I promised we will have 25 or so minutes for our question answer session. So subsection 3, where mistake apparent on the record is brought to the notice of the officer of inland revenue, commissioner or commissioner appeals, as the case may be, and no order has been made under subsection 1 to rectify the mistake before the expiration of the financial year next following the date on which the mistake was brought to their notice, the mistake shall be treated as rectified and all the provision of this act shall have effect accordingly. No order, अच्छा अगर कमिश्नर कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहा, नोटिस में आया हुआ है,
तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की एक्सपायरी तक अगर वो ऑर्डर पास नहीं करेगा तो ये डीम किया जाएगा कि उसने ऑर्डर आपके फेवर में पास कर दिया और रेक्टिफिकेशन हो गई। सो बेसिकली उसको टाइम बाउंड किया गया कि मैक्सिमम इतने टाइम में ऑर्डर पास कर दो अगर तुमने अगेंस्ट पास करना है, इफ यू हैव एनी ऑब्जर्वेशन। Subsection 4, no order under subsection 1 shall be made after 5 years from the date of the order sought to be rectified. अगर आप 5 साल तक सोए रहे हैं तो फिर आप पुरसकून नहीं सोते रहिए। टाइम बार है, विद इन 5 years आप उस ऑर्डर के लिए परसू कर सकते हैं। सो लास्ट मेन सेक्शन ऑफ द डे विद रेलिवेंट सबसेक्शंस 58, liability for payment of tax in the case of private companies or business enterprises। जी कोई क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास? आ जी। First one is from Mohammed Mohsin. He's asking what is the criteria for retailer to register for sales tax? If they are not classified as cottage industry and making taxable supplies, they should register. I hope that helps. Next. Next is from Muzammil Shakir. He's asking everyone has to pay sales tax or there is a limit on certain level of revenue to pay tax? Muzammil, we covered the concept of cottage industry and that is available on Vimeo, the session 1 on sales tax act 1990. Please go through that. It has covered the topic in extensive detail. Yes, there is a limit. And yes, it is only for taxable supplies. Next. Next is from Mohammed Hossain. Will you guide us on VTS at and if possible? Criteria and procedure to avail VTS. VTCS. It's Voluntary Tax Compliance. What was the name? Mohammed Mohsin. Mohsin, hold on to it. इन questions के बाद हम ये 58 खत्म कर लें, उसके बाद हम दोबारा क्वेश्चंस करेंगे। आप उस वक्त मुझसे पूछना, इंशाल्लाह I'll guide you. Next. Imran Yusuf has said, thank you. I have to leave early. It was very informative session. Please have a session on sales tax withholding rules in future. Thanks again. You are most welcome, Imran. आप बाकी की recording देख लेना and inshallah we'll pass on your feedback to Harun sir. In fact, you will, Ahmed sir. Next. This one is the comment of the day from Rahim Akbar. He's saying, comment of the day. Yeah. Wow. The way you are explaining the Sales Tax Act is really impressive. Can you give me job in your firm? I have 2-year experience in an audit firm. Okay, what about your taxation experience? Thanks for the compliment. I'll share my contact details at the end. Shoot me your CV. Okay. We are planning for some extension in April, May. So why not? Maybe we can. Okay. Next is from Momin Sahil Khan. He's asking, appeal has been filed by taxpayer against order of 40B. Now waiting for order of the appeal commissioner. In this case, can the commissioner attach bank accounts before order of appeal commissioner? Look, if the commissioner had already passed an order and the order allowed you an appeal, then they would not attach. If the commissioner mentioned that they are going to attach and you went to commissioner appeal, then you should also go to court and take a stay order, just to be on the safer side. Next. Imran Khan is asking, don't you think section 51 of the act is against the constitution, as the constitution allows its citizen to bring on any civil suit against state or otherwise if anyone feels discriminated in any matter of law? Not really. It only says कि आप डिसीजन को चैलेंज कर सकते हो, आप जाती तौर पे सरकारी ऑफिसर को नहीं करोगे। मिसाल के तौर पे उसने आपके खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया, आप जाके कहो कि जी ये बंदा जो है इसने ये कर दिया, बंदे ने नहीं किया, आप ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हो। व्हाई? इट्स नेसेसरी टू कंडक्ट द गवर्नमेंट बिजनेस। हाँ, अगर वो आपको थ्रेटन करे, कोई इलीगल एक्टिविटी करे, आप सू कर सकते हो, लेकिन अगर वो जस्ट अपनी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज कर रहे हैं, जजमेंट है ना, जजमेंट में तो डिफरेंस आ सकता है। अगर उसकी जजमेंट आपसे डिफरेंट है तो इस बेसिस पे अगर आप उसको जाती तौर पे सू करोगे, फिर तो कोई सरकारी ऑफिसर काम ही नहीं करेगा। ऑर्डर को आप सू कर सकते हो, उसकी लिबर्टी आपके पास है। हाँ, वो जाती तौर पे आपसे कोई इलीगल काम करे तो आप उसको भी सू कर सकते हो। Hope that clarifies. Next is from Haban Ali. He's asking, legal disability means financial disability? नहीं, लीगल डिसेबिलिटी का मतलब है कि डिसेबल
in legal terms कि डिसेबल बंदा जाहिर है हो सकता है वो पढ़ ना सकता हो, वो देख ना सकता हो, वो चल ना सकता हो, तो उसके ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव या गार्डियन को आप हैंड ओवर करेंगे नोटिस. Next is from Sayyid Ali Ghalib Naqvi. He's asking, can you kindly explain subsection 56(1)(c) in detail? Served on the individual in the manner prescribed for service of his summons under the Code of Civil Procedure. We covered that in extensive detail, but no problem. Code of Civil Procedure 1908 जो है, it covers the civil matters और उसमें समन को जो सर्व करने के वेज हैं वो डिफाइन किए गए हैं. उसमें जो मोस्ट रेलिवेंट है प्रैक्टिकली टैक्स पर्पसेस के लिए जो वो करते हैं वो ये है कि अगर आपको बंदा नहीं मिल रहा तो आप जो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है वहां पे जाके उसको पोस्ट करते हैं. अब वो जब उस एड्रेस पे आएगा उसको वो नजर तो आएगा ना नोटिस, तो इट्स बीन सर्व. Muhammad Daniel and Muhammad Amin Rashid have similar question. They want to know about mutatis mutandis. I did clarify that. Did I not? I think I did. Okay, I'll show you and clarify. Mutatis mutandis mean it's, I believe, a Latin term. It means the provision that's been referred, for example, in 56B, section 216 of ITO Income Tax Ordinance 2001. You would believe legally it's equivalent that as if that provision has been put in here. Okay, so this effectively means that section 216 of Income Tax Ordinance is present in subsection 2 of 56B. I hope that clarifies. Next. Hamad Iqbal is saying thanks a lot for such value addition in our tax know-how. You are most welcome, Hamad. Thanks to you for your interest and joining in on a Saturday with India-Pakistan match lineup. Next. Bilal Sheikh is asking if there is a supplier who was active taxpayer at the time of supply and payment of goods, but lost its record. Can the authorities lost its record? Record. Okay, lost the record. Okay. Can the authorities hold us responsible for the amount of unpaid taxes? Look, if the supplier, if they have lost the record, they'll probably be penalized and paying an amount. In such a scenario, I believe you would not be penalized because the tax would be recovered from them. However, if they default on paying the tax, then the relevant authority, in this case FPR, will come after you. As long as they are paying it, it's fine. You are fine then. Next. Naveed Iqbal is asking what is the difference between FED and sales tax? Federal excise duty is levied in certain areas. Sales tax is levied on sales of goods and services within Pakistan. And now it's been divided into the provincial subject matters like PRA, SRB, which deals with the provisions of sales tax, which is levied on provision of services, while Sales Tax Act, which is now conducted, moderated and administered by FPR, focuses on any area not covered by them, plus the sales tax on goods. FED, we just had the discussion. I had discussion over lunch with Harun Saab earlier today, and inshallah we'll be conducting sessions on FED too. So that would make it more clear to you then, inshallah. Next. Muhammad Yasir Iqbal is saying, thank you sir Harun, that was quite a CPD class. I have to go. Thank you for your time. Stay blessed. Okay, my name is Omer. On a lighter note, on behalf of Harun Saab, you are most welcome, Yasir. Next is from Hamza Hafiz. He's asking, can we amend the sales tax return if we make error? Yes, you can. And what is the procedure for amending? You'll file for a revised return, and once allowed, you'll file the revised return. Next is from Rahim Akbar. My experience includes taxation work, monthly sales tax return of withholding tax with PRA and FPR, and secretarial work. The way you are explaining the Sales Tax Act is really impressive. Can you give me job in your firm? I have 2-year experience in audit. Okay, it's the same thing. It's the same, guys. So the same offer. Send me your CV. My details will be at the end. So inshallah, I'll review that with the partners
And who knows, why not? Next is from Atif Lady. Okay, we cannot sue tax official, but what if he does not follow the legal formalities and attach bank account? Okay, in that case, you can go to the court, take a stay order, or if you believe maladministration was done, you can also go to FTO. FTO can even penalize the tax official if they haven't discharged their duties as they were required to. Next is from Mohammed Mohsin. I have heard. And this does not even stop you from going to the courts of law. You can still go there. Again, the point is, if he has not discharged his duties properly. If it's only a difference of opinion, then you cannot go after him. If he has not discharged his duties, then he is also personally liable for not discharging the duties. That's the key difference. Next. Next is from Mohammed Mohsin. I have heard about SRO for registration of retailer that if he has a shop in air-conditioned mall or have credit card machine, then he is liable to register for sales tax. Otherwise not. Is it correct? It's not like otherwise not. Different amendments are being made to bring more and more businesses within the tax net. Does not mean otherwise not. If you are making taxable supplies as per the law and you are not a cottage industry, you should. If you have a shop in a mall which is air conditioned, I would highly doubt you'll be a cottage industry, right? Anyway, I just answered that to clarify you. SROs are not within the purview of what we are covering today. Next. Mansoor Arif is saying very informative and comprehensive session. Thanks to all who made this possible. Special request, suggestion for training regarding monthly e-filing as well. You are most welcome, Mansoor. We'll inshallah pass that on to Harun Sab. Please do pass that on, and inshallah we'll plan that. Faisal Manzoor is saying another informative, nicely presented session with a very nice face. Thanks. Thank you, Faisal. We are obliged. Kanza Nasir is saying, I really enjoyed today's session. I feel finally my brain is opening up and accepting sales tax act. Thank you for such a hard work. Stay blessed, you all. You're most welcome. We are humbled, and I'm glad that you're feeling that way. And the effort is this. I personally think about the ways how it can be made more and more easier because taxation is something which is extremely important, especially in the context of CPEC and all the developments taking place in the region. And ACCAs are very nicely placed to take advantage of that. Hence, it is pertinent to build your expertise in this area. So yeah, thanks to you for the compliment. Next is from Sidra Haq. As usual, a great session from Mr. Umar. Thank you ACC Pakistan for helping us out. You're most welcome, Sidra. As usual, I'm humble. Next is from Muhammad Amin Rashid. Sir, please also conduct a session on Custom Act. That's also been noted down and it's in the pipeline. Inshallah, it will be done. Muhammad Zishan Afzal is asking, can we claim input tax against sales tax invoices after 6 months in sales tax return in any case? After 6 months, yeah. Next is from Muhammad Kotwala. Sir, Umar, thanks for such valuable and knowledgeable session and will be keenly waiting for next one. I'm most humbled, Mr. Kotwala, and inshallah, the next one is planned on next Saturday, so I hope to see you there. Muhammad Daniel is asking FTO. Explain, please. FTO is the Federal Tax Ombudsman, which is a neutral body which looks after the complaints about the maladministration by taxation authorities or officials. Any taxpayer can approach them if they believe there has been a maladministration resulting in the miscarriage of justice. You can go to FTO's website and check out the details there. It's not the same as an appellant authority. It's a regulatory body which ensures the tax officials are doing their job. If not, then they are reprimanded. Next. Next is from Naveed Iqbal. Thank you very much, ACCA, for providing such a great teacher, Sir Umar, and also Mr. Harun, Mr. Ahmed. You are most welcome, and thanks to you on behalf of Mr. Harun and Mr. Ahmed. Nigam Abid is saying, tax scares me enough. It's very helpful session and building my confidence. I have some case-specific problems. Can I have some address where I can share my working to be reviewed?
Okay, you're most welcome, Nigam. Sure, I'll share my contact details at the end of the session today. Feel free to shoot me an email. You'll have my details. And I hope I wasn't scary enough to scare you any further and made it a bit easier for you. Next is from Saqib Rizwan. The session was wonderful. Next. Thank you, Saqib. Imran Khan, I would like this opportunity to thank Mr. Omer Zaheer Meer, Mr. Harun Jan, Mr. Ahmed Bilal, along with all those who are involved in organizing such an informative, interactive, and work-related CPD webinar. You are most welcome, and we are grateful for your kind compliments. Mohammed Zishan Afzal, I was out of touch from sales tax from last 2 years due to working in internal audit department and learned a lot from it. Thank you very much. That's great. You are most welcome. Kamal Hussain is saying this session was as amazing as the previous one. Thanks to ACC and entire team for such an awesome webinar. You are most welcome. Hafiz Mohammed Bilal, thanks sir for giving your precious time. The pleasure is all mine. Sayyid Ali Ghalib Naqvi, the session is very informative and explanatory. The question and answer session have been a bonus in clearing the understanding of this act. Thank you so much for this interactive session. You're most welcome, and we are glad we could be of help. Last comment till now, Mohammed Yusuf Maiman, very informative session. Thanks to ACC and its team. And just another popper from Mohammed Rizwan Safdar. Thank you ACC for arranging such a wonderful session. Another one, Mohammed Zishan Afzal, can we receive certificate of this training? Yes, Zishan, you will be receiving the certificate most probably on Monday. Okay, guys, you are most welcome. So let's finish the last section, 58, and then if we have time, we'll go through some other questions if you have, and I'll share my contact details. So section 58, like for payment of tax in the case of private companies or business enterprises. Notwithstanding anything contained in the Companies Ordinance 1984, where any private company or business enterprise is wounded up and any tax chargeable on the company, whether before or in the course or after its liquidation in respect of any tax period, cannot be recovered from the company or business enterprise. Every person who was an owner or partner or director of the company or business enterprise during the relevant period shall jointly and severally be with other such person be responsible for the payment of such thing. सेम कॉन्सेप्ट है जो हम पहले भी सेल्स टैक्स एक्ट में पढ़ चुके हैं कि अगर आपकी कंपनी का कोई टैक्स ड्यू था, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है उसका टैक्स ड्यू था और आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो ये ना समझें आप टैक्स से बच गए हैं. आप उसके लिए पर्सनली लायबल होंगे, ज्वाइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि बीइंग अ डायरेक्टर यू आर इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ द प्राइवेट कंपनी. This is a fine difference. Normally कॉमर्स के कॉन्सेप्ट में unless as a director आपने पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो, आपने डायरेक्टली गारंटी किया हो, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते. लेकिन टैक्स के मैटर में ये बिलीव किया जाता है यू आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल एंड ज्वाइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल अलॉन्ग विद अदर को डायरेक्टर्स, partners and the business. 58A representatives. For the purpose of this act and subject to subsections 2 and 3, the expression representative in respect of a registered person mean. Now 58A what it does is simply legally representative को cover कर देता है, क्योंकि कानून में हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में ले डाउन होती है. आप जब जाते हैं ना एफपीआर से डील करने और कहते हैं कि हम ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इसी के मुताबिक वो आपसे डील करते हैं कि अच्छा इसमें से आप किसमें फॉल कर रहे हैं, आप लेके आए हैं अथॉरिटी लेटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. A, where the person is an individual under a legal disability, the guardian or manager who receives or is entitled to receive income on behalf or for the benefit of the individual. कानूनी तौर पे एक बंदा डिसेबल करार दिया जा चुका है, तो उसका गार्डियन या मैनेजर जो उसके बिहाफ पे इनकम रिसीव कर रहा है उसके बेनिफिट के लिए वो उसका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है. नंबर 2, where the person is a company, and remember person की डेफिनेशन हमने सेक्शन 2 में फर्स्ट सेशन में डिटेल से पढ़ी थी. where the person is a company other than a trust, a provincial government or local authority in Pakistan, a director or a manager or secretary or agent or accountant or any similar officer of the company. कंपनी के ये लोग अहम होते हैं, इसके ऑफिसर, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, एजेंट, अकाउंटेंट,
या सिमिलर ऑफिसर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। कंपनी के केस में इनमें से कोई भी जो है वो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। Where the person is a trust declared by a duly executed instrument in writing, whether testamentary or otherwise, any trustee of the trust. ट्रस्ट जब बनता है तो उसकी डॉक्यूमेंट्स बनती हैं, कुछ टेस्टिमेंट्री होती हैं, कुछ नहीं होती। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। जो आपको चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि ट्रस्ट के केस में जो भी ट्रस्टी उन डॉक्यूमेंट में नेम किया गया है वो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है। Where the person is a provincial government or local authority in Pakistan, any individual responsible for accounting for the receipt and payment of money or funds on behalf of the provincial government or local authorities authorized representative. Straightforward. लेकिन where the person is an AOP, Association of Person, AOP है क्या? Quick response. आपके ख्याल में AOP क्या है? वैसे तो हमने ये कवर किया हुआ है, सेशन 1 में भी किया है, ACCA की स्टडीज में भी आपने पढ़ा हुआ है। क्या है एसोसिएशन ऑफ पर्सन? जी, एनी रिस्पॉन्स? No. We have 10 seconds. Partnership firm. Very good. Yes, it is partnership, but not limited to partnership. Association of person is what the name says. Any two or more people getting together for the benefit, for mutual benefit or conducting a business. That's it. Association of persons does not necessarily have to be a partnership. It can be a partnership, but can be other forms too. So where the person is an AOP, AOP is abbreviation of Association of Persons. A director or a manager or agent or accountant or any similar official in the case of association, or in the case of a firm, any partner in the firm. So straightforward, nothing complicated there. फेडरल गवर्नमेंट के केस में जो भी फेडरल गवर्नमेंट की अकाउंटिंग कर रहा है फॉर रिसीट पेमेंट्स ऑफ मनीज वो ऑथोराइज है। वेयर द पर्सन इज अ पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फॉरेन गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सब डिविजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट, any individual responsible for the accounting for the receipt and payment of monies or funds. Again, same concept है कि गवर्नमेंट्स या इंटरनेशनल इदारों के केस में जो भी उनकी मनीज को अकाउंट फॉर कर रहा है और उसके पास कंट्रोल है वो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है। क्योंकि टैक्स में बेसिकली तो पैसे की आप डीलिंग कर रहे हैं ना, जो शेयर है वो आपने देना है, तो जिसके हाथ से गुजर रहा है, जो रिकॉर्ड रख रहा है, जो पैसा दे रहा है, ले रहा है, गवर्नमेंट्स के केस में, इंटरनेशनल इदारों के केस में वो रिस्पॉन्सिबल है। ये मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं, बाकी ये आप पढ़ के याद रखिएगा। बिजनेसेस के केस में जो की डिसीजंस पे इन्फ्लुएंस हो सकता है। सबसेक्शन 2 स्टेट्स where the court awards the administrator general, the official trustee or any receiver or manager appointed by or under any order of a government receives or is entitled to receive income on or behalf or for the benefit of any person, such etc., 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 shall be representative of the person for the purposes of this एक्ट। अगर गवर्नमेंट ने किसी को एडमिनिस्ट्रेटर को, ट्रस्टी को, कोर्ट ऑफ वॉर्ड को अपॉइंट किया है कि वो आपके बिहाफ पे इनकम वगैरह रिसीव कर रहे हैं तो वो आपका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है। सबसेक्शन 3 सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4 जो हम नीचे पढ़ेंगे, वे आर पर्सन इज नॉन रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट फॉर अ टैक्स ईयर शेल बी एनी पर्सन इन पाकिस्तान। बंदा पाकिस्तान में नहीं बाहर है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? Anyone who is employed by or on behalf of him, उसका कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पे, who has any business connection with him, जिसका उसके साथ यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन है, from whom or through whom the non-resident person is in receipt of any income, जिसके थ्रू उसको इनकम जा रही है चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, who hold or control the receipt or disposal of any monies belonging to the non-resident person, जो उसके पैसे को कंट्रोल कर रहा है, जो उसका ट्रस्टी है, या who is declared by the commissioner in an order to be the representative of the non-resident person. Again, one of the areas जहाँ पे कमिश्नर को बहुत subjective power दी गई है। No person shall be declared as the representative of a non-resident person unless they are given the opportunity to be heard. Principle of natural justice, Audi Ultram Pultram. 58B, liability and obligation of representatives. Good news. This is the last page and last session of the day. Okay? And then we are done. Look at that smile, India-Pakistan match. Okay, 58B.
Liability and obligations of representatives. Every representative of a person shall be responsible for performing any duties or obligation imposed by or under this act on the person, including the payment of tax. जब आप किसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो जो उसकी ड्यूटीज थी वो अब आपने परफॉर्म करनी है. Subject to section 58 and subsection 5 of this section, which is 58B. Any tax that by virtue of subsection 1 is payable by representative of a registered person shall be recoverable only to the extent of any asset that of the registered person that are in his control. Same concept जो liquidator क्या है, जितने asset उसके control में है वही वो आपको दे सकते हैं. क्यों? अगर वो उसका लॉयर है या अकाउंटेंट है और उसने तो कुछ गलत नहीं किया तो वो अपनी जेब से क्यों दे? हाँ, उसने गलत किया तो फिर वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है अगर उसके इल्म में था. Subsection 3. Every representative of a registered person who pays any tax owing by the registered person shall be entitled to recover the amount so paid from the registered person or to retain the amount so paid out of any monies of the registered person that are in the possession of the representative. जितना पैसा उसके कंट्रोल में है पहले टैक्स लायबिलिटी पे करें. Any representative or any person who apprehends that he may be assessed as a representative may retain. अगर आप रिप्रेजेंटेटिव है और आपको लगता है कि उसने अपनी टैक्स ड्यूटी नहीं दी और आपको उस पे असेस किया जा सकता है तो जितनी अमाउंट है उसमें से उतनी अमाउंट निकाल के आप रखें और वो आप कमिश्नर से सर्टिफिकेट उसका ऑब्टेन कर सकते हैं. Subsection 5. Every representative shall be personally liable for the payment of any tax due by the representative in a representative capacity if, while the amount remains unpaid, the representative eliminates charges. आसान जुबान में समझा दे तो अगर टैक्स लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग थी और आपने कोई ऐसे पैसे या उसके एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिए जिससे टैक्स पे किया जा सकता था तो फिर आप खुद दें टैक्स क्यों किया आपने. इट्स एज सिंपल एज दैट. Subsection 6, the last point of the day. Nothing in this section shall relieve any person from performing any duties imposed by or under this act on the person which the representative of the person has failed to perform. लेकिन जिस बंदे की ओरिजिनल ड्यूटी है उसको एब्जॉल्व नहीं करता ये सेक्शन. रिप्रेजेंटेटिव से रिकवर अगर नहीं करवा सके तो उसके पीछे जाएंगे ही जाएंगे. दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन टुडे. लास्ट हमारा जो सेशन होगा सेल्स टैक्स एक्ट पे नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह, उसमें सेक्शन 59 टू एंड 72 वहां तक हम कवर करेंगे और जितने हमारे शेड्यूल्स हैं उनको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे. ACCA की तरफ से आपको इसकी डिटेल्ड ईमेल आ जाएगी. आई विल शेयर द डिटेल्स विद देम. इन एडिशन टू दैट इसके बाद PRA और SRB के हमारे सेशंस इंशाल्लाह होंगे 3 each. With that, if you have any questions, you can feel free to ask me now. And you have my contact details in front of your screen now. This is the end of session. Thank you. You have my cell number, but if I'm busy like I'm right now or I'm in a case or maybe some matter, I might not be able to attend. So आप अपने मुख्तसर तारुफ नाम के साथ SMS भेज सकते हैं, WhatsApp कर सकते हैं. You have my email. Send me a quick email. That's the best way to reach me. You have our website, but it's under development. I don't use Facebook. I use Miller Facebook, which is an alternate. So आपके पास मेरे वहाँ का ID है. सोशल मीडिया पे आप राब्ता कर सकते हैं. उमर ज़हीर मीर. Twitter पे it's the same. You have my office address. It's right opposite the PR office. So feel free to contact in case of any queries that you may have. And we are spot on time. We still have a few minutes. So any question, feel free to ask. Yeah. Bilal Sheikh is asking. And yeah, before I proceed, I want to add one thing. That this guy Ahmed here, mashallah, he works so hard, or he is as excited as we are to assist you with this. So thanks to you too, Ahmed. Thank you. And obviously, Arvind sir wouldn't have been possible without him. Yes. Bilal Sheikh is asking, is it possible to transfer tax liability to the buyer of business in the contract through which business is sold? You can do that, but even if you don't do that, the poor soul is ultimately going to bear that if you are not paying it. Okay, now we have some comments from, first one is from Yasin Ali Badruddin. It's great to see ACCA Pakistan working on to build the capacity of its members and affiliates in such a competitive environment.
That's great. I totally agree, Yasir. That's the actual aim of the entire exercises. Next is from Mudassar Rahman. Thank you very much, sir. This is a very good opportunity for ACCA members to gain valuable tax knowledge. Once again, thank you. You are most welcome, Mudassar. We are humble. Next is again from Yasin Ali Badruddin. And special thanks to Mr. Umar for joining hands with ACCA Pakistan to contribute towards ACCA members and affiliates in Pakistan. ACCA Pakistan and you both deserve applause and appreciation. Thanks a lot. You are most welcome, and you guys deserve applause to be here today. And inshallah, we'll continue these taxation endeavors on a consistent basis. We have some questions. Imran Khan is asking, kindly explain resident concept under Sales Tax Act, Pakistan. Under UK law, I understand it is 186 days in any tax year. We have covered this. Basically, it's the same as defined under income tax ordinance. Practically, it doesn't matter because sales tax is not levied on a person. It's ad valorem tax. It's levied on the goods and services that are being sold within the territorial jurisdictions of Pakistan. So even if you are sitting outside and selling it in Pakistan, it would be levied on goods and services. So the concept is not that relevant to sales tax. However, it is relevant to income tax. And since we have time, I promised, so I'll clarify it. It's 186 days in any tax year for income tax purposes. Next two questions are from Basil Ahmed Nasir. First one is, if we sell goods to government organization which don't have GST, then whether we charge extra 2% or not? No, there won't be any government department which doesn't have relevant registration. They don't call it these numbers. They have specific numbers of government registration. But if you find any such government department, share with me and I'll guide you. Next. Another question, if we import and goods not sale within 1 year, then whether we carry forward import GST more than 1 year? It's a gray area because there is a limitation on, look, you can, if you haven't been able to sell it, but you'll have to justify it because normally there are not many industries where the stock would be just laying there for a year without any sale whatsoever. Yes. Next is from Mohammed Zaheer Chaudhry. How a person can be considered to be disabled for the purpose to send his representative as discussed in section 58A. Zaheer, representative भेजने के लिए डिसेबल बनने की जरूरत नहीं, डिसेबल भी रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है. अगर डिसेबल है तो सिंपली किसी को भी ऑथराइज करके अथॉरिटी लेटर दे सकता है. आप किसी को किसी भी वजह से कर सकते हैं. You don't even have to state the reason. आप सिंपली अथॉरिटी लेटर देंगे कि ये बंदा मुझे इन मैटर्स में रिप्रेजेंट करेगा, आई ऑथराइज. खत्म. डिसेबल का कॉन्सेप्ट ये है कि लीगली अगर किसी भी केस में किसी भी वजह से कोई बंदा डिसेबल डिक्लेयर है तो जो उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो उसका गार्डियन या मैनेजर है. That's it. Next. Muhammad Ali is saying this is a very informative session. I'm looking forward for next sessions. Thank you, Mr. Umar. You are most welcome. We are also looking forward to future sessions with you guys. Hashim Zahid is saying thank you, sir. It was great learning experience. The pleasure is ours. Thanks to you. Sarwan Munir is saying thanks a lot, Umar and all ACCA team for arranging such knowledgeable event for us. Hats off to you, sir. Thanks. Pleasure is all ours, and such compliments motivate us even more. I was looking at this guy during the recess break, and he was like this, and your comments started coming, and he was like this. He was so pumped up. So keep them coming. Thanks to you guys. Momin Sohail Khan is saying it was a really great experience, and I gained a lot of information. Thank you very much. You are most welcome, Momin. Noman Abdul Ghaffar is saying thank you, ACCA team and Mr. Umar, for such great and informative webinars. Please continue this trend. You are most welcome. Inshallah, we will. Saqib Ali Rashidi is saying very, very interesting, informative session. Great job by ACCA. Thanks to all of you, especially to Mr. Umar, Harun Jan and Ahmed Bilal. Proud to be an ACCA. Same here. Proud to be an ACCA, and you are most welcome. And thanks for the kind words. Next is from Sharik Shakil. Congrats for conducting a very good session. I'm kicking myself for missing earlier one. Well, you're most welcome, Sharik. Hope to see you on next Saturday. Mohammad Amin Rashid is saying thank you all for conducting informative sessions, especially Umar Bhai, Bilal Bhai, Harun Bhai. Well, what's your favorite team tonight? Well, most welcome.
Are we supposed to answer that? It's obvious. Obvious. It's very obvious, isn't it? Who are we? We are Pakistanis. So who would we be vouching for? Pakistan. Osama Abdul Wahid Lakhani, can company claim input tax as purchase of fixed assets? Lakhani sir, I've answered this before. We'll be covering this in more details inshallah on next Saturday. They may in certain circumstances, not all of them. Next is from Hashim Barar. One question regarding the Capital Territory Ordinance. An ID company. Not today, Hashim. Next. Mason Ladha, thank you for the session. Nabil Asif, thank you all. Surosh Watman, great session by Tax Guru himself, learned through and through. Tax Guru. I'm humbled. You are most welcome. Khurram Rafiq, once again, Allah bless you. Bless both of you. Thank you, Khurram. Amen. And you too, Khurram. Thank you. Muhammad Tasif, please share link of recorded sessions on Vimeo via email. Tasif, if we do not email, it means next week के अंदर ये by Tuesday upload हो जाएगा Vimeo पे. Next is from Fazal Muhammad. Great session. Thank you, sir. I like your name, especially with the cricket on the horizon. That brought name of a certain guy with the same name. So you're most welcome and thanks for the compliment. Avais Nuri, sir, please also discuss some practical examples regarding appeal, refund application, and other frequent matters. I did mention in between the practical aspects, how these things are taken care of. But okay, sure, remind me in the next session on Saturday and we'll actually discuss the scenario too. Next is from Naveed Iqbal. Pray for Pakistan, maza dobala ho jayega inshallah. Inshallah, inshallah. Mohammed Mohsin, thank you very much for such wonderful session. Kindly conduct sessions on practical aspects on taxes and corporate law. Yeah, they, as I mentioned in the morning opening remarks, they are lined up. But देखें, हमें सबको साथ लेके चलना है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लोकल टैक्सेशन बेस नहीं है, ठीक है. अब इनिशियली आपकी टैक्सेशन बेस बन रही है, आपको लॉ भी पढ़ाया जा रहा है. वंस द लॉ इज डन, फिर रूल्स के ऊपर आना है एंड देन विल बी गोइंग टुवर्ड्स द एडवांस स्टेज. इट माइट बी आप टैक्स के साथ डील कर रहे हैं एंड आई कैन अंडरस्टैंड. मीन समवन हु इज ऑलरेडी डीलिंग वुड बी लाइक यार कम ऑन क्विकली एडवांस स्टेज पे मैं जाऊं. बट वी हैव टू टेक एवरीवन अलोंग. हमें सबकी वो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है. और दिस हैज बीन द फीडबैक वी रिसीव्ड फ्रॉम द फील्ड फ्रॉम मेंबर्स. So inshallah that is in pipeline. It will happen, but in due time. Next. Khalid Mahmood, very informative session and looking for the next session. Thanks a lot, Sir Omer and ACC Pakistan. Most welcome, Khalid sir. Sikandar Khan, thank you so much, sir, for the session. It was very informative. I gained a lot from it. Pleasure is all ours. Muhammad Amin Rashid, a registered person shall not be allowed to adjust input tax in excess of 90% of the output tax for that tax period. Why it is 90%? Please briefly explain. Okay, please have a look after the match on the first session, a recording available on Vimeo. And if you're still confused, shoot me an email or better still, ask me next week. It has been discussed in detail in the first session. Last two comments as of now. Mohammed Daniel, great session. Hats off ACC Pakistan. How can I raise issue of ACC not offering taxation Pakistan variant? Well, thanks for the feedback. You can send email to Head of Member Affairs Pakistan team, Harun Jansa. If you want to, you can also send your response and ask your friends to send it to Central Member Support Helpline of the UK so that they know you have interest in Pakistani variant. The more interest would be shown by students and affiliates and members, the more they would be focusing on, because as part of head of the taxation committee, we raised the issue with senior ACC executives who were visiting Pakistan, and they told us that the tax variant that's been offered already did not have much response. So that's an area of concern. Obviously, the local tax knowledge would place you very well, especially if you are considering working in Pakistan. So please, by all means, send your feedback. You are members. This is your association. Samad Munir, okay sir, thank you very much. Jazakallah. Osama Abdul Wahid Lakhani, thank you ACC Pakistan for this valuable session and appreciate to focus on deficiency faced by ACCA students in Pakistan. Guys, you are most welcome. And the last comment of the day, Mohammed Kotwala, sir,
Umar and entire team of ACCA, thanks for such informative session, and we are also expecting to have sessions like this on corporate law and taxation. Thank you, everyone. Inshallah, Kotwala sir. Thank you very much. Have a nice day. Enjoy the match. Enjoy the evening. Allah Hafiz.